prasad? Yeah. लोगों ने अच्छा प्रसाद दिया? Yeah. I don't want to forget him today. आज मैं इनको भूलना नहीं चाहता. Ready for some food for the soul? आप कुछ आत्मा का भोजन लेने के लिए तैयार हैं? Ready to think about something different? आप कुछ अलग सोचने के लिए तैयार हैं? Then being harassed by the mind and unlimited material desires and mental speculation. कि मन से पतावी थोड़े के बाद आप थोड़ा शांत होना चाहते हैं और असीमित भौतिक इच्छाओं के बाद. You want a little relief from that? आप उससे थोड़ी राहत चाहते हैं? Yes, we need a little relief from all of that mental speculation. हमें थोड़ी राहत चाहिए होती है ऐसे मनोधर्म से. आध्यात्मिक type of misery. एक तरह के हमारे Wherever you go, जहाँ भी आप this जाएंगे, mind with you. ये मन आपके साथ चलेगा. And we're addicted to mental speculation, just listening to all the chatter. और हमें मनोधर्म करने की आदत लगी हुई है और हम इस मन की बातों को सुनते रहते हैं. What about that? इसका क्या? उसका क्या? Just overthinking everything. सब चीज जरूरत से ज्यादा हम सोचते हैं. Misunderstanding almost everything. और सारी चीजों को गलत समझते हैं. Coming to wrong conclusion about almost everything. और गलत फैसलों पर पहुंचते हैं. And then making plans based on wrong conclusions. और फिर हम योजना बनाते हैं और गलत निष्कर्षों पे आने के And बाद. it creates chaos. और फिर जीवन में अफरा तफरी मचती है. Now we have to manage all the और chaos. फिर सारी अफरा तफरी को हम व्यवस्थित करना चाहते हैं. And then we have to blame someone for the chaos. और किसी को तो दोष डालना होगा उस अफरा तफरी के Because लिए. we're just so nice. कि हम तो बहुत अच्छे हैं. We must be getting victimized somehow. अवश्य हमारे ऊपर कोई प्रताड़ना दी जा रही है. Someone must be responsible for this. कोई और इसके लिए जिम्मेदार है It जरूर. can't be us. हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं. Because we're devotees. क्योंकि हम तो भक्त हैं. We're sincere devotees. हम तो एक निष्ठ भक्त हैं. Hare Krishna. You like that stuff? Yes. This is the topic. ये हमारा विषय That's why है. it's fresh in my mind. इसलिए मेरे मन में बहुत ताजा है. Hare Krishna. Rishi, good? इससे आप ठीक हैं? My mind. मेरा मन. Shishi Gaunitai ki. Shishi Jagannath Baladev, Lady Subhadra Devis ki. Srila Prabhupada ki. Srila Govinda Swami, Srila Gurudev ki. Samaveda Bhaktivedanta ki. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Govinda Swamiti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya
Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajya Srimad Govinda Swami Shri Gurudev Ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajya Srimad His Divine Grace Shri A.C.Bhaktivedanta.Swami Shri Purport Ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajya Srimad His Divine Grace Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Shri Purport Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Nam Acharya Shri Haridas Thakur Ki Ramsikoho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Shri Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakund Radhakund Giri Govardhana Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Navadvip Dham Ki Shri Kshetra Jagannath Puri Dham Ki Ganga Maya Ki Jamuna Maya Ki Bhakti Devi Ki Tulasi Maharani Ki Shri Shri Gaur Nitai Ki Shri Shri Krishna Balaram Ki Shri Shri Jagannath Baladev Lady Subhadra Devis Ki Shri Shri Radha Gopinath Ki Shri Shri Radha Gopal Ju Ki Shri Shri Radha Madhava Ki Grantaraj Srimad Bhagavad Gita Ki Premanam Sankirtan Jagya Ki Gora Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru, Shri Guru Mahaprabhu, Srila Prabhupada, Srila Gurudev. Some little less wind somehow. I don't know which one. Is it this one? This one is number 1, this is number 3. I don't know what number they are. This is 1 and 3 and 2. Murali, कौन सा नंबर है? Krishna. I hope Krishna helps me. मुझे उम्मीद है कृष्णा मेरी मदद करे. I know there's 1, 2, 3. Definitely 4. I don't know what number, who's who though. यहाँ पे 4 पंखे इतना मुझे पता चल रहा है. कौन सा नंबर ये मुझे पता नहीं. What do you think? Are you happy with number 1? आपको नंबर 1 से मजा आ रहा है? This is like Shrivas right now. It's moving, but barely. घूम रहा है, मुश्किल से घूम रहा है. It's alive. जिंदा है. It's just barely moving. लेकिन मुश्किल से घूम रहा है. It's working. काम कर रहा है. We have a pulse. इसमें कुछ जान है, कुछ जान बाकी है. I'm so sarcastic. Please excuse me. मैं बहुत व्यंग्य करता हूँ. कृपया मुझे क्षमा I can't कीजिएगा. help myself sometimes. मैं कभी-कभी खुद को रोक नहीं पाता हूँ. If I don't laugh, I'll probably cry. So मैं हंसूंगा नहीं तो बहुत जल्दी रोऊंगा इसीलिए. all right. So let's read a verse today. चलिए एक श्लोक पढ़ते हैं आज Bhagavad Gita. भगवद गीता से. It's very much required. और ये बहुत They're जरूरी all है. required. और सभी जरूरी हैं. It's a nice topic. बहुत अच्छा विषय है. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are reading in the Bhagavad Gita, second chapter, the contents of the Bhagavad Gita are being summarized. तो हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय भगवद गीता का सार उससे पढ़ेंगे. And this is 55th verse. और ये 55 नंबर श्लोक. Yeah. Please repeat. कृपया दोहराइए. Shri Bhagavanu Vacha. Shri Bhagavanu Vacha. Prajahati. Prajahati. Yada. Yada. Kaman. Kaman. Sarvan. Sarvan. Partha. Partha. Managatan. Managatan. Atmani. Atmani. Eva. Eva. Atmana. Atmana.
Tushta, Kṛṣna, Stita, Stita, Pragya, Pragya, Tada, Tada, Uchyate, Uchyate. Shri Bhagavanu Vacha, Shri Bhagavanu Vacha, Prajahati Yata Kama, Prajahati Yata Kama, Sarvan Partha Manogatan, Sarvam Partha Manogatan, Atmani Evatmana Tushta, Atmani eva Tushta, Stita Pragyastadochate, Sita Pragya Sadoshate. Shri Bhagavanu Vacha, Shri Bhagavanu Vacha, the Supreme Personality of Godhead said, the Supreme Personality of Godhead says, परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, Prajahati प्रजापति gives up, gives up, त्याग करता है, त्याग करता है, Yada, यदा, when, when, जब जब, Kaman, कामान, desires for sense gratification, desires for sense gratification, इंद्रिय भोग की इच्छाओं को, इंद्रिय भोग की इच्छाओं को, Sarvan, सर्वान, of all varieties, of all varieties, सभी तरह के, सभी तरह के, Partha, पार्थ, Osana Prita, ओ सनप्रीता, हे पृथा पुत्र, हे पृथा पुत्र, Managatan, मनागताम, of mental concoction, of mental compulsion, मन गढ़ंत, Atmani, आत्मानी, in the pure state of the soul, in the pure state of the soul, आत्मा के शुद्ध स्तर में, आत्मा के शुद्ध स्तर में, Eva, एवं, certainly, certainly, निश्चय ही, निश्चय ही, Atmana, आत्मा, by the purified mind, by the purified mind, शुद्ध मन से, शुद्ध मन से, Tushta, तुष्टा, satisfied, satisfied, संतुष्ट होता है, संतुष्ट होता है, Shtita Pragya, स्थित प्रज्ञा, transcendentally situated, transcendentally situated, दिव्य स्तर में स्थित, दिव्य स्तर में स्थित, Tada, तथा, at that time, at that time, उस समय, उस समय, Uchite उच्चते, is said, इससे कहा जाता है, कहा जाता है, translation purport by Srila Prabhupada. अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद का। The Supreme Personality of Godhead said, परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, O Partha, हे पृथा पुत्र, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, जब कोई व्यक्ति इंद्रिय भोग की सारी इच्छाओं को त्याग कर देता है, which arise from mental concoction, जो मनोधर्म से शुरू होते हैं, and when his mind thus purified और जब उसका मन शुद्ध हो जाता है, finds satisfaction in the self alone, तो वो स्वयं में ही संतुष्टि का अनुभव करता है, then he is said to be in pure transcendental consciousness. और तब उसे शुद्ध दिव्य चेतना में स्थित माना जाता है। Please repeat. कृपया दोहराइए। I want to make sure you're awake. मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ आप After जगह big हैं। prasad, I have to keep you awake. प्रसाद देने के बाद थोड़ा आप लोगों को जगह रखना पड़ेगा, आप लोगों को थोड़े लगाए रखना पड़ेगा। The Supreme Personality of Godhead said, the Supreme Personality of Godhead says, O Partha, O Partha, when a man gives up when a man gives up all varieties all varieties of desire for sense gratification, of desire for sense gratification, which arise from mental concoction, which arise from mental concoction, and when his mind, and when his mind, thus purified, thus purified, finds satisfaction in the self finds satisfaction in the self alone, alone, then he is said to be in then he is said to be in pure transcendental consciousness. pure transcendental consciousness. Purport by Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य। The Srimad Bhagavatam affirms that any person who is fully in Krishna consciousness or devotional service of the Lord श्रीमद् भागवतम पुष्टि करता है जो भी पूर्ण कृष्ण भावनामृत में या भगवान की भक्ति में सेवा में लगा होता है, has all the good qualities of the great sages, उनके अंदर सारे महान ऋषियों के गुण मौजूद होते हैं। whereas a person who is not so transcendentally situated और जो व्यक्ति उस दिव्य स्तर पे नहीं होता, has no good qualifications, उनके पास कोई भी अच्छे गुण नहीं होते, because he is sure to be taking refuge in his own mental concoctions. क्योंकि वो स्वयं के मनगढ़ंत चीजों के ही आश्रय लेते रहते हैं।
Consequently, और इसके फलस्वरूप it is rightly said herein यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है that one has to give up all kinds of sense desire, किसी को सारे तरह की भौतिक इच्छाओं का त्याग करना होगा which is manufactured by mental concoction. जो बनाए जाते हैं मनगढ़ंत तरीके से Artificially, such sense desires cannot be stopped. और बनावटी तरीके से ऐसे इंद्रिय भोग की इच्छाओं को रोका नहीं जा सकता But if one is seriously engaged in Krishna consciousness, लेकिन अगर कोई गंभीरता से कृष्ण भावनामृत में लगता है then automatically the sense desires will subside तो अपने आप ही इंद्रिय भोग की इच्छाएं कम हो जाएंगी without extraneous efforts. बिना किसी आवश्यकता से ज्यादा प्रयास के Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness इसीलिए किसी को स्वयं को कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए without any hesitation. बिना किसी हिचक के For this devotional service और इस तरह से भक्ति में सेवा will करने से instantly help one तुरंत ही किसी की मदद होगी onto the platform of transcendental consciousness. और दिव्य चेतना के स्तर पे वो आ जाएंगे The highly developed soul और जो बहुत उन्नत जीवात्मा होते हैं always remains satisfied in himself वो सदैव स्वयं में संतुष्ट रहते हैं by realizing himself as the eternal servitor of the Supreme Lord. क्योंकि उनको ज्ञान होता है कि वो भगवान के नित्य दास हैं Such a transcendentally situated person और ऐसे दिव्य स्तर में स्थित व्यक्ति has no sense के desires पास कोई भी इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं होती resulting from petty materialism. जो भारी भौतिकवाद का परिणाम है Rather, he remains always happy in his natural position और इसके बजाय वो सदैव सुखी रहता है अपने स्वाभाविक स्थिति में of eternally serving the Supreme Lord. और भगवान की नित्य सेवा में लगा होता है Om Jnana Tamarandasya Gunanjana Shalakaya Chakshuntam Jana Tasma Shurave Namaha Srila Prabhupada Shalagurave. Again the verse. श्लोक एक बार फिर से Shri Bhagavan Uvacha Prajahati Yada Kaman Savan Partha Mano Gatan Atman Evatmana Tushta Stita Pragyastadochite. Translation again. अनुवाद एक बार फिर से The Supreme Personality of Godhead, Bhagavan said, परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा O Partha, हे पार्थ when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, जब कोई मनुष्य सारे इंद्रिय भोग की इच्छाओं को त्याग देता है which arise from mental concoction, जो मनगढ़ंत तरीकों से बनाए जाते हैं and when his mind is thus purified, और जब उसका मन शुद्ध हो जाता है finds satisfaction in the self alone, तो वो स्वयं में ही संतुष्टि का अनुभव करता है then he is said to be in pure transcendental consciousness. और तब उसे शुद्ध दिव्य चेतना में स्थित माना जाता है So Arjuna is asking Krishna, what are those symptoms of a person who is in pure transcendental consciousness? तो अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं उन लोगों के क्या संकेत है जो दिव्य आध्यात्मिक चेतना में होते हैं Arjuna was asking Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is merged into transcendence? अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से उन लोगों के क्या संकेत है जिन्होंने अपनी चेतना दिव्य के साथ मिला ली है How does he speak? वो किस तरह से बातें करते हैं What is his language? उनकी भाषा क्या होती है How is he acting? और वो किस तरह से व्यवहार करते So what हैं does it mean to be Krishna conscious? तो कृष्ण भावनामृत में होने का असल And मतलब क्या Krishna होता is है responding in this verse और कृष्ण इस श्लोक में उत्तर दे रहे हैं that when one's on the platform of the soul, they manifest all transcendental saintly qualities. जब कोई आत्मा के स्तर पे होता है तो वो सारे दिव्य साधु जैसे गुण प्रकट करता है Satchit Ananda Vigraha. सच्चिद आनंद विग्रह So without coming onto those sadhu qualities or godly qualities on the platform of the soul, there's no real peace and happiness. तो जब तक आत्मा के स्तर पे साधु के गुण आप प्रकट नहीं करेंगे तो कोई भी शांति सुख का सवाल नहीं होता So Prabhupada is saying here that Bhagavatam is affirming that any person who's fully Krishna conscious, they have all the good qualities of great sages. प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में पुष्टि किया गया है कि जिसके पास भी ये दिव्य चेतना है वो सारे महर्षियों के गुण प्रकट करते हैं So when we see such devotees, we hear about such devotees, we can understand that this is on transcendental soul platform manifesting saintly godly
qualities and behavior. जब हम ऐसे भक्तों को देखते हैं, ऐसे भक्तों के बारे में सुनते हैं, तो हम देख सकते हैं कि वो दिव्य आध्यात्मिक गुण, साधुओं के जैसे गुण आत्मा के स्तर पे प्रकट कर रहे हैं. If we can appreciate that, then we can also compare those personalities with ourselves. और अगर हम उसको देख पाएंगे तो हम उन व्यक्तियों को स्वयं से तुलना कर पाएंगे. And it says that those who are not transcendentally situated, they have no good qualities. ऐसा बताया गया जो दिव्य स्तर पे नहीं है उनके अंदर कोई भी अच्छे गुण नहीं होते हैं. So when we hear perfectional stage, we should always think, okay, where am I in relationship to that? तो जब हम इस तरह के सिद्धि के स्तर की बातें सुनते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम उसकी तुलना में कहाँ हैं. Because the goal, the bar has been set. What is expected of us? कि लक्ष्य क्या है, मापदंड क्या है और हमें क्या अपेक्षा की गई है. And we should always be trying to measure ourselves up to what is that standard that is required of us. और हमें स्वयं को देखना चाहिए कि हम उस स्तर से कितने दूर हैं. And when we do, then we'll find, if we're conscious and honest at all, that we're not even close to that. और अगर हम देखेंगे उसको और हम ईमानदारी से जब स्वयं को तुलना करेंगे तो हम देखेंगे हम उसके नजदीक भी नहीं We're still manifesting all of these demoniac qualities. क्योंकि हम असुरों जैसे गुण प्रकट कर रहे हैं. Because it says, unless you're transcendentally situated on the platform of the soul, which is saintly, godly in nature, क्योंकि बताया गया जब तक आप दिव्य स्तर पे, आत्मा के स्तर पे नहीं आते जो कि दिव्य स्तर है, a person who is not transcendentally situated like this has no good qualifications. और जो व्यक्ति इस तरह के दिव्य पद पर स्थित नहीं है उसके अंदर कोई भी अच्छे गुण नहीं होते. Because he is sure to be taking refuge in his own mental concoctions. क्योंकि वो निश्चय ही स्वयं के मनगढ़ंत तरीकों का आश्रय लेगा. So when we measure ourselves against what is expected of us and what is the perfectional platform, this should humble us out completely. तो जब हम देखेंगे कि हमसे क्या अपेक्षा की गई है या सिद्धि का असल स्तर क्या है, तो हमें स्वयं को विनम्र बनाना चाहिए. ये सबसे पहली चीज हमारे अंदर होनी चाहिए. Not that we're sitting there like, well, I have that quality. ऐसा नहीं हमें बैठे कहना चाहिए हाँ मेरे अंदर ये गुण है. I think I'm also like that, sort of. और हम उसके नजदीक हैं. We're trying to measure ourselves up to that standard. हम अपने आप को तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं उस स्तर से. By imagination, creative, mental speculation, concoction. कल्पना करके, मनगढ़ंत तरीके से, मनोधर्म करके. And then we surround ourselves with friends who tell us how great we are, how advanced we are. हम अपने आसपास ऐसे लोगों को जमा करते हैं जो हमें हमेशा ये बताते हैं कि कितने महान हैं. Confirmation, see, even they think so. और हम कहते हैं ये पुष्टिकरण हो गया, देखिए इनको भी पता है हम कितने महान हैं. That's why they're my friends. इसीलिए ये मेरे दोस्त हैं. Because they're smart people. क्योंकि ये बुद्धिमान व्यक्ति हैं. So we're keeping ourselves unable somehow to be able to honestly understand what is our actual position. तो हम अपने आप को दूर बनाए रखे हैं इस बात से समझ पाने के लिए कि असल सिद्धि का स्तर क्या है. Because of false ego, अपने मिथ्या अहंकार की because वजह of से pride, और दंभ की वजह से, because of conceited nature, we think we're great. और हमारे दर्प स्वभाव की वजह से हम सोचते हैं कि हम so महान many हैं. things, बहुत सारी we've चीजें accomplished समझते so हैं, many things. हमने बहुत सारी चीजें प्राप्त कर ली A हैं very high impression of ourselves. और स्वयं को हम बहुत ज्यादा But मानते those हैं. Krishna said that's all demoniac लेकिन qualities. कृष्ण बताते हैं ये सारे असुरों के गुण हैं. So if we're contaminated under modes of material nature, तो हम प्रकृति के गुणों के अधीन हैं और उनसे दूषित हैं. and Maya is capturing our intelligence, mind, and senses, और माया ने हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों को पकड़ रखा है. we cannot. Prabhupada says you don't have any good qualities. तो बात कहते हैं आपके अंदर कोई भी अच्छे गुण नहीं हो सकते. Well, even like a few. कहते हैं कि कम से कम उसमें से कुछ तो होंगे हमारे अंदर. It's like we say when you get up, I'm going to be humble today. ऐसी बात है जैसे आप सुबह उठते हैं और कहते हैं आज मैं विनम्र बनूंगा. How often do you say that when you wake up? कितनी बार आप ऐसा कहते हैं जब आप उठते हैं सुबह? I've decided today I'm going to be humble today. आज मैंने फैसला किया आज मैं विनम्र बनूंगा. Right? And then you walk out and someone looks at you wrongly and you're ready to like beat them, और आप जब बाहर निकलते हैं कोई आपकी तरफ गलत नजर से देखता है आप तो उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं. Like what happened to the humility? तो हमारी विनम्रता का क्या हो So गया? whatever qualities we think we have, that's also concoction. तो जो हम गुण सोचते हैं हमारे अंदर है वो भी असल में बस मन गढ़ंत है. It doesn't have any reality. उसमें कोई सच्चाई नहीं है. So we're just like creating, concocting that yes, I have all of these qualities. तो हम बस बना रहे हैं और मनगढ़ंत तरीके से कि हाँ मेरे अंदर And ये of सारे course, गुण हैं. whenever we're tested, very quickly we find out we don't have those qualities. और जब हमारी परीक्षा ली जाती है बहुत जल्द हमें समझ में आ जाता है हमारे अंदर वो गुण नहीं है. Right? Adam says, "I'm great." आदम कहते हैं मैं महान हूँ. Right? And Shiva says, "What do you mean you're great? I'm great." और श्रीवास कहते हैं तुम क्या कह रहे हो तुम महान हो मैं महान. So then immediately we're trying to establish ourselves. तुरंत हम स्वयं को स्थापित करने का प्रयास करते हैं. Who's senior? कौन महान है, कौन Who's वरिष्ठ है, advanced? कौन ज्यादा उन्नत है.
It's like, well, when did you join? कहते हैं तुम कब जुड़े हो यहाँ? And then you tell them, they say, well, I joined 6 months before you. और जब आप उनको बताते हैं तो फिर दूसरा वाला कहता है मैं तुमसे 6 महीने पहले जुड़ा हूँ, मुझे प्रणाम करोगे। My name is Prabhu. Prabhu or Mataji. प्रभु या माता जी, I'm your Mataji. मैं आपके माता जी हूँ। Right? So what? You joined 6 months before, and then all of a sudden you're like advanced senior devotee. तो आप 6 महीने मुझसे पहले जुड़े हैं, तो इसका मतलब आप उन्नत वरिष्ठ माता जी बन जाएंगे। This is childish, actually. ये सिर्फ बच्चों का खेल। It's like when you go to the new school, you know, and the people are like, they already were sitting there in that school. You know, they're like, oh, here we got a new person. He came, you know, he's in a lower grade, you know. जैसे स्कूल में होता है, स्कूल में जब कोई आप नए स्कूल में जाते हैं तो पुराने बच्चे वो पहले से उस स्कूल में रह रहे होते हैं तो देखते हैं वो ये तो कोई नया बच्चा है, ये नीचे स्तर का है। Immediately everyone's on top of you, you're down the bottom. और तुरंत ही सब लोग आपके ऊपर आ जाते हैं और आप सबसे नीचे आ You जाते go हैं। to new company and then say, oh, these are the new people. और जैसे आप They don't know anything. किसी नई कंपनी में काम करने जाते हैं, कहते हैं वो ये नए लोग हैं, You put down the. इनको कुछ नहीं आता है, कोई आता है वहाँ पे So आप all नीचे of गिराने this के लिए। activity is all just a mental concoction. तो ये सब mental काम speculation. मनगढ़ंत तरीके से मनोधर्म से होता है। Mahaprabhu was telling that there's her favorite furniture. वो उस बच्चे का सबसे पसंदीदा फर्नीचर है। She loves it. उनको बहुत पसंद है वो। We're getting used to it now. अब हमें तो उसकी आदत भी हो गई है। It's just the baby smashing the wood into the. बच्ची जो है हमेशा लकड़ी को बजाती रहती है। It's just part of the fabric of our experience here. और हमारे रोज के अनुभव का एक भाग बन चुकी है। This is our experience. This is what we're going through. ये हमारा अनुभव है, इससे हमें रोज गुजरना पड़ता है। So we are just concocting. Oh, I was saying Mahaprabhu said if you want to chant pure holy name, you have to be more humble than the straw lying on the street. महाप्रभु ने बताया अगर आपको अच्छे से जप करना है तो आपको रास्ते में पड़े हुए तिनके से भी ज्यादा विनम्र होना I'm होगा। like, okay, I'm feeling that way right now. और हम सोचते हैं हाँ मैं भी खुद को बहुत विनम्र मान रहा हूँ। Check. ये मैंने चेक कर लिया Then we है। have to be more tolerant than the tree. और फिर हमें पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु होना होता है। Okay, I'm feeling tolerant right now. तो हाँ मुझे बहुत ऐसा लग रहा है, बहुत शक्ति है मेरे अंदर, ठीक है वो भी चेक कर लिया। And then we shouldn't demand any respect from anybody. और हमें किसी से कोई सम्मान मांगना नहीं चाहिए। Well, nobody's here. जब कोई यहाँ है ही नहीं, Check. वो भी ठीक है। And now we can nicely always chant Sridham. और अब हम हमेशा अच्छे से शुद्ध नाम कर सकते हैं। So we're assuming a lot. हम कुछ ज्यादा ही आकलन कर रहे हैं। To manifest utter humility is a godly quality. ये पूर्ण विनम्रता प्रस्तुत करना एक साधु जैसे To महात्मा जैसे have, गुण you know, so much tolerance and patience. This is saintly quality. This is a sadhu quality. बहुत ज्यादा सहन शक्ति और धैर्य ये साधु जैसे गुण हैं। And not to demand any respect for ourselves. और स्वयं के लिए किसी सम्मान की मांग That नहीं means करते। we're free from pratishtha. इसका मतलब हम प्रतिष्ठा से मुक्त हो चुके हैं। Right? This is a saintly quality. ये सब साधु जैसे गुण हैं। That's a godly quality. ये साधुओं जैसे गुण हैं। You cannot concoct and manufacture that on some kind of materialistic psychological platform. तो आप खुद से इस तरह के गुण प्रकट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते मनगढ़ंत तरीके से भावनात्मक स्तर। So we just create and manufacture, concoct all of these ideas that we're humble, tolerant, and not demanding anything. तो हम बनावट करते हैं, निर्माण करते हैं, रचना करते हैं इन सारे गुणों का कि हाँ बहुत विनम्र है, बहुत सहन शक्ति है। And then we chant Namaparad. और उसके बाद हम नाम अपराध जप कर रहे होते हैं। So how we're going to, use those qualities to chant Shuddha Nam? तो कैसे हम इन गुणों का इस्तेमाल कर सकते हैं शुद्ध नाम, प्रेम नाम करने के लिए? So that's the difference between apparently we're chanting very nicely today. तो ये अंतर है कि हम बाहर से बहुत अच्छे से जप कर रहे हैं देखने में। But from a transcendental point of view, it means that we're on the platform of the soul. लेकिन दिव्य दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो हमें आत्मा के स्तर में आना होगा। Every atma, every soul is a sadhu. हर एक आत्मा असल में साधु है। When the mind is completely purified, Krishna says, and you find satisfaction on the platform of the soul. तो यहाँ बता रहे हैं कृष्णा कि जब मन पूरी तरह से दिव्य स्तर पे आ जाता है, शुद्ध हो जाता है, जब आप आत्मा के स्तर में आ जाते हैं, manifesting godly saintly qualities. और आप साधु जैसे देवताओं जैसे गुण प्रकट करते हैं, One will have all the good qualities of the great
saints and sages. तो सारे महान ऋषियों जैसे गुण उनके अंदर आ जाते हैं If we're on that platform. अगर हम उस स्तर में आते हैं। If we're not really purified and on that platform, on the soul platform, then we have no good qualifications. अगर हम उस स्तर पे नहीं है, शुद्ध स्तर पे नहीं, आत्मा के स्तर पे नहीं है, तो हमारे अंदर कोई अच्छे गुण नहीं होंगे। Because he is sure to be taking refuge in his own mental concoctions. क्योंकि वो निश्चय ही अपने स्वयं के मनगढ़ंत तरीकों का आश्रय लेगा। That means a false ego platform. इसका मतलब मिथ्या अहंकार का स्तर। That means material platform. इसका मतलब भौतिक स्तर। That means no good qualifications. इसका मतलब कोई असल गुण नहीं होंगे। Prabhupada says we're all addicted to mental speculation, प्रभुपाद कहते हैं हमें मनोधर्म करने की पूरी आदत लगी है, which is constantly concocting, mentally concocting, speculating. और निरंतर हम मनोधर्म करते रहते हैं कुछ न कुछ। And then all of these sinful desires, all these desires and plans, how to commit sinful activities, that's all coming because of this mental concoction, mental speculation. और ये सारे पाप कर्म की इच्छाएं, पाप कर्म की जो इच्छाएं, ये सारे इसी स्तर पे प्रकट होती हैं। It says where one who is situated on the platform of the soul is already given up mental speculation, mental concoction, and therefore materialistic desire. और कहते हैं जो आत्मा के स्तर में पहुंच चुके हैं, उन्होंने पहले ही इस मनगढ़ंत मनोधर्म और भौतिक स्तर का त्याग कर दिया है। Prabhupada said the only thing a soul can do is desire. बात कहते हैं आत्मा केवल एक ही मात्र कार्य कर सकती है, इच्छा प्रकट करना। Now it's just a question: is it spiritual desire for Krishna, or is it? If it's not that, then it's Maya. तो अब प्रश्न है ये आध्यात्मिक इच्छा कृष्ण के लिए है या फिर ये माया के लिए है? So only thing we can do as a soul is desire. एक ही मात्र कार्य जो आत्मा कर सकती है वो है इच्छा प्रकट करना। And that desire is influenced by our association. और वो इच्छा प्रभावित होती है हमारे संग के If we आधार पे। associate and hear about perfectional, transcendental spiritual platform, that will purify us and hopefully develop spiritual desire. और हम जब संग करते हैं और श्रवण करते हैं उस दिव्य स्तर में, तो आशा से वो हमें शुद्ध कर If पाएगा। we don't do that satsanga, sadhu sanga, and do asatsanga, तो अगर हम वो सत्संग साधु संग नहीं करते, असत्संग then करते it's हैं, all material speculation, materialistic plans, materialistic desires, then we just cultivating materialistic sinful desire. तो फिर भौतिक मनोधर्म, भौतिक इच्छाएं और भौतिक तरीके से हम इच्छाएं बनाते हैं, तो फिर हम और ज्यादा पाप करते हैं। Prabhupada said everything is based on association. प्रभुपाद कहते हैं सभी चीजें हमारे संग के Everything ऊपर is आधारित based है on sound vibration. और सब कुछ शब्द ध्वनि के ऊपर आधारित है। So if we associate with Krishna, Krishna's devotee, Guru Sadhu Shastra, that sound vibration will be hopefully spiritual transcendental sound vibration. अगर हम कृष्ण से गुरु साधु शास्त्र से श्रवण करते हैं तो वो शब्द ध्वनि आशा है हमें शुद्ध कर And पाएगा। if we associate with mental speculators and people who are concocting on false ego platform, materialistic consciousness, we're going to hear materialistic sound vibration. और अगर हम उन लोगों से श्रवण करेंगे जो मनोधर्म करते हैं, मनगढ़ंत चीजें बनाते हैं, भौतिक मनोधर्म, भौतिकतावाद में रहते हैं, तो हम उस तरह की इच्छाएं प्रकट करेंगे। So spiritual sound vibration means purification of materialistic desires, materialistic thoughts. तो आध्यात्मिक शब्द ध्वनि का मतलब है कैसे हम भौतिक इच्छाओं को, भौतिक विचारों को कैसे शुद्ध कर पाएंगे। And asatsanga and hearing materialistic sound vibration means contaminating the consciousness, putting us on this false ego mental concoction platform. और असत्संग मतलब हम उस संग के माध्यम से हमारे पाप कर्म की इच्छाओं को, भौतिक मनोधर्म को और भौतिकतावाद को बढ़ा रहे हैं। Then that means all materialistic desires. इसका मतलब सारी भौतिक इच्छाएं होंगी। And Prabhupada said anything that we're desiring which is separate from pure devotional service, surrendered to Guru Krishna, is more or less sinful activity. और प्रभुपाद बताते हैं शुद्ध भक्ति के अलावा हमारे भीतर जो भी इच्छाएं हैं वो कम या ज्यादा पाप कर्म है। So everything's based on desire. तो सभी कुछ हमारे इच्छा के ऊपर आधारित So है। are we trying to purify our materialistic sinful desires तो क्या हम शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं हमारे भौतिक पाप कर्म की इच्छाओं को by doing satsanga, sadhu sanga, and trying to cultivate spiritual desire? सत्संग साधु संग करके और आध्यात्मिक इच्छाओं को अभ्यास And if करके? we're not doing that, then all we're doing is contaminating and degrading further. तो अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम एक ही मात्र कार्य कर रहे हैं, स्वयं को दूषित कर रहे हैं और अपना पतन कर रहे हैं। Prabhupada said, consequently, it's rightly said herein, one has to give up all kinds of sense desire, which is manufactured by this mental concoction. और प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य बता रहे हैं कि परिणाम स्वरूप किसी को सभी तरह की इंद्रिय भोग की इच्छाओं का त्याग करना होगा जो मनगढ़ंत तरीके से बनाए जाते हैं। So if we're
addicted to asat sanga, we're listening to stupid mind and it's controlled by Maya, तो अगर हमें असत्संग करने की आदत है जो माया के द्वारा नियंत्रित है, then all materialistic sinful desires and thoughts and plans will be, baked there. तो सारे भौतिक योजनाएं, भौतिक इच्छाएं, भौतिक विचार वहाँ पे पक रहे होंगे, It will all be cooked up there. और वहाँ सारे पकवान बनेंगे। That's where it's starting from. वहाँ से शुरू होता है। Because Krishna says that Maya has captured your intelligence, mind and senses. क्योंकि कृष्ण बताते हैं माया ने आपके इंद्रिय, मन और बुद्धि को नियंत्रण And में because we're listening to और that, क्योंकि हम उसको सुनते रहते हैं, then listening to this material mind, mental speculation, then this is what is creating materialistic desires and plans to fulfill your materialistic desires. तो ये भौतिक मन को सुनने की वजह से ये हमारे मन में पाप कर्म की इच्छाएं, भौतिक योजना और भौतिक विचारों को जन्म देती हैं। Now it's saying that if we surrender to Rishikesh, master of mind and senses, ऐसा कहते हैं अगर हम ऋषिकेश को शरणागत करते हैं जो मन इंद्रिय के स्वामी हैं, and he'll be the witness and the judge of the quality and the quantity of our surrender. और वो गवाह है और न्याय करता है कि हमारी शरणागति में कितनी गुणवत्ता है, क्या मात्रा है। And if he's satisfied, pleased with us, Krishna says, I'll purify and control your mind and your senses for you. कृष्ण बताते हैं अगर वो उससे संतुष्ट होंगे, वो उससे सुखी होंगे, तो वो आपके मन और इंद्रियों को आपके लिए नियंत्रित करेंगे, शुद्ध करेंगे। By giving you nice engagement in hearing and chanting and serving a Krishna consciousness. और सही तरीके से आपको श्रवण कीर्तन में लगा के कृष्ण भावनामृत में। If we don't agree to that surrender, और अगर हम उनको शरणागत करने के लिए सहमत नहीं then होंगे, we're stuck with mental concoction and mental speculation, तो हम मनोधर्म से और मनगढ़ंत चीजों में फंसे which is all controlled by Maya, जो माया के द्वारा नियंत्रित की and we'll जाती just है। create and manufacture different types of desire for sense gratification and a plan how to execute it. और हम हमेशा चीजें बनाते रहेंगे अपनी भौतिक योजनाओं को, इंद्रिय भोग की इच्छाओं को और उनको पूरा करने के लिए। Prabhupada says, artificially, such sense desires, you cannot stop it. प्रभुपाद बताते हैं बनावटी तरीके से अपनी भौतिक इच्छाओं को, इंद्रिय भोग की इच्छाओं को So without रोकने surrender to Rishikesh, master of mind and senses, there's no way to get freed from this sense desires. तो ऋषिकेश को शरणागत किए बिना किसी भी तरीके से आप इस इंद्रिय भोग की इच्छाओं से मुक्ति नहीं पा That's सकते। what Prabhupada says, artificially you cannot stop that. You cannot overcome that. श्री प्रभुपाद बताते हैं कि बनावटी तरीके से आप इन Maya will just इच्छाओं को keep रोक नहीं torturing you. सकते। माया आपको जो है प्रताड़ित करते रहेगी, And जबरदस्ती then if करती you're रहेगी। thinking, feeling, willing, now you're engaging in sinful activities. From thinking, feeling, willing, now sinful reaction, then all the punishment, suffering coming from that. और जब आप सोचेंगे और उसके ऊपर इच्छा करेंगे और उसके ऊपर योजना बनाना शुरू करेंगे, तो आप उसको करने के लिए बाध्य होंगे और फिर उसके फल स्वरूप आपको पाप कर्म का फल भोगना होगा। So if you say, oh, I shouldn't think that way. I have to control my mind and my senses. तो कोई ऐसा कह सकता है कि हाँ मुझे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपने मन इंद्रिय को नियंत्रित करना चाहिए और मैं अपने मन और इंद्रिय को नियंत्रण में करने का प्रयास कर रहा Fighting हूँ against Maya. और माया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा Krishna हूँ। says it's Mama Maya. कृष्णा कहते हैं ये मेरी माया है। How are you going to fight against Maya? कैसे आप माया के खिलाफ लड़ाई करेंगे? Krishna says, I'm the controller of your mind and senses. It belongs to me. कृष्ण बताते हैं मैं तुम्हारे मन इंद्रिय का स्वामी हूँ और वो मेरे हैं। Without surrender to Rishikesh, how are we going to control our mind and senses? ऋषिकेश को शरणागत किए बिना कैसे हम अपने मन और इंद्रिय को नियंत्रित And if करेंगे? Krishna doesn't purify and control mind and senses, then it's just the barrage of Maya just giving you all of this manufacturing different ideas for sense gratification. और अगर कृष्ण आपके मन इंद्रिय को नियंत्रित नहीं करेंगे तो माया इस तरह से पूरी तरह से हावी रहेगी और इंद्रिय भोग की इच्छाओं से आपको भर देगी। It is rightly said herein that one has to give up all kinds of sense desire which is manufactured by mental concoction. और यहाँ बताया गया है कि किसी को त्याग करना होगा इन सारी इंद्रिय भोग की इच्छाओं को जो मनगढ़ंत तरीके से बनाए जाते हैं। And without surrendering to Rishikesh, Krishna, there's no way to artificially just, okay, I shouldn't think that way and I shouldn't act that way. There's no, you cannot get free from that. तो ऋषिकेश को शरणागत किए बिना आप इस इंद्रिय भोग की इच्छाओं से मुक्ति नहीं पा सकते। आप नहीं कहेंगे कि मुझे मैं ऐसा नहीं सोचना चाहता। Because Krishna says if you want to get free from it, you have to surrender to me. कृष्ण बताते हैं अगर आप मुझे शरणागत करना, अगर आप इनसे मुक्त होना चाहते हैं तो मुझे शरणागत करना होगा। Right?
Krishna says it's my Maya, very difficult, impossible to overcome unless you surrender to me. और कृष्ण बताते हैं ये मेरी माया है, इसे पार पाना बहुत कठिन है अगर आप मुझे शरणागत नहीं करेंगे। And then Prabhupada said, if you surrender to Krishna, then Krishna will order Maya to release you. और प्रभुपाद बताते हैं अगर आप कृष्ण को शरणागत करेंगे तो कृष्ण माया को आदेश देंगे आपको मुक्त Maya, करने के लिए। stop flooding his mind, intelligence, and senses with all of this desires for sense gratification. वो कहेंगे माया इनके मन इंद्रियों को भौतिक इच्छाओं, भौतिक योजनाओं, भौतिक विचारों से भरना बंद कर दो। Free him from this mental speculation, mental concoction. और मनोधर्म से, मनगढ़ंत चीजों से इनको मुक्त कर दीजिए। And then she just shuts it off. और फिर माया बंद हो जाएगी। And then you're like, oh, I don't hear anything. और फिर आप कहेंगे ओ तो मैं कुछ सुन नहीं पा रहा। I'm not used to that. और मुझे इसकी आदत ही नहीं है। I'm trying to deal with peace. अब मैं शांति से निपटने का प्रयास It's कर रहा हूँ। very strange. मुझे बहुत विचित्र लग रहा है Very शांति। quiet. ये बहुत शांत लग रहा है मुझे अब। I'm used to chaos. मुझे आदत लगी हुई थी कि जीवन में If कैसे I don't अफरा तफरी manage मची my रहे। chaos, then what do you do? अगर मैं जीवन के अफरा तफरी को व्यवस्थित नहीं कर रहा मैं करूँगा क्या? And we're calling that normal. और उसको हम कहते हैं सामान्य बात। That's normal. वो है सामान्य बात। So without surrender to Rishikesh, without surrender to Guru Krishna, there is no freedom from this constant mental speculation and mental concoction for these desires, unlimited desires manufactured by Maya. तो बिना कृष्ण को, गुरु और कृष्ण ऋषिकेश को शरणागत किए बिना ये माया मनोधर्म से जो आपको नित्य आपके भीतर प्रभावित करते हैं, इससे आप मुक्ति नहीं पा सकते। Prabhupada says if one is sincerely, seriously engaged in Krishna consciousness, प्रभुपाद बताते हैं अगर कोई गंभीरता से, एक निष्ठता से कृष्ण भावनामृत में लगता है, that means surrendered to Rishikesh, surrendered to Krishna, ऋषिकेश को शरणागत करता है, कृष्ण को शरणागत करता है, automatically तो अपने आप ही these sense desires will gradually go down and leave you. तो इंद्रिय भोग की इच्छाएं धीरे धीरे कम होकर आपसे दूर चली जाएंगी। Sense desires will subside और इंद्रिय भोग की इच्छाएं कम हो जाएंगी without any extraneous efforts. और बिना किसी जरूरत से ज्यादा प्रयास Get rid of my, these material desires and I'm trying to control my mind and senses. मैं भौतिक इच्छाओं से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने मन इंद्रिय को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ और माया के साथ लड़ाई कर रहा हूँ और ये बहुत थका रहा है मुझे। Prabhupada say you don't have to do all of that. It's not going to work anyway. और प्रभुपाद कहते हैं आपको ये सब करने की जरूरत नहीं और ये वैसे भी काम नहीं करने Just try to find out what Krishna wants you to do. बस ये पता लगाने का प्रयास कीजिए कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं And just try to do it. और बस उसे करने का प्रयास कीजिए। And then Krishna says, okay, he's surrendering to me. और कृष्ण देखेंगे कि हाँ ये मुझे शरणागत कर रहा And है he orders Maya, okay, shut off the spigot. और वो माया का आदेश देंगे कि आप अपना अब बोलना बंद करो। Unlimited, constant, jibber jabber, talking, speculation, mental concoction. और असीमित रूप से माया जो है भीतर बात करती रहती है, जीव जागो करती रहती है, मनोधर्म करती रहती Wow, है। this is exciting. आप तो बहुत Fantastic. रुचिकर हो रहा है। Wonderful. Yes. If you surrender to Krishna's instructions, Guru Sadhu Shastra, automatically the sense desires will go down and will leave you with no extraneous extra efforts you have to make. अगर आप कृष्ण को शरणागत करेंगे गुरु कृष्ण के निर्देशों को, आपको कोई भी जरूरत से ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी। We're doing it the hard way. और हम कठिन तरीके से करने का प्रयास And we're doing it in the way where Krishna is telling us that's not going to work. और हम उस तरीके से करने का प्रयास करें जहाँ कृष्ण हमें Because बता रहे you're हैं कि वो not काम नहीं करेगा। understanding the science here. आप इस विज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं। That's why Krishna says you're bewildered by your false ego. You think you can do everything. इसलिए कृष्ण बताते हैं अपने मिथ्या अहंकार से भ्रमित होकर हम सोचते हैं हम सब कुछ करेंगे। I'm going to stop thinking like this. मैं इस तरह से I'm सोचना going to बंद कर stop दूंगा। desiring like this. मैं इस तरह से इच्छा I'm करना going बंद to कर control दूंगा। my mind and my senses. मैं मेरे मन और इंद्रिय को नियंत्रित करने का प्रयास करूंगा। That's not correct. और ये सही नहीं है। Because that's Krishna's work. क्योंकि वो कृष्ण का काम है। Krishna says, I'm the supreme controller. कृष्ण बताते हैं मैं परम नियंत्रण I'm the करता हूँ। controller of your mind, intelligence, and senses. मैं आपके मन बुद्धि इंद्रिय का नियंत्रण करता हूँ। Your soul, your gross body, and your subtle body belongs to me. आपकी आत्मा, आपका स्थूल शरीर और आपका सूक्ष्म शरीर सब मेरा है। And I am the controller of all of those energies. और मैं इन सारी शक्तियों का नियंत्रण करता हूँ। But out of false ego, you're thinking you're doing everything. लेकिन अपने मिथ्या अहंकार में तुम सोचते हो तुम That सब you कुछ can कर do रहे हो everything.
कि तुम सब कुछ कर सकते हो, which in fact or actually Krishna says is being done by me. और कृष्ण बताते हैं जो असल में मेरे द्वारा किया जाता है. We're going about it wrongly. और हम गलत तरीके से जाने का प्रयास कर रहे हैं. Because we're thinking on false ego platform, we can understand something, we can do something. क्योंकि मिथ्या अहंकार के स्तर पे हम ये सोचते हैं हम कुछ समझ सकते हैं, हम कुछ कर सकते The हैं. only thing we can do is desire strong enough to surrender to Krishna. एक ही मात्र कार्य हम कर सकते हैं, इतनी तीव्र इच्छा शक्ति रखें कि हम कृष्ण को शरणागत करें. And that's the only way out. और यही एक मात्र तरीका है. And if that desire to surrender to Krishna is not strong enough to lead us into practical application of that, और ये कृष्ण को शरणागत करने की इच्छा इतनी तेज नहीं है कि हम उसके प्रति कुछ व्यवहारिक कार्य में लगें, then there's no relief from Maya. तो माया से कोई राहत नहीं मिलेगी. There's no purified mind, intelligence, and senses. शुद्ध मन, इंद्रिय, बुद्धि नहीं मिल पाएगी. And then we're just endlessly bombarded with the desires for sense gratification. और असीमित रूप से हमारे ऊपर हमला होते रहेगा असीमित इंद्रिय तृप्ति की. So if we want freedom from that, तो अगर हम इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, then one has to engage himself in serious and sincere Krishna consciousness without hesitation. भगवान बताते हैं किसी को गंभीरता से, एक निष्ठता से कृष्ण भावना में तो बिना हिचके लगना होगा. Maya is making us hesitate. माया हमें हमारे अंदर झिझक डाल रही है. Just like Shukracharya saying, if you surrender, you're going to lose everything. जैसे शुक्राचार्य कह रहे थे, अगर आप शरणागत करेंगे आप सब कुछ खो देंगे. Right? So his mental speculation, mental concoction, he's trying to give his association तो अपना मनोधर्म, अपना मनगढ़ंत तरीका, अपना संग वो उनको देने का प्रयास कर रहे to थे Bali Maharaj. बलि महाराज को. And Bali Maharaj had to reject it. और बलि महाराज ने उसको त्याग कर दिया. Because he understood, no, this will make me hesitate and not follow Krishna's desire. क्योंकि वो समझ पाए थे कि ये मुझे मेरे अंदर हिचक डालेगा और कृष्ण की इच्छा को पूरा करने नहीं देगा. Krishna says that because your intelligence is splayed out, कृष्ण बताते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत जगह because बटी it's हुई है, influenced by Maya, captured mind, intelligence and senses, therefore all splayed out. क्योंकि ये माया से प्रभावित है, मन, बुद्धि, इंद्रिय माया के नियंत्रण में है, इसलिए सारी तरफ फैली हुई है. मन मना भव मत भक्तो नहीं. So because your intelligence is splayed out with Maya, then your resolute determination to surrender and to perform devotional service, that's why it's not manifest. क्योंकि आपकी बुद्धि माया की वजह से बहुत जगहों पे बटी हुई है, तो भगवान को शरणागत करने की इच्छा, एकनिष्ठ इच्छा प्रकट नहीं हो रही है. That's why we're hesitant. और इसीलिए हम हिचक रहे हैं. So because material desires, material attachment is so strong, क्योंकि भौतिक इच्छाएं, भौतिक आसक्तियां इतनी शक्तिशाली हैं, it's not allowing us to surrender. वो हमें अनुमति नहीं दे रहा शरणागत करने की. Because we're still victimized by this mind, intelligence and senses which is controlled by Maya. क्योंकि अभी भी हमें प्रताड़ना दे रही है ये मन, बुद्धि, इंद्रिय जो माया के द्वारा नियंत्रित है. Instead of being Krishna Das, we're acting as Maya Das. तो कृष्ण दासी होने के बजाय हम माया दास या माया दासी की Then तरह we're कार्य being कर रहे हैं. victimized by this uncontrolled mind and senses. और अनियंत्रित मन और इंद्रिय के द्वारा हम प्रताड़ित किए जा रहे हैं. And that's why there's no peace. और इसीलिए कोई शांति नहीं, No peace, no satisfaction. कोई शांति नहीं, कोई संतुष्टि नहीं, Just suffering, anxiety position. और दुख और चिंताओं वाली स्थिति में है. Prabhupada says those who are highly developed souls, और वो बताते हैं जो उन्नत जीवात्माएं हैं, they always think of themselves as eternal servants of Krishna. वो सदैव स्वयं को कृष्ण नित्य दास के रूप में देख पाते हैं. Therefore, they can remain satisfied within themselves. और इसीलिए वो स्वयं में ही संतुष्ट रहते हैं. Such transcendentally situated person will then be freed from sense desires. और ऐसे दिव्य स्तर पे स्थित व्यक्ति इंद्रिय भोग की इच्छाओं से मुक्त रहता है. Because Krishna will tell Maya, don't put any desires for sense gratification in his head. क्योंकि कृष्णा माया को कहेंगे किसी भी इंद्रिय सुख की इच्छा इनके दिमाग में मत डालिए. Because Krishna is purifying and controlling your mind and senses, how Maya can force some sinful desires or material desires into your head. क्योंकि कृष्णा मन को नियंत्रण में किए हुए हैं और शुद्ध किए हैं, तो माया कैसे कोई पाप कर्म की इच्छा उनके दिमाग में डाल सकती है. You think Maya is going to fight with Krishna? आपको लगता है माया कृष्णा के साथ लड़ाई करेगी? Maya is servant of Krishna. माया कृष्ण की दासी है. So Krishna is saying, I don't want any material desires or thoughts of material desires. I don't want them to even think about it. तो अगर कृष्णा चाहेंगे कि किसी भी तरह की भौतिक इच्छाएं, पाप की इच्छाएं इसके बारे में सोचे भी वो. It says even in your dreams it will not come to you. तो कहते हैं आपके सपने में भी वो इच्छाएं फिर नहीं आएंगी. Because Maya will not go there. क्योंकि माया वहाँ जाएगी नहीं. So if we don't surrender to Krishna,
तो अगर हम कृष्ण को शरणागत नहीं करेंगे ऋषिकेश, master of mind and senses, जो मन इंद्रिय के स्वामी हैं, so that means we're not letting Krishna purify, control mind and senses. इसका मतलब हम कृष्ण को अनुमति नहीं दे रहे हमारे मन इंद्रिय बुद्धि को शुद्ध Automatically करने that means now Maya is controlling mind, intelligence तो and अपने आप ही senses. माया मन बुद्धि इंद्रिय को नियंत्रित And करेगी she's just flooding constantly material thoughts, material desires, sinful desires, just non-stop. और वो निरंतर भौतिक इच्छाएं, पाप कर्म की इच्छाएं, पाप कर्म के विचार भरती रहेंगी And then all of those thoughts and activities means it should be danger, like danger, danger, you know, it should be like suffering is coming, you know, you're going to suffer, you know. और इस तरह के विचार, इस तरह के कार्य में अगर आप लगेंगे तो आपको खतरा यानी कि किसी तरह का दुख जीवन में बहुत आने वाला है Even on thinking platform, Krishna will start warning you, like, stop thinking about this, surrender to me. यहाँ तक कि सोचने के स्तर में भी कृष्ण आपको चेतावनी देना शुरू करेंगे कि मुझे शरणागत करने के बारे में सोचो You don't stop thinking about it, now thinking, feeling, now you're like, okay, what does that mean? जब आप सोचना शुरू करेंगे फिर महसूस करना शुरू करेंगे कि इसका असल Now, अनुभव like, कैसा what would होगा I have to do to pursue that? और फिर आप ये सोचना शुरू करेंगे मुझे उस अनुभव को पाने के लिए क्या करना होगा Plan. अब हमें योजना की जरूरत पड़ेगी So it started with just some thought came to your mind. तो शुरुआत ऐसी होती है कि हमारे मन में कोई विचार आते Now हैं all of a sudden it's like, oh, that's an interesting thought. और फिर उसके बाद हम सोचने लगते हैं ये अच्छा विचार What है does that mean? इस विचार का अर्थ क्या है Is it possible? क्या ये मैं Can I पा be सकता हूँ happy? क्या मैं इससे सुखी हो Of पाऊंगा course you can be happy. अवश्य आप सुखी हो पाएंगे इससे Maya, I'm your friend. माया मैं तुम्हारा मित्र हूँ Of course you'll be peaceful and happy. अवश्य This आप time. सुखी और संतुष्ट होंगे इस I know बार it didn't work before. मुझे पता है पिछली बार ये काम नहीं आया But now you're smarter, you're wiser, लेकिन इस बार आप थोड़े बुद्धिमान हैं you're थोड़े चतुर हैं stronger, थोड़ी शक्तिशाली भी you're हैं more clever. और थोड़ा ज्यादा So चतुर हो this चुके हैं। time it's going to work. इस बार ये जरूर काम करेगा And we're like, really? और हम कहते हैं क्या सच में हाँ माया So we're कहती है listening to it. तो हम इसको सुनते रहते हैं Thinking, feeling, willing. Now we're pursuing it. सोचना अनुभव करना और उस पे योजना बनाना तो हम So उसको the only करना thing is, पड़ेगा how do we get freed from listening to this sense gratification through the mind? तो एक ही मात्र चीज है कैसे हम इस इंद्रिय सुख को सुनना रोक सकते हैं जो हमारे मन के माध्यम से निरंतर हम मिलते रहते His mind told him to leave. हैं कि मन ने उनको कहा कि चले जाओ This is dangerous information. बहुत खतरनाक जानकारी है You could lose everything. आप सब कुछ खो सकते हो And then if you're not thinking about sense gratification and plan making for sense gratification, then like, what else are you going to think about? और अगर हम इंद्रिय सुख के बारे में और इंद्रिय सुख की योजना कैसे हम बना सकते हैं इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो इसके अलावा और हम क्या सोचेंगे That means you actually have to surrender. क्या मतलब इसका मतलब हमें शरणागत करना पड़ेगा Then Maya's like, just get out of here. वो मानेंगे कि चलो यहाँ से निकलो Just out of nowhere, Maya just leave. तो कहीं से भी आके माया कहेगी निकलो यहाँ से And then we're like a victim, then you just get out. और फिर हम इस तरह से माया की तरफ प्रताड़ित हो We're जाते like the servant of हैं Maya. और माया के हम Maya दास said, if you keep listening to this, your desire may change. माया कहेगी अगर आप इसको सुनते रहेंगे तो आपकी इच्छा हो सकती है बदल जाए And then your plan may have to change. और आपकी योजना आपको बदलनी पड़ेगी So you better get out right now. तो बेहतर होगा कि निकल लो यहाँ से And immediately just stands up. Exit stage right. बाहर जाने का रास्ता That's what happens, right? और ये होता है So Maya covers the intelligence, तो माया बुद्धि को ढक देती है so you don't hear this ताकि आप information, इस जानकारी को सुने ना and then drags you away. और फिर आपको बाहर निकाल देती It's like some guy came with a hook and just like pulled him out of the room. है एक हुक लेकर आया उसको रूम से बाहर खींच I के ले गया literally saw the hook. It just like, I don't know. मैंने देखा वो उधर से आया और उसको दरवाजे से खींच के बाहर ले गया Another one bites the dust. और एक धूल में मिट गया What to do? क्या करें Prabhupada said, don't be surprised that people are going to leave. प्रभुपाद कहते हैं इससे आश्चर्य मत होइएगा कौन लोग चले जाएंगे Be surprised who stays. इससे आश्चर्य करेगा कौन यहाँ बना रहता है I'm so surprised they left. Don't. Why are you surprised they left? आश्चर्य मत हो इस बात से कि कौन छोड़कर जा रहा है Be surprised who takes takes shelter of this information so that Maya doesn't make them leave. और इस बात से आश्चर्य करिए कि वो लोग जो बने हुए हैं इस जानकारी को लेने के लिए ताकि माया उनको बाहर ना That's more निकाले significant. और वो ज्यादा महत्वपूर्ण है So this is all about desire. तो ये सब इच्छा के ऊपर आता है Everyone's fighting with the desire. सभी कोई अपनी इच्छा से लड़ाई कर रहे हैं Prabhupada said, the only thing you can do is desire. प्रभुपाद कहते हैं एक ही मात्र कार्य आप जो कर सकते हैं इच्छा प्रकट You करना can do so many things. हम सोचते हैं हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं Then why does Prabhupada say the only thing a soul can do is desire? प्रभुपाद ने ऐसा क्यों कहा कि आत्मा केवल इच्छा कर सकती है I mean, it's going to either be spiritual desire or material तो desire. या तो वो आध्यात्मिक इच्छा होगी या भौतिक इच्छा It's going to be desire on the platform of the soul,
ये आत्मा के स्तर की इच्छा होगी, or desires on the platform of the gross and subtle body. या फिर स्थूल या सूक्ष्म शरीर के स्तर की इच्छाएं होंगी. So if we agree that yes, I want to surrender to Krishna, to Rishikesh, then he controls mind, intelligence, and senses, and keeps your intelligence, mind, and senses engaged in devotional service. तो अगर आप कृष्णा ऋषिकेश को शरणागत करना चाहते हैं तो वो कृष्णा मन, इंद्रिय, बुद्धि को नियंत्रित करेंगे और उसे भक्ति में, सेवा में लगाए रखेंगे. If we don't take that opportunity, then automatically Maya takes control. और अगर हम इस मौके का लाभ नहीं उठाएंगे तो अपने आप ही माया नियंत्रण करेगी. Then all the different thoughts and the senses and all plans, all of this stuff just start to flood in you. और फिर सारे विचार, सारी योजनाएं, सारी इंद्रिय आपको आपके अंदर बाढ़ ला देंगी इच्छाओं की. And it's all a disaster waiting to happen. That's why it's complete anxiety. और आपके सामने विपदा आने वाली होगी और इसीलिए आप पूरी चिंता में होंगे. Because on some deeper level we know this is insane. क्योंकि भीतर में गहराई में हम इस बात को समझते हैं कि पागलपन The है. source of my suffering again. ये दोबारा मेरे दुखों का कारण बनने वाला है. But what to do? लेकिन क्या करें हम? This is what I'm thinking about. यही मैं सोच रहा था. These are my desires. यही मेरी इच्छाएं हैं. I'm a servant of my desires. मैं अपनी इच्छाओं का दास हूँ. So again, तो फिर से heavy lashes. भारी भारी मार खानी पड़ेगी. It's very simple. बहुत सरल है. Explanation. बहुत सरल विवरण है ये. So devotee means how do you purify and get freed from materialistic or sinful desire. That's what it means to be devotee. भक्त का मतलब होता है कैसे आप शुद्ध हो और भौतिक इच्छाओं से कैसे मुक्त हो पाए, पाप की इच्छाओं से. So we try to purify and get freed from our materialistic thoughts and desires. तो क्या हम शुद्ध करके अपने भौतिक इच्छाओं, पाप कर्म की इच्छाओं से मुक्ति पाने का प्रयास कर Or रहे we हैं? just concocting and building and plan making how to execute sinful materialistic desires. या फिर हम मन में बनाने का प्रयास कर रहे हैं और निर्माण कर रहे हैं कैसे हम भौतिक इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं. Then that is not what devotee means. तो भक्त का मतलब ये नहीं होता. We're devotees. हम भक्त हैं. Any questions or points? कोई प्रश्न या कोई बात? Anybody? Yeah? So all desires are influenced by association? तो सारी इच्छाएं संग के ऊपर प्रभावित होती हैं. Okay, let's hear it. तो एक बार इसको हम सुनते हैं. Srila Gurudev, it means that if the desire will be right, then also problem immediately will be solved. Yes? How do we know if our desire is right? माता जी पूछ रहे हैं अगर हमारी इच्छाएं सही होंगी तो सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी. That's your question. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि हम सही इच्छा कर रहे हैं या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये असल में इनका प्रश्न. How do we know if our desire is coming from Krishna or Maya? कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी इच्छा कृष्णा से आ रही है या माया से? That's the $100,000 question. ये $1,000 का 1 लाख का सवाल है. He's a brahmachari. He doesn't know about money. तो पैसे से कोई ज़्यादा पता नहीं है. Because sometimes Maya makes it seem very spiritual. क्योंकि कई बार माया उसको बहुत आध्यात्मिक दिखाती है विचारों को. Right? If Maya is telling you to go rob a bank, you know, that's pretty easy to understand. Like, अगर माया कहेगी आपको जाके asking you to rob the bank. अगर माया आपको अगर आपको विचार आएगा कि आपको जाके बैंक लूटना चाहिए तो अवश्य वो माया से आ रहा है क्योंकि कृष्णा आपको वो नहीं करने वाला. That's pretty clear, I hope. तो वो तो बहुत साफ है. मुझे उम्मीद है. Krishna told me to rob this bank. You know. हम सोचेंगे मेरा तो इच्छा है कृष्णा ने मुझे कहा है बैंक I'm trying to जाके build a temple in Mayapur. या मायापुर में एक मंदिर बनाने का प्रयास करो. Krishna. But sometimes it comes and it looks very spiritual. कभी-कभी हमारे अंदर आता है और देखने में बहुत आध्यात्मिक लगता है. Just like Arjuna, he built such an amazing case why he doesn't have to fight. जैसे अर्जुन ने इतना अच्छा केस बनाया कि क्यों उसे युद्ध नहीं करना चाहिए. He's quoting the Shastra, वो शास्त्र की बात कह रहे हैं, culture, और संस्कृति सभ्यता की बात कर रहे हैं. right? So nice presentation. इतनी अच्छी प्रस्तुति दी अर्जुन ने. But it was Maya. लेकिन ये सब माया था. But he thought it was very sound argument. लेकिन उन्होंने सोचा ये तो मैं बहुत अच्छी बहस दे रहा हूँ.
very spiritual. और सुनने में बहुत आध्यात्मिक लग रहा And है everything else is sinful. और बाकी सब उसके अलावा पाप कर्म लग रहा है। That's why Krishna says, better you do what I'm asking you to do, even if you do it और imperfectly, इसलिए कृष्ण बताते हैं बेहतर होगा तुम वो करो जो मैं तुमसे चाहता हूँ, हो सकता है तुम उसको अपूर्ण तरीके से करो, than to try to do someone else's service, but you do it perfectly. इसके अलावा किसी और के लिए किसी और की सेवा करने का प्रयास करो, हो सकता है तुम उसको बहुत अच्छे So तरीके से the भी point करो। is, what does Krishna want? लेकिन प्रश्न बस यही है कि कृष्णा क्या चाहता है। You know, maybe you pick up someone else's service and do it perfectly, हो सकता है आप किसी और की सेवा उठा के बहुत अच्छे तरीके से करें, but Krishna not ask you to do that. लेकिन कृष्ण ने आपको वो करने के लिए नहीं कहा है। That means that that so-called dharma now becomes adharma. इसका मतलब वो नाम मात्र का धर्म अब अधर्म है। And then you do something even imperfectly. और हो सकता है आप बहुत सही तरीके से कुछ ना भी करें, But if you're trying to do that for Guru Krishna's pleasure, then he'll accept that as devotional service, as dharma. तो लेकिन अगर आप उसको गुरु कृष्ण को सुखी करने के लिए कर रहे हैं तो वो उसको भक्ति में सेवा धर्म के रूप में स्वीकार किया जाएगा। So if everything's based on desire, then what is our desire? Is it coming from Krishna or is it coming from Maya? तो अगर सब कुछ इच्छा पे आधारित है तो वो इच्छा कहाँ से आ रही है, कृष्ण से या माया से? Because you can say, well, I'm in association of devotees, क्योंकि आप कह सकते हैं मैं भक्तों के संग में and हूँ, we're hearing and chanting, मैं श्रवण कीर्तन कर रहा and हूँ we're in the holy dham. और हम पवित्र धाम में हैं। So that means since we're doing all of those things correctly, whatever desire is coming, that must be coming from Krishna. इसका मतलब मैं ये सारी चीजें अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, इसका मतलब जो भी मेरे अंदर इच्छा आ रही है वो सिर्फ कृष्णा से आ रही है। Yeah, because Gurudev said, based on your association, that will influence your desire. क्योंकि गुरुदेव ने कहा है आप जैसा संग करेंगे वो आपकी इच्छा को उसी तरह प्रभावित करेगा। So because I'm in association with devotees, and therefore I'm taking that this desire is spiritual. और क्योंकि मैं भक्तों के संग में हूँ तो मेरे अंदर जो इच्छा आ रही है वो अवश्य आध्यात्मिक इच्छा होगी। It may be or it may not be. हो सकता है और नहीं भी। That's why we need a spiritual master और इसीलिए हमें आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है to tell us whether it's spiritual, whether it's coming from Krishna or it's coming from Maya. हमें ये बताने के लिए कि ये कृष्णा से आ रहा है या माया से। That's the advantage of having a spiritual master. ये लाभ है आध्यात्मिक गुरु होने पाने का। Because you can say, Krishna, this sounds spiritual. I like the idea, but I'm not convinced that it's transcendental. I'm not sure that it's coming from you. क्योंकि अवश्य ऐसा कई बार हो सकता है कि कोई इच्छा जो है कृष्णा से आ रही हो, दिव्य हो, लेकिन हम सुनिश्चित ना हो वो कृष्णा से आ रही है या नहीं। So just because we think something and we like the idea, it doesn't mean it's coming from Krishna. ये बस हमारे मन में कोई विचार आ गया और हमें वो विचार पसंद आ रहा है, जरूरी नहीं वो कृष्णा से ही आ रहा हो। So it needs a confirmation. तो हमें पुष्टिकरण की जरूरत है। Even very advanced Vaishnavas, they always get confirmation. यहाँ तक कि बहुत उन्नत वैष्णव भी हमेशा पुष्टिकरण करते Like हैं, again and again कि confirmation. बार-बार वो पुष्टिकरण मांगते हैं। Not like, you know, if a leaf falls off that tree right now, I'll take it that Krishna wants me to do this. ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ अगर इस पेड़ से अभी एक पत्ता गिरता है तो मैं मानूंगा मेरे अंदर जो इच्छा है वो कृष्णा से आ रही है। Right? All the leaves are falling off the tree. It's that time of the season, you know what I mean? पेड़ से वैसे भी सारे पत्ते गिरते ही रहते हैं, ये पेड़ से पत्ते गिरने वाला मौसम You है। go over and sit in front of the season, the trees, all the leaves are falling, and you say, as soon as one leaf falls there, definitely Krishna wants me to do this. अगर पतझड़ का मौसम है और आप कहेंगे अगर एक पत्ता पेड़ से गिरता है तो मेरे अंदर जो इच्छा है मैं मानूंगा वो कृष्णा से आ रहा है। I mean, if we want to cheat, we can cheat, right? अगर हम ठगना चाहते हैं तो हम ठगे जाएंगे। And then we're just waiting like 2 nights for a leaf to fall, you know? और हम 2 रातों में बैठे हुए हैं कि पत्ता कब गिरेगा पेड़ से। Like we're like shaking the tree, you know? और हम पेड़ को हिलाने लगेंगे बैठ के। It's like finally the leaf falls, you know? We're picking it, like throwing it on the ground, you know? और अंत में एक पत्ता गिरेगा और वो भी पत्ता हम तो हाथ से तोड़ के नीचे गिराएंगे। And then we're so crooked, we're like, the leaf, look, take a picture of it. The leaf's on the floor. It's my confirmation. और वो हम इतने कुटिल हैं, हम उस पत्ते का तस्वीर खींचेंगे कि देखो ये पुष्टिकरण हो गया। I'm a believer. हाँ, अब मैं विश्वास करता हूँ। If I show someone this picture, right, they'll say, yeah, that picture says there's a leaf on the floor. अगर मैं किसी को Confirmation. तस्वीर दिखाऊंगा कि हाँ ये पत्ता पेड़ से गिरा है तो मेरा पुष्टिकरण हो गया मेरी We इच्छा can का। concoct anything. हम कुछ भी बनाते रहते हैं। Maya can put anything in your head. माया हमारे मन में कुछ भी डाल देती है And it may look 100% spiritual. और देखने में पूरे 100% आध्यात्मिक लग सकता है। But if you look through history, every religious order of people who are trying to practice spiritual life, every one of them has this dilemma. तो अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे जितने भी आध्यात्मिक लोग
इसका अभ्यास करने का प्रयास करें, सभी के भीतर यही एक दुविधा है। It's like called the power of discernment. How do you understand? Is this coming from Krishna or is it coming from Maya? ये सबसे बड़ी दुविधा है कि कैसे हम समझ पाएंगे कि क्या कृष्णा से आ रहा है और क्या माया से आ रहा है। So it's very bewildering. तो ये बहुत ही भ्रमित करने वाला And then है। like we're like yes, then no, yes, no, accepting and rejecting. कभी-कभी कहेंगे हाँ, कभी-कभी ना, कभी स्वीकार करेंगे, कभी अस्वीकार करेंगे। So if the whole problem is mental speculation and mental concoction, and all we are is on a mental platform accepting and rejecting, there's no relief on that platform. तो अगर हम पूरे मनोधर्म के स्तर पे मनगढ़ंत चीजें बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस मानसिक स्तर पे हम असल स्तर पे हैं। That's why when someone acts like they're really sure, I say, is it crystal clear, like 100% Krishna wants you to do? तो अगर कोई बहुत सुनिश्चित होता है किसी इच्छा के प्रति, तो उससे आप पूछते हैं कि क्या आप 100% सुनिश्चित हैं कि कृष्ण आपसे यही चाहते हैं? They're like, I think so. तो कहते हैं हाँ, मुझे ऐसा लगता है कृष्ण ऐसा चाहते हैं। I hope so. मुझे उम्मीद है। And I'm like, well, that doesn't sound very like you're sure of yourself. तो फिर मैं पूछता हूँ, ऐसा बहुत नहीं लग रहा कि आप बहुत सुनिश्चित हैं? I mean, if Krishna 100% convinced you, should you be that like hesitating? तो अगर कृष्ण ने आपको 100% आश्वस्त किया है, तो क्या आप उसके प्रति Should you be that skeptical? तो क्या आप उससे बचने का प्रयास करेंगे? Doubtful of your plan? Why are you so doubtful and skeptical of your plan? क्यों आप इतना संदेह कर रहे हैं और कृष्ण की योजना और उस पे बचने का प्रयास कर रहे हैं? Because you're not guaranteed in understanding that it came from Krishna. क्योंकि आप सुनिश्चित नहीं है कि असल में वो कृष्णा से आ रहा है या नहीं। Therefore, it's risky. और इसीलिए उसमें थोड़ा खतरा है। So this Krishna, he knows. Does this person really want to know the truth or not? तो कृष्णा जानते हैं इस बात को, ये व्यक्ति असल में सत्य जानना चाहता है या नहीं? Does he really want to know whether that's coming from me or not? क्या असल में ये जानना चाहता है या नहीं, ये मुझसे आ रहा है या नहीं? And Krishna will know. और कृष्णा इस बात को जानता Now है। it's a question of Krishna giving us instruction. अब यही एकमात्र प्रश्न है कि कृष्णा हमें वो निर्देश देंगे। And therefore he sends us bona fide guru, और इसी के लिए वो हमें प्रमाणिक गुरु who is भेजते the हैं, purified medium of Krishna. जो कृष्णा का शुद्ध माध्यम है। The guru is not concocting, coming up with some plan for you. गुरु कुछ अपने मनगढ़ंत तरीके से आपके It's लिए not योजना going to नहीं solve बनाते हैं anything. और उससे किसी भी चीज का समाधान नहीं It होता। has to be what does Krishna want. ये यही होना चाहिए कि कृष्णा क्या चाहते So हैं। bona fide guru, my spiritual master many times said, he knows what is Krishna's intention for you. मेरे गुरुदेव ने कई बार बताया है कि प्रमाणिक गुरु को पता होता है कि कृष्णा का क्या उद्देश्य है जीवात्मा से। So if you really want to know, then you need a guru. अगर आप असल में जानना चाहते हैं तो आपको एक गुरु की And जरूरत है। then we have to hear and put faith in those instructions. और हमें श्रवण करके उनके निर्देशों में श्रद्धा रखनी If होगी। we're doubting Krishna, we're doubting the guru, तो अगर हम कृष्णा में संदेह कर रहे हैं तो हम गुरु में संदेह कर रहे हैं। then you're doubting the instruction, तो आप निर्देशों में संदेह कर रहे हैं you're not making it life and soul. और उसे अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर रहे हैं। So what happens? Then you hesitate. और फिर क्या होता है, आप हिचकते हैं Then you're hesitating because you're not 100% confident. क्योंकि आप 100% आत्मविश्वास आपका नहीं है, इसलिए So आप we're हिचकते just रहते हैं। waiting for something bad to happen. तो इसलिए हम कुछ बुरा होने का इंतजार कर Because रहे we're हैं not trusting Krishna. क्योंकि हम कृष्णा में We're हमने not विश्वास नहीं trusting किया। the guru who's supposed to be a purified medium of Krishna. गुरु में विश्वास नहीं किया जो कृष्ण के शुद्ध माध्यम है। So guru giving instruction, then we're like, okay, let's see how it goes. निर्देश दे रहे हैं और हम कह रहे हैं ठीक है, देखते हैं क्या होता है। And as soon as there's some little thing is happening, we don't understand. We're like, I don't know if this really came from Krishna. और जैसे कोई छोटी चीज होने लगती है तो हम सोचने लगते हैं मुझे पता नहीं है कृष्णा से आ Why रहा is this है, happening to me? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, Why is this difficulty coming? क्यों Why ये is this परेशानी आ challenge रही है, coming? क्यों मेरे सामने चुनौतियां आ रही हैं। Now I'm wondering, is this really Krishna's arrangement? और अब मैं चिंता कर रहा हूँ कि असल में कृष्ण की व्यवस्था है या नहीं। So the problem with that, you can never get free from mental speculation platform. और समस्या ये है कि कभी भी आप मनोधर्म की स्थिति से बाहर नहीं निकल सकते। That means we'll constantly keep listening to this mental concoction. यानी कि हम निरंतर इस मनगढ़ंत चीजों को सुनते रहते हैं। So who's orchestrating the mental concoction? तो हमारे मनगढ़ंत चीजों को कौन नियंत्रण में रखा है, Who's the source of that? कौन उसका स्रोत है? Maya. माया। That means everything from just the thought and the inception of the idea is already faulty. यानी कि जो भी हमारे विचार या जो हमारी इच्छा आ रही है इसका नींव ही त्रुटियों से बना। 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3। Okay, now let's do the whole rest of the equation. और उसके बाद आप पूरा गणित करते हैं।
I told you that time when in mathematics they have the answer in the back of the book. और मैंने बताया था कि गणित की किताब के आखिरी में उत्तर दिया होता है. And you like have to test yourself, you know, how close did I get that answer, right? और आपको परीक्षा करनी होती है कि आप उस उत्तर के कितने नजदीक पहुंचे. Many times I'm flying through that, I'm like, oh, I definitely have this equation, I have this figured out. और कई बार मैं पूरा गणित करता हूँ, मैंने सोचा हाँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से बना लिया है और मैं 100% सुनिश्चित हूँ मैंने सही किया है. इस बार मैंने सही बनाया. Then I turn back और फिर मैं आगे पेज खोलता हूँ another number, you know? और वहाँ पे कुछ अलग ही उत्तर मिलता है. Something's wrong. लगता नहीं यहाँ उत्तर में कुछ गड़बड़ है. Something's wrong with this book. इस किताब में कुछ गलती है. Because I'm so sure of myself. क्योंकि मैं स्वयं में इतना सुनिश्चित हूँ. And then you go back and you start looking at every little equation, right? और फिर आप वापस जाते हैं अपने जो गणित के उसमें हर एक And you say, oh, right in somewhere in there, 1 + 1 = 3. और फिर आप देखते हैं वो आपने गलती कर दी थी 1 + 1 आपने 3 बना दिया था. Then you see the fault, isn't it? तब अपनी गलती देख पाते हैं. So we need Krishna, mercy of the Guru, so we can get an absolute answer. तो हमें कृष्णा की कृपा, गुरु की कृपा चाहिए ताकि हमें एक सही उत्तर मिल सके. But are we looking for absolute answers? लेकिन क्या हम उस परम उस सत्य की तलाश कर रहे हैं? Or are we in the business of accepting people's opinions? या फिर हम लोगों के विचारों को स्वीकार करने में लगे हैं? Are we in the, you know, we have like a basket, we're going around asking for opinions? क्या हम टोकरी लेके लोगों के पास जा रहे हैं कि मुझे अपने अपने विचार बताइए? Do you have an opinion about what I should do? क्या आपके पास कोई ख्याल है कि मुझे क्या करना चाहिए? You know my story, right? Do you have an opinion about आपको पता है मेरी जीवन की कहानी क्या है? आपके And पास then what do you do? You कोई just ख्याल like है? mix it around. और फिर हम सारे ख्यालों को विचारों को जमा करते हैं और उसमें से एक उठाते हैं और एक को निकालते हैं. एक उस कागज का टुकड़ा बाहर निकालते हैं. And it's okay, Krishna's arrangement. और कहते हैं ये है कृष्ण की व्यवस्था. Because I was depending on Krishna, I was praying to Krishna. क्योंकि मैं कृष्ण के ऊपर निर्भर हो रहा था, मैं I'm कृष्ण going से to reach प्रार्थना कर into this रहा था basket. कि मैं इस बास्केट के अंदर जाऊंगा I'm not going to look at anything. और मैं कुछ भी I'm just going to खोल के reach नहीं into this देखूंगा. basket. I'm going to mix it around. मैं इस टोकरी में जितने कागज है सबको इधर उधर Whatever मिलाऊंगा piece of paper I pull out, और जो भी कागज का टुकड़ा उठेगा I'm going to take that as absolute. उसको मैं परम सत्य मानूंगा. Why are you guys laughing? आप लोग You हंस guys रहे हैं. must have tried this before. आप लोगों ने आवाज से पहले That's why you're laughing. अभ्यास किया होगा इसलिए आप लोग हंस रहे हैं. Right? You're waiting for the tree to fall, you're waiting to pick the right piece of paper. आप पेड़ के से पत्ते गिरने का इंतजार कर रहे होंगे या And कागज then you का कौन सा pick one टुकड़ा piece of उठाएंगे paper and it says, don't do it, you know. और फिर आप कागज का टुकड़ा उठाएंगे उसमें लगे And दिखाने then लगे you ये just मत like, करो. you know, crumble it up. और फिर हम उस कागज को मोड़ के पीछे फेंक I was cheating when I went to get that piece of paper, you know. और मैं ठगा गया जब मैं कागज का टुकड़ा It उठाने जा wasn't रहा था. done fairly, you सही know. तरीके से नहीं किया गया था. So, you know, if we want to cheat like that, Krishna will cheat you. तो अगर आप इस तरह से ठगना चाहते हैं तो कृष्ण आपको ठगेंगे. And then when you get it, everything you wanted, you're like, oh, Krishna's और arrangement. आपको वो सब चीज जो आप चाहते हैं आपको मिलने लग गया तो कहेंगे यार कृष्ण की व्यवस्था है. I get the piece of paper, take a photo of it, tell your friend, you see second confirmation, the leaf fell, the paper says like this. तो आप कहेंगे वो 2 बार पुष्टि करना हो चुका है. कागज के टुकड़े का तस्वीर खींच के अपने मित्र को भेजेंगे और कहेंगे पेड़ का पत्ता भी एक गिरा था. Now I'm 100% sure. और अब मैं 100% सुनिश्चित हूँ. And then you go to the Guru and the Guru's like, are you 100% sure? गुरु के पास जाते हैं, गुरु पूछते हैं क्या आप And then 100% you're like, सुनिश्चित why हैं? is Gurudev like so doubtful about this plan, you know? और फिर हम कहते हैं गुरुदेव मेरे योजना में इतना संदेह क्यों कर रहे हैं? Right? Why he's just not like readily accepting it? you क्यों know? तुरंत जो है मेरी योजना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? Then he starts saying, oh, okay. फिर हम Let's सोचते हैं pray to अच्छा, Krishna some more. गुरु कहेंगे चलो थोड़े कृष्णा से और प्रार्थना करते हैं. Let's see what Krishna says. चलिए देखते हैं कृष्णा क्या कहते हैं. And then all of a sudden your whole plan is just like totally undermined, you know? और फिर अचानक से आपकी पूरी योजना जो है नीचे ध्वस्त हो जाती है. I mean, the Guru's asking, you know, are you sure this is what Krishna, do you think it's what Krishna wants? Why is he asking that question? और गुरु जब पूछते हैं कि आपको सुनिश्चित है कि ये योजना कृष्णा से आ रही है तो आप गुरु पे सवाल उठाने लगते हैं. गुरु क्यों पूछ रहे हैं ऐसा मुझसे? That means he's doubting it. इसका मतलब वो भी संदेह कर रहे हैं. So you can have like strength in it. तो क्या आपके अंदर उसके प्रति Sometimes many शक्ति times होगी? the devotees, they have these big plans, you know, and I said, what's your plan, you know? कई बार भक्तों के पास बड़ी योजना होती है और मैं उनसे पूछता हूँ आपकी योजना क्या है? And then they start telling their whole plan, enthusiastic, I feel it in my heart, I got so much confirmation. और फिर भक्त जो है पूरे उत्साह से कहते हैं मेरे पूरे हृदय से ये योजना आ रही है, मुझे बहुत विश्वास है इतनी योजना में.
And it says, okay, sounds alright. मैं कहता हूँ चलो सुनने में अच्छा लग रहा है. Is it crystal clear? लेकिन क्या आप शीशे की तरह साफ है आपके लिए? 100% absolutely coming from Krishna? क्या 100% ये अवश्य कृष्णा से आ रहा है? And then they start getting like shaky. और तब वो थोड़े कांपने लगते हैं. Then they start hesitating. और फिर थोड़े वो हिचकने लगते हैं. Then they're like, well, I think it is. It's logical. तो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है और ये तर्कपूर्ण लग रहा है. Practical. और बहुत व्यवहारिक भी लग रहा है. I feel good about it. और इसके प्रति मैं अच्छा महसूस I've got कर a रहा हूँ. good plan. और बहुत अच्छी योजना भी है. Okay, all of that might be alright. तो हो सकता है सब चीजें ठीक हो. But is that what Krishna wants? लेकिन क्या कृष्णा वो चाहते हैं? That's the final question. यही अंतिम प्रश्न है. Because it says out of all of the actions, where Krishna is the final word in action, right? क्योंकि कहते हैं सभी कार्यों में सबसे अंतिम कारक कृष्ण है. He's the final sanctioning authority. अंत में वही सभी कार्यों का अनुमति प्रदान करता So है. if this is not blessed and mercy and blessing coming from Krishna, then that means it's destined to fail. तो अगर आशीर्वाद नहीं मिला हो कृष्ण का और कृपा नहीं मिला हो तो अवश्य वो असफल होगा. So we can accept that good advice and just stop the speculation. तो क्या हम इस अच्छी सलाह को स्वीकार करते हैं, मनोधर्म Or we करना can बंद just say, करें? you know, I'm doubting why the Guru told like this. I think the plan is perfect. या फिर हम संदेह करेंगे क्यों गुरु ऐसा कह रहे हैं, मुझे लगा था ये योजना पूरी तरह सही है, मुझे ये योजना अच्छी नहीं लग रही. It's already underway. और ये पहले ही मैं It's इस रास्ते already में आगे in बढ़ चुका हूँ motion. और मेरी भावना में आ चुका है Everything's already in motion. और सारी चीजें अब बढ़ चुकी हैं Now आगे. it will be very difficult to change that. अब इसको बदलना बहुत कठिन होगा. You see how Maya does all of this thing? माया देखिए किस तरह से ये सारे कार्य करती And है. that whole time, it's complete mental speculation and mental concoction, और पूरे समय मनगढ़ंत तरीके से मनोधर्म कर रहे होते हैं. which means no peace, मतलब कोई शांति नहीं, no clear answer and plan, absolute plan means no peace. कोई साफ उत्तर नहीं, परम सत्य का ज्ञान नहीं, इसका मतलब And कोई no शांति नहीं. peace means no happiness. और कोई शांति नहीं, इसका मतलब कोई सुख नहीं. So how many are we really looking for absolute answer? तो कितने लोग जो है उस सही उत्तर की तलाश कर रहे हैं. And Krishna will know. और कृष्ण इस बात को जानेंगे. Do we really want to know absolutely, and will we accept it? क्या हम असल में जानना चाहते हैं और क्या हम उसको स्वीकार करेंगे? And if we don't, then we hand it over to Maya. और अगर हम नहीं करेंगे तो हम माया के हाथ में सौंप दिए जाएंगे. That's what Prabhupada said. You're not trusting Krishna. इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आप कृष्ण में विश्वास नहीं कर रहे. Krishna said, you're not hearing me because of your false ego. कृष्ण बताते हैं आप मुझे सुन नहीं रहे अपने मिथ्या अहंकार You're की वजह riding से. on the chariot of the mind, और अपने मन के रथ में दौड़ रहे हो. mental concoction platform, मन गढ़ंत स्तर पे हो. and we're just concocting and speculating, and we're lost on that material cheating platform. तो हम इस तरह से बनाने का प्रयास करें, मनोधर्म करने का प्रयास करें और ठगने के स्तर में भटके हुए हैं. Does that answer your question? क्या आपके प्रश्न का उत्तर मिला? Yeah. Yeah. You have a question? Who has a question? Yes. My brother. Krishna brought you back. कृष्ण आपको वापस लेकर आ गए. Ooh. Wow. You must have got scared going out there. आपको हवा से बाहर जाके थोड़ा डर लग रहा था. Now you feel relief? अब आपको अच्छा लग रहा है? Yeah. Now you're more peaceful? अब थोड़े आप शांत हैं? It's scary going out there. You know? बाहर जाके बहुत डर लग रहा होगा. My brother? Hari Krishna. This sounds a bit funny. First of all, I'd like to thank you for coming to Mayapur and sharing. You sound like the mayor or something. Are you the mayor? I ठीक don't. है. तो बता रहे थे. Anyway, that's just. When you come, you stress one point. Just one? One. Yeah. What do you One hear? point that stands out, Which one? which is that we should cry for Krishna. Yeah. Now, that's very difficult. Yeah. Very difficult. I've been thinking about it for weeks and weeks. Did you try crying? No, No? no, because I'm conditioned not to.
I'm in a male body. Yeah, okay, when you're a kid, it's spontaneous. You can cry. But when you get past that 15, you're tough. You know, you're a male. You don't cry. So that's a difficult. You sound like my father. You know, that's a realization I've been thinking about. Thinking, well, how can I get over that? You know, how do I get past that? You know, because it is a condition. You know, it's conditioned in me. You know, and probably a lot of other people. You know. And a few weeks ago, 2 weeks ago, a friend of mine died. Very close. Lives here, devotee. And I couldn't cry. I couldn't cry for him. His wife couldn't stop crying for She's a lady. Yeah, well, you know, why have they got They have an advantage in the department. Why do they have an advantage? माता जी के पास एक That's one part of the question. खासियत होती है कि वो रो सकती हैं बहुत आसानी से। Sorry. Now we just got to get them to cry properly, right? अब हमको सही तरीके से रोना है माता जी। If you can transform that into crying for Krishna, that's a perfect crying. अगर उनका रोना कृष्णा के लिए परिवर्तित किया जाएगा तो बहुत ही अच्छा उनका रोना But if हो we're just जाएगा। sentimentally crying for Maya, then it's useless. तो अगर भावुक तरीके से बस माया के लिए रो रहे हैं तो बेकार रोना है उनका। So, are you crying because you cannot cry? क्या आप रो रहे हैं क्योंकि आप रो भी नहीं पा रहे I इसके just लिए? can't cry. I can't. But do you feel bad about But that? if I try, it feels like you're forcing yourself to cry. Lock yourself in the room. Yeah, man. I've done it. You know, don't let anybody see you. Tried and tried, you know, and We'll give you if some. any- if We'll give anybody's you some chilies. We'll give you some chilies. हम आपको थोड़ी मिर्ची देंगे आपको बताओ लगा के रो सकते हैं। but that's not where I want to be with it, you know. You don't like the chili idea? तो आपको ये विचार अच्छा नहीं लगा मिर्ची वाला? Not really. नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। Does it work for you? Well, at least you can take a picture and say that's when I was crying. कम से कम तब आप फोटो खींच के दिखा सकते हैं कि मैं रो रहा था। Then you can be like, remind yourself, I cried. तो अपने आप को याद दिला पाएंगे मैं रोया था उस समय। I cried and it's still not working. और मैं रोया फिर भी काम नहीं आ रहा अभी तक। So, You can I change. just wanted some. Well, I got some tips. Didn't I? Use chili. I just wanted you to talk about it really, a little, you know, just if you. Many times people ask Srila Bhagavatam.Swami, you say you have to cry, but I cannot really cry. प्रभु असल में पूछ रहे थे कि कैसे आप जब भी यहाँ मायापुर आते हैं तो आप हमेशा रोने के बात पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो गुरुदेव और प्रभु पूछ रहे हैं कि रोना कई बार मुझे बहुत कठिन लगता है। तो गुरुदेव ने बताया कि मेरे गुरुदेव भी इस बात पे जोर दिया करते थे कि आपको कृष्ण के लिए रोना होगा। And Prabhupada said, because we're materially conditioned and attached. और प्रभुपाद ने कहा है क्योंकि हम भौतिक स्तर पे बहुत बद्ध अवस्था में हैं। She can cry. लेकिन कितने अच्छे से रो रही हैं। It's natural. उनके लिए कितना स्वाभाविक है रोना। Because she needs some help. She needs the mother's help, right? क्योंकि उनको माँ की मदद की जरूरत है। So Prabhupada said we should be crying like that for Krishna. प्रभुपाद कहते हैं हमें ऐसे रोना चाहिए कृष्ण के लिए। She like magnified it just to help me with the point. You know? उन्होंने मेरी बात को साबित करने के लिए सही। So she did seva. उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की हमारे लिए। Because then it made me realize, oh, like Prabhupada said, you have to cry like your mother, you know, baby for the mother. क्योंकि मुझे अब याद आया कि प्रभुपाद कहते हैं आपको बच्चे जैसे माँ के लिए रोते हैं वैसे रोना चाहिए। But our problem is we're not realize we're in trouble. लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम महसूस नहीं कर पा रहे हम समस्या में। Because Maya is making us feel like we're alright. क्योंकि माया हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम ठीक हैं। And anyway, we can manage it. और हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। So we're just busy trying to manage it instead of realizing this is unmanageable. हम बहुत व्यस्त हैं चीजों को ठीक करने के लिए लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता। That's why Queen Kunti said that if you have, you know, good family and good birth and beauty and education and any type of materialistic qualification, it's very difficult to cry for mercy. इसलिए कुंती महारानी कहती हैं अगर आपका ऊंचा जन्म है आप बहुत सुंदर हैं किसी तरह की भौतिक
योग्यताएं हैं आपके पास तो आपके लिए बहुत कठिन होगा रो पाना भगवान के लिए। Because we think like I'm well situated and I can manage all of this in all of this materialistic way, so why you have to cry to Krishna? क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ और मैं चीजों को व्यवस्थित कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ, तो मुझे क्यों कृष्णा के लिए रोने की जरूरत You're है? in trouble, you just manage it, you do something, right? आपको कोई समस्या आएगी तो आप व्यवस्थित कर लेंगे और चीजों को ठीक कर So लेंगे। we're just trying to do something, that means we think we can do something. We can manage it. तो अगर हम चीजों को इस तरह से करने का प्रयास करें, इसका मतलब हम सोचते हैं कि हम चीजों को ठीक कर सकते हैं और व्यवस्थित कर सकते Now हैं। people ask Srila Gurudev, you say you have to cry in order to get Krishna, but I'm not able to cry. और मेरे गुरुदेव से कई बार लोग प्रश्न पूछते थे कि आप कह रहे हैं हमें कृष्णा के लिए रोने की जरूरत है, लेकिन मैं कृष्णा के लिए रो नहीं पा रहा। I can cry from my cat, I can cry from my mother, I can cry for a material relation, right? But I cannot cry for Krishna. मैं बिल्ली के लिए रो सकता हूँ, भौतिक संबंधों के लिए, माँ के लिए रो सकता हूँ, लेकिन कृष्णा के लिए रो नहीं सकता। And many times Gurudev answered it that you should cry because you can't even cry. और कई बार गुरुदेव ने उत्तर दिया कि आपको रोना चाहिए क्योंकि आप रो भी नहीं पा रहे हैं। That you're so conditioned that what's required for you to do to get Krishna, you can't even do that. कि आप इतनी बद्ध अवस्था में हैं कि जो जरूरत है कृष्णा को पाने के लिए आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। So the first step is to realize, yes, I'm not crying for Krishna, I'm just managing my life, right? तो सबसे पहली चीज अब यही देखने की जरूरत है, हम कृष्णा के लिए नहीं रो रहे हैं, अपने जीवन को वैसे ही ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। And then, the idea, okay, I accept you're supposed to cry for Krishna, but I can't get myself to cry to Krishna. तो हमें ये अगर विचार अच्छा लग रहा है कि हाँ हमें कृष्णा के लिए रोना चाहिए, लेकिन हम फिर भी कृष्णा के लिए रो नहीं पा रहे हैं। So that's a lamentable position. तो ये बहुत शोक करने की अवस्था है। Because unless you cry for Krishna and show Krishna you want him that badly, nobody can get Krishna. अगर आप कृष्णा के लिए रोएंगे नहीं और उनको दिखाएंगे नहीं कितनी बुरी तरह से आप कृष्णा को पाना चाहते हैं, तो कोई भी कृष्णा को पा नहीं सकता। That's why Gurudev said I opened a crying school in Bhubaneswar. इसलिए गुरुदेव कहा करते थे मैंने रोने का विद्यालय खोला है भुवनेश्वर। So coming from the struggle for existence to the crying school in Bhubaneswar. तो हम वहाँ बहुत संघर्ष किया भुवनेश्वर के रोने के विद्यालय में। And then I realized without purification, without understanding the reality of our condition, then how we can cry to Krishna? तो मैं ये समझ पाया बिना शुद्धिकरण के और अपनी वास्तविक स्थिति की सच्चाई को जाने बिना कैसे कृष्ण के लिए रो सकते हैं। Without purification, how you'll cry? बिना शुद्धिकरण के आप कैसे रो पाएंगे? Because we're not even realizing how much trouble we're in, how desperate we are for mercy. क्योंकि हम महसूस ही नहीं कर पा रहे हम कितनी बड़ी मुश्किलों में हैं और हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कृपा की। So we're not able to cry. तो हम रो नहीं पा रहे हैं। So many times Gurudev said you should cry because you cannot cry. तो कई बार गुरुदेव ने ये कहा कि आपको रोना चाहिए क्योंकि आप रो भी You're नहीं पा not रहे हैं। breaking down enough and crying to convince Krishna. कि आप इतना टूट कर कृष्ण के लिए रो नहीं रहे हैं कि आप उनको आश्वस्त कर पाएं। It's intellectual, it's mechanical, तो आप बुद्धि के स्तर पे मशीन की तरह या बनावटी तरीके से institutional, या संस्था के रूप में, but it's not from the soul. लेकिन आत्मा के स्तर पे नहीं हो पा रहा। So we should lament that. तो हमें It इसके was लिए so शोक करना conditioned, चाहिए so hardened like a stone. कि हम इतनी बद अवस्था में हमारा हृदय पत्थर के जैसा बन चुका है। And Gurudev would say only Mahaprabhu's devotees can melt such a stone. और गुरुदेव बताते थे महाप्रभु उनके भक्त ही केवल इस पत्थर को पिघला सकते हैं। So that purification and melting this stone, that mercy from Mahaprabhu and their devotees, that's required. तो वो शुद्धिकरण और वो पत्थर का पिघलना महाप्रभु और उनके भक्तों की कृपा से संभव है। Because we don't even realize, we're not in reality. क्योंकि हम अपनी सच्चाई नहीं जानते। Krishna said this is a miserable place with threefold miseries, and we're like, technically we can repeat that, but we're not fully realizing that. तो कृष्ण बताते हैं ये दुखों का जगह है और कष्टों का जगह है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं या उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हम उस बातों को दोहरा रहे हैं लेकिन हम उसका अनुभव नहीं करते। Yeah, there's another. Okay, you have a minute. I can read you something. Prabhupada speaking exactly on this point. एक मिनट है, प्रभुपाद इसी बात पे कुछ चर्चा कर रहे हैं। Krishna is telling Arjuna that by engaging yourself
in sincere devotional service to the Lord. कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, अगर आप एकनिष्ठ भगवान की भक्ति में सेवा में लगते हैं, Great devotees and great sages, they purify and free themselves from sinful reactions. तो महान ऋषि और महान भक्त अपने आप को मुक्त करते हैं पाप कर्म के फलों से. So we're suffering because of sinful reactions. तो हम दुख पा रहे हैं हमारे पाप कर्म के फलों की But वजह what से. if you cannot perceive your suffering? लेकिन क्या होगा अगर आप उन दुखों का अनुभव ही नहीं करते? Then what is your motivation to purify or get freed from sinful reactions? तो क्या चीज आपको प्रेरणा देगी कि आप अपने पाप कर्मों से मुक्ति पाने का प्रयास करेंगे? So those who know, they engage themselves in devotional service in order to get free. Krishna said, you surrender to me, you engage in my devotional service, I'll free you from all the sinful reactions. तो जो स्वयं को लगाते हैं इस भक्ति में सेवा में, क्योंकि कृष्ण ने बताया है अगर आप मेरी भक्ति में सेवा में लगेंगे, मुझे शरणागत करेंगे, तो मैं आपके सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा. And Krishna says that in this way, you also become free from this cycle of birth and death. और कृष्ण बताते हैं इस तरीके से आप जन्म मृत्यु के चक्र से भी बाहर निकल जाएंगे. And you will attain the state which is beyond all miseries. और आप ऐसे स्तर पर पहुंच जाएंगे जो सारे कष्टों से परे हैं. Well, I don't feel miserable. और मुझे तो कष्ट अनुभव Or नहीं it's हो not रहा. perfect. ये पूरा पूर्ण But नहीं I'm है, alright. लेकिन हम I'm ठीक हैं relatively fine. और तो ठीक ठाक अवस्था Kind में of happy. और मैं खुश हूँ. That means we're not perceiving the reality of our condition. इसका मतलब स्वयं की स्थिति की सच्चाई को हम महसूस नहीं कर So पाते. without purity and spiritualized intelligence, we cannot realize it and we cannot feel it. तो बिना शुद्धिकरण के आध्यात्मिक बुद्धि पाए बिना हम इसको अनुभव नहीं कर पाते और उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते. So that's why Gurudev would say, give them more heavy lashes. इसलिए गुरुदेव कहा करते थे और भारी मार खानी Because they're पड़ेगी, not feeling it. क्योंकि अभी तक महसूस नहीं कर पा रहे. So if you get more and more heavy lashes and now all of a sudden it becomes disturbing. तो आप इतनी भारी मार खाते हैं और अंत में आप उससे परेशान जब होने लगते हैं And intolerable, और सहन नहीं कर पाते, then we'll think to do something to get out of that condition. और तब हम विचार करते हैं कि कैसे हम उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं. So Prabhupada is saying here in this purport, प्रभुपाद इस तात्पर्य बता रहे हैं, liberated living entities, मुक्त जीवात्मा they belong in that place where there's no material miseries. वो ऐसे जगह से हैं जहाँ पे किसी तरह की भौतिक कष्ट नहीं. We're swimming in the world of material miseries and we think we're fine. और हम भौतिक कष्टों के सागर में तैर रहे हैं और हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे So हैं. where is there, crying out to Krishna to get out of that condition? तो कैसे हम कृष्णा के लिए रोएंगे ताकि हम उस स्थिति से बाहर निकल सकें. So to open a crying school and then you don't have any reason to cry, तो आपने रोने का अगर विद्यालय खोला है, आप लोगों के पास अगर रोने का कारण you नहीं है, can't cry आप रो नहीं सकते because we're so callous. क्योंकि हम इतने जड़ बुद्धि We हो गए हैं. cannot feel, the suffering even of our own existence due to sinful reactions. हम स्वयं के कष्टों का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं खुद के पाप कर्मों के कारण ही जो हमें मिल रहा है. Now Prabhupada says in this purport, और प्रभुपाद इस तात्पर्य it's बताते हैं, funny, I just read this before I came out. और ये बहुत अच्छी बात ऐसी बात है कि मैं इसको यहाँ आने से पहले ही मैंने इसको And I पढ़ा. was thinking I'd really like to talk about these points, but I'd already prepared the class on the other verse. और मैं सोच रहा था कि मैं इस बात पे चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कोई और श्लोक तैयारी करके रखी थी. But Krishna Prabhupada, they gave me this point. लेकिन कृष्णा प्रभुपाद ने मुझे ये बात यहाँ दिखाई. And Prabhupada says that owing to ignorance, one does not know and realize that this material world is a miserable place. प्रभुपाद बता रहे हैं अपने अज्ञान के कारण कोई इस बात का अनुभव नहीं कर पाता ये जगह कष्टों से भरा है, Where there are dangers at every single step. जहाँ हर एक कदम पे खतरा है. So due to this callousness, this ignorance, this covering, contamination, we are not realizing and feeling the miseries of this material world. तो इस अज्ञान के कारण और जड़ बुद्धि के कारण हम इस भौतिक जगत के कष्टों और दुखों का अनुभव नहीं कर That पाते. if we cannot perceive that, then we don't really understand what is the reaction of sin, what are the sinful reactions. The miseries is the sinful reaction. What if you can't feel that? That means you don't understand even what your own sinful reactions are. तो अगर हमें कष्टों का अनुभव नहीं हो रहा जो पाप कर्मों के कारण मिलता है, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि हमें कोई पाप कर्म भी मिल रहा है.
And Prabhupada was saying this is due to tamagun. और प्रभु बताते हैं ये तमोगुण के कारण। Out of ignorance only, Prabhupada says, less intelligent persons, they just try to adjust the material situations. और अज्ञान के कारण ये प्रभु बताते हैं कम बुद्धिमान लोग अपनी भौतिक व्यवस्था को ही ठीक करने का प्रयास करते हैं। So if you just make some material adjustments to your situation, then you'll be happy. वो सोचते हैं अपनी भौतिक अवस्था को ठीक करके वो सुखी हो जाएंगे। They do not know that no kind of material body, a material adjustment anywhere within the universe can give life without miseries. और वो इस बात को नहीं समझ पाते किसी भी तरह का भौतिक शरीर इस भौतिक जगत में किसी भी तरह के भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला पाएगा। That's why I was saying other day when I'm thinking about this, like, how do we get ourselves and others to accept this process? If we're not attracted to Krishna and we can't feel the suffering and the miseries from the sinful reactions, what is the motivation to cry to Krishna and beg for the strength and intelligence to follow this process? इसीलिए मैं अगर उस दिन बात कर रहा था अगर हम अपने दुखों कष्टों का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे हम इस जानकारी को अनुभव करेंगे कि हमें जीवन और हम कृष्णा के प्रति आकर्षित नहीं है, हम स्वयं के दुखों कष्टों का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे हमें आध्यात्मिक बुद्धि मिलेगी, शक्ति मिलेगी कि हम इस प्रक्रिया को पालन करने के लिए तैयार हैं? हमारी क्या चीजें? So you're realizing what's required. You're not motivated enough to do it. तो आप महसूस कर पा रहे हैं कि जो प्रेरणा आपको जो आप करने के लिए चाहिए उसके लिए आप करने के लिए उतने प्रेरित नहीं हैं। Due to ignorance, we do not know or realize that this material world, material existence, is a miserable place with danger at every single step. और अपने अज्ञान के कारण हम ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि भौतिक जगत कष्टों से भरा है और हर एक कदम पे यहाँ खतरा है। These miseries of life, namely birth, death, disease, and old age, they are present everywhere within the material world. और ये जीवन के कष्ट, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी इस भौतिक जगत के सभी जगह पे मौजूद हैं। But due to ignorance, we cannot perceive it. लेकिन अपने अज्ञान की वजह से हम इसको महसूस नहीं कर पाते। That's why if someone has a mental disease and they're being tortured, in some way it's a blessing. और इसीलिए किसी को अगर मानसिक बीमारी है और अगर उनको कोई प्रताड़ना मिलती है तो एक तरह से ये एक तरह का आशीर्वाद है। Because they're materially dysfunctional. क्योंकि भौतिक रूप से वो किसी काम के नहीं हैं। And if you're being tortured enough, the only relief is to surrender to Krishna. और अगर उनको पर्याप्त प्रताड़ना मिलती है तो एकमात्र राहत उनको मिलेगी कृष्ण को शरणागति Krishna, cry to Krishna, beg Krishna, please, I cannot take it one more second, one more moment. कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करके कृष्ण के सामने रोके कि मैं और एक क्षण और सहन नहीं कर सकता। Right? Or somebody who's suffering bodily, their body is so much pain, right? To just Krishna, please, I cannot tolerate. This is so difficult, right? या किसी के शरीर में अगर बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, तो कृष्ण से प्रार्थना करेगा कि मैं और इस शरीर के कष्ट को झेल नहीं सकता। Then you're understanding what is Hari-katha. तब वो समझ पाते हैं कि आध्यात्मिक क्या होता understanding the है। misery related to your mind and your body. कि आप समझ पा रहे हैं कि खुद के शरीर और मन से क्या-क्या कष्ट हमें झेलने So पड़ते हैं। it's intolerable. और जब वो असहनीय होता है So what are you going to do anywhere in the world with the completely disturbed mind and body, with the diseased mind and body? You can't go anywhere. You can't do anything. तो इस पूरे जगत में आप कहीं भी नहीं जा सकते, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते अपने कष्टपूर्ण और परेशान शरीर और मन का निपटारा करने के लिए। You can't even go on a picnic. आप पिकनिक मनाने भी नहीं जा पाएंगे। You know, you go on a picnic and have some herbal tea, you'll be miserable. आप पिकनिक मनाने जाएंगे किसी तरह का हर्बल चाय पी रहे हो। People won't even invite you to a picnic. आपको लोग पिकनिक के लिए भी नहीं बुलाएंगे। It's just like a black cloud hanging over them, and wherever they go, it's all negative, it's all diseased, and it's all disturbed, you know. कि काला बादल है, जहाँ भी जाएगा सबको परेशान करेगा, बीमारी वाला स्थिति पैदा करेगा। These people are like, you know, some, you know, bad, inauspicious association, you know. कि ये लोग जो है अशुभ संग है। But they're suffering. लेकिन वो दुख में है। I remember many times like sitting in like some family party or Christmas or something, and everyone's like looks like they're all enjoying, and I was suffering like anything. मुझे याद है हमारा परिवार के लोग जब भी कई बार जमा होते थे क्रिसमस के गैदरिंग में या किसी ऐसे उत्सव में, तो सभी लोग आनंद में होते थे, मैं पूरी तरह कष्ट में होता था। And I could feel it. और मैं उसको महसूस नहीं कर रहा था। धन्यवाद भगवान का। Then I'm looking around, everyone looks happy, and everyone's enjoying, and they're all socially getting along with each other, right? And I'm like just like sitting in a frying pan. और मैं देखता था सभी लोग खुश हैं, एक दूसरे के साथ बहुत मजे में हैं
और समाज में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, लेकिन मैं जो है ऐसा लग रहा था मैं जैसे तवे पे जल रहा था। Why is everyone looking happy? You know? सभी क्यों इतने खुश दिख रहे हैं? Like, what are they doing? What am I doing wrong? You know? करते क्या है और मैं क्या गलती कर रहा हूँ? Why can't I be happy? क्यों मैं सुखी नहीं हो पा रहा? I want to be happy. मैं भी सुखी होना चाहता हूँ। So then when you try everything material and it doesn't work, it just makes it worse. तो आपने सब सारी भौतिक चीजें प्रयास कर लिए और जब देखा कि ये सब काम नहीं आ रहा, Then you get no relief. और आपको कोई राहत नहीं मिल रही, Right? You can't go anywhere. You can't do anything. आप कहीं नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। If you're just constantly tortured, अगर आप नित्य प्रताड़ित हो रहे हैं, so the only thing Krishna says, surrender to me and I'll free you from your suffering due to your sinful reaction. और कृष्ण बताते हैं केवल एकमात्र कार्य आप मुझे शरणागत करो और मैं सारे दुखों से आपको मुक्त कर दूंगा। That's why Gurudev said, you know, that you're not perceiving the miserable suffering condition even of your own sinful reactions. इसलिए गुरुदेव कहा करते थे आप स्वयं महसूस नहीं कर पा रहे हैं खुद के ही पाप कर्मों और दुखों का फल। So what's going to motivate you to change that, to get out of that condition? तो क्या आपको प्रेरित करेगा उस परिस्थिति को बदलने के लिए, उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए? I remember one devotee in Thailand, you know, he was saying, you know, you people are like all troubled people, you know. मुझे याद है एक भक्त टैलिन में कहते थे आप लोग बहुत मुश्किलों में। You're all talking about your suffering and your bad life and your upbringing. He said, I had very good karma. वो कहते थे आप लोग इतने दुखों की बात कर रहे हैं, कितने बुरे परिवेश में पले और बढ़े, बहुत सारे दुख मिले जीवन में, मेरे पास बहुत अच्छे कर्म थे। You know, if you have like really good karma, that means you can enjoy a little bit better than other people, right? अगर आपका पुण्य कर्म बहुत अच्छा है तो आप बाकी लोगों से ज़्यादा आनंद भोगेंगे जीवन में। Of course, how long the good karma is going to last? और अवश्य आपका पुण्य कर्म कितने दिन तक चलेगा? And even still, there's you know, birth, death, disease, and old age. It's not forever your good karma. और जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा, बीमारी ये आएगी और आपके पुण्य कर्म को नष्ट कर देगी। So he's also admitting same thing. I have no reason to cry to Krishna. तो वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं कृष्ण के Because I'm not perceiving the suffering that you people you're experiencing. और कभी-कभी जो इस तरह के दुखों का अनुभव कर रहे होते हैं महसूस नहीं कर पाते हैं। So I always take that, you know, material suffering condition as a blessing in disguise. तो मैंने सारे भौतिक दुखों को असल में एक आशीर्वाद माना जो अलग भेष में मुझे मिला। Because that will force us to surrender to Krishna because there's no any other relief. क्योंकि वो आपको मजबूर करेगा कृष्ण को शरणागत करने के लिए, क्योंकि उसके अलावा और कोई राहत नहीं मिलने वाली आपको। Right? Then you pick up your beads and you'll chant. Nobody can say anything to you. All you do is just chant Hare Krishna and pray to Krishna. Then you'll be like, Krishna, if you don't shower mercy on me, how will I even survive? और तब अपनी माला उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे और कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप और कृष्ण से आप प्रार्थना कर रहे होंगे, आप मुझे कृपा नहीं करेंगे, मेरे पास बचने का और कोई तरीका नहीं। So how do you get people in Tamagun to come to Bhubaneswar and start crying for Krishna? तो कैसे आप लोगों जो तमोगुण में हैं भुवनेश्वर लेके आकर कृष्णा के लिए रोने को मजबूर करेंगे? और उन्होंने रोने के लिए विद्यालय खोला वहाँ। And then even Gurudev said, instead of crying for Krishna, you're just crying for Maya. और फिर गुरुदेव ने कहा कि आप कृष्णा के लिए रोने के बजाय माया के लिए रो रहे हैं। And then people say, well, Gurudev, I'm not crying. I cannot cry for Krishna. और कुछ भक्त कहते थे गुरुदेव मैं कृष्णा के लिए रो नहीं पा रहा। And that's because of our disease condition and not being able to understand the reality of our condition. और ये हमारी बीमारी स्थिति की वजह से और हम स्वयं की स्थिति की सच्चाई को We're not महसूस नहीं कर पा seeking रहे हैं। relief from that. तो हम उससे राहत पाने का प्रयास नहीं कर We're रहे not trying to get out of that. और उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। Are we trying to purify, you know, get free from sinful reactions, or are we calculating how to get more sinful reactions? क्या हम शुद्ध करने का, मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं पाप कर्म के फलों से, या हम और ज्यादा पाप कर्म जमा करने का प्रयास कर That's रहे an interesting question. हैं? ये बहुत If रोचक the whole सवाल है। plan is coming from Maya, from material sense gratification, that means that you want to increase your sinful reaction. अगर पूरी योजना माया से आ रही है, कैसे आप भौतिक इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं? इसका मतलब आप अपने दुखों को और बढ़ाने के लिए योजना बना रहे And हैं। I think Srila Prabhupada said the problem with you people is you don't fear Maya. और प्रभुपाद कहते थे तुम लोगों की समस्या ये है कि आप लोगों को माया से भय नहीं है। So you're not afraid of these heavy reactions. You're not careful from these heavy reactions because you cannot perceive it. You cannot feel it. क्योंकि आपको भय नहीं है माया के भारी मार का, क्योंकि आप उस मार को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं।
So many times Gurudev just asks like that, answer like that. You should cry because you cannot even cry. और कई बार गुरुदेव ने इस तरह से उत्तर दिया, आपको रोना चाहिए क्योंकि आप रो भी नहीं पा रहे हैं। So how you get Krishna? तो कैसे आप कृष्ण को पाएंगे? You're crying for Maya instead. आप उसके बजाय माया के लिए रो रहे हैं। And then one person I heard, they said, well, Gurudev, what happens if you can't cry for Krishna? और एक बार जब किसी भक्त ने पूछा कि क्या होगा गुरुदेव अगर हम कृष्ण के लिए रो नहीं पा रहे हैं? And then I thought Gurudev would say again, you should cry because you cannot cry. और मुझे ऐसा लगा गुरुदेव दोबारा कहेंगे कि आपको रोना चाहिए क्योंकि आप रो भी नहीं पा रहे हैं। And Gurudev just answered, it means you're not serious. और फिर गुरुदेव ने उत्तर दिया, इसका मतलब तुम गंभीर नहीं हो। You're not serious about Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत के प्रति गंभीर नहीं हो। That's heavy. ये बहुत भारी बात थी। And then if you don't feel bad that you can't cry for Krishna, then that means we're not serious. और अगर आप बुरा महसूस नहीं कर रहे हैं कि आप कृष्ण के लिए रो नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आप गंभीर नहीं हैं। So that means only heavy suffering condition, इसका मतलब भारी heavy lashes of Maya is या माया going की to make us serious sooner or later. मार हमें गंभीर बनाएगी, जल्दी या देर से। That's also mercy. और वो भी कृपा है। So I always make this little bit of a joke, like in the end, everyone's going to be horizontal. और मैं हमेशा मजाक करता हूँ कि अंत में सभी लोग लेटने वाले हैं। At the end of the day, everyone's going to be horizontal. दिन के अंत में सभी लोग को जमीन पर So लेटना we're either going to do it voluntarily, या तो हम अपनी इच्छा से करेंगे or it's going to be forced on us. या फिर हमें जबरदस्ती करना होगा। Especially when they're lighting the fire, और विशेष करके जब हमारे चिता जला रहे you'll हैं be horizontal. तब आपको पूरा लिटाया जाएगा। So sooner the better. तो जितना जल्दी है उतना बेहतर। So we have to try to find a way how to humble ourselves. तो हमें तरीका ढूंढना होगा कैसे हम स्वयं को विनम्र बना पाएंगे। So if we're trying to humble ourselves by comparing what is being asked and expected of us and us falling so short of that, तो अगर हम स्वयं को विनम्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं उन चीजों से तुलना करके कि हमसे क्या अपेक्षा की गई है और हम कहाँ तक उसके प्रति पहुँच पा रहे हैं, then we should be humbled by that realization. तो हमें इस साक्षात्कार से विनम्र हो जाना चाहिए। So if we're not trying to humble ourselves by understanding in that way, we're going to get humbled out. अगर हम स्वयं को विनम्र बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं इस तरह से समझ विकसित करके, तो हमें विनम्र बना दिया जाएगा। So we can either understand, I need to be humbled out, so we can either participate with the process where Krishna says, okay, this person trying to humble themselves out. तो या तो हम स्वयं विनम्र बनने का प्रयास करेंगे इस बात को समझ के कि विनम्र होकर हम इस प्रक्रिया को पालन कर सकते हैं। If we're being negligent and careless and we don't care, then we're going to get humbled out. और अगर हम अनदेखा करेंगे और या हम सोचेंगे हमें We're कोई going फर्क to नहीं get पड़ता, smashed. तो हमें विनम्र बना दिया जाएगा, हमें भारी मार पड़ेगी, We're going to get a good kick. हमें अच्छी लात मिलेगी। Especially if we really want to be a devotee and we're not helping ourselves, cooperating with the process, you can expect a good, serious kick. अगर आप भक्त बनना चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको एक बहुत अच्छी लात मिलेगी। And then we're like, oh my God, that sounds scary. और सुनने में बड़ा डरावना लग रहा है। Gurudev used to say, yes, pray to Lord Nityananda to give you a good kick. गुरुदेव कहते थे नित्यानंद से प्रार्थना कीजिए आपको एक अच्छी लात देंगे, Just completely humble, smash your false ego. जो पूरी तरह से आपके मिथ्या अहंकार को नाश कर देगा, विनम्र बना देगा आपको। And everyone's like, what does that mean? सब सोचते थे इसका That मतलब क्या sounds है, horrifying. सुनने में बहुत डरावना लग रहा है। But Gurudev would say, if you're not crying for that, you mean you're not serious, you're not really a disciple. गुरुदेव कहते थे अगर तुम इसके लिए रो नहीं रहे हो तो यानी कि तुम गंभीर नहीं हो, तुम शिष्य ही नहीं हो। Wow. I'm a disciple. मैं शिष्य हूँ, And I'm das, I'm dasi. मैं दास दासी हूँ। We're doing everything possible to avoid getting humbled out. हम हर वो चीज करने का प्रयास कर रहे हैं, बचने का तरीका कि हम विनम्र ना बने कैसे। Our shows of Dasosmi, हम जो दिखावा कर रहे हैं हम दासोस्मी that's हैं, not going to really work. वो असल में काम नहीं आएगा। Dasosmi. दासोस्मी, We cannot cheat Krishna. हम कृष्णा को ठग नहीं पाएंगे। So he's the witness and the judge. I'm not your witness and judge. Krishna is everyone's witness and judge. वो गवाह या न्याय करेंगे, कृष्णा ये करेंगे, मैं किसी का गवाह या न्याय करता नहीं। He understands our mentality. कृष्णा हमारी मानसिकता He जानते हैं, understands what is our obstacles, impediments, why we're not breaking down, और उनको पता है हमारी क्या बाधाएं, क्या रुकावटें और क्यों हम why टूट we're नहीं not रहे, humbling ourselves. क्यों हम स्वयं को विनम्र नहीं बना रहे Then हैं, we're going to get humbled out. और हमें विनम्र बना दिया जाएगा।
The idea is not to kill you. और आपको मारने की योजना नहीं है, It's just to get you to humble out. बस आपको विनम्र बनाने की योजना है। Then when you're completely humbled out, you'll cry for Krishna. और जब आप पूरी तरह से विनम्र हो जाएंगे तब आप कृष्ण के लिए रोएंगे, And that's special mercy. और वो विशेष कृपा है। Right? As long as we have our health and we have some money and we have our family and friends and we have some opportunities, right? We're not crying. जब तक हमारे पास स्वास्थ्य है, हमारे पास हमारे मित्र हैं, हमारा पैसा है, तब तक हम नहीं सोचेंगे कि हमें मदद की जरूरत है। That's why in that prayer Queen Kunti is talking about all of this material positioning is not allowing you to cry. इसलिए महारानी कुंती प्रार्थना कर रही है कि सारी भौतिक सुविधाएं हमें रोने नहीं दे रही हैं। Because it makes too much pride and material dependency. क्योंकि बहुत सारा दंभ और भौतिक निर्भरता हमारे अंदर ज्यादा होती है। And then Prabhupada in the Purport, Prabhupada said that if you have all of these materialistic things, then this feeling of crying for Krishna will not manifest itself. और प्रभु बताते हैं अगर आपके पास ये सारी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो कृष्ण के लिए रोने की इच्छा आपके सामने नहीं आएगी। That means special mercy. He has to take all of these things from us. यानी कि कृष्ण के विशेष कृपा ये सारी भौतिक चीजें कृष्ण आपसे छीन लेंगे। Family, your परिवार, friends, मित्र, your money, your health, पैसा, आपका स्वास्थ्य, all the things we're overly depending on and not depending on Krishna. जिन भी चीजों पे हम निर्भर हो रहे हैं और कृष्ण के निर्भर होने के छोड़ बजाय, Then one by one these things will be taken away. तो एक के बाद ये चीजें हमसे छीन ली जाएंगी। And it's shocking. You think, oh, they say they love me, they like me, they're my friend, they're my family, right? They become your enemy. और आपको आश्चर्य होगा जो लोग कहते हैं आपको पसंद करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपके परिवार हैं, आपके मित्र हैं, वो आपके शत्रु बन जाएंगे। And as soon as you don't give them material sense gratification, nobody cares about you. और जैसे ही आप कोई भौतिक इंद्रिय सुख आप उनको नहीं देंगे, कोई भी आपकी परवाह नहीं करने वाला। They'll become your enemy. वो लोग आपके शत्रु बन जाएंगे। So-called family, friends. नाम मात्र के मित्र, You can't परिवार, depend on any of them. किसी के ऊपर भी आप निर्भर नहीं हो पाएंगे। Then we'll lose hope and faith in humanity. तब हमारा विश्वास और आशा मनुष्य इंसानियत से उठ जाएगा। And people, that sounds awful negative. सुनने में कितना नकारात्मक लग रहा है। Well, Prabhupada said if you're not Krishna conscious, you have no good qualities. What else do you expect from people who have no good qualities? प्रभु बता रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत में नहीं, उनके अंदर कोई अच्छे गुण नहीं है, तो आप जिन लोगों के अंदर अच्छे गुण नहीं है उनसे क्या उम्मीद लगा रहे हैं? Of course they're going to disappoint us. और अवश्य वो Of हमें course निराश they're going to करेंगे, break our hearts. और अवश्य वो हमारे हृदय Of तोड़ेंगे, course they're going to become your enemy. और अवश्य वो हमारे शत्रु As बनेंगे। soon as you don't, feed their material sense gratification. जैसे ही आप भौतिक इंद्रिय सुख को नहीं मदद करें। This is a prison house. ये एक कारागार है। We don't think it's a prison house. हम लेकिन ऐसा नहीं सोचते ये कारागार है। If you go in an actual prison house where these are the people you're going to trust, they say you sleep with one eye open. अगर आप कारागार के अंदर जाएंगे और आपको इन कारागार के लोगों के अंदर विश्वास करना होगा, आप एक आंख खुली करके आपको सोना पड़ेगा हाथ में। Sanatan feels comfortable down there, so he can close both eyes, no problem. सनातन को बहुत आराम मिलता है, इसलिए वो दोनों आंखें बंद करके सो जाते हैं। But in prison house, you cannot trust these people. लेकिन कारागार में आप लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। So like you go in a prison house and say, why isn't everyone acting like perfect gentlemen and perfect ladies? अगर आप जेल में जाएंगे, What do you expect? तो अगर आप जेल में जाएंगे, आप ऐसे नहीं मांग कर सकते कि लोग बहुत अच्छे सभ्य व्यक्ति, भद्र व्यक्ति, महिला की तरह व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कारागार में आपने और क्या उम्मीद लगाई है? They have no good qualities. उनके पास कोई अच्छे गुण नहीं They're होते like हैं। animals. वो जानवर के जैसे होते हैं। This is just another continuation of Prabhupada's class, right? ये प्रभुपाद के They're उसी not devoted. प्रवचन का आगे They're का not trying to be Krishna conscious. They're animals. तो अगर वो They're कृष्ण भावनामृत demons. नहीं है, भक्त नहीं है, They तो have जानवर no है, good qualities. असुर है, We उनके should अंदर give कोई अच्छे them गुण no नहीं है। respect. हमें उनको कोई सम्मान Zero. देने की जरूरत नहीं है, शून्य सम्मान देने की जरूरत है। People are like, oh, that sounds very harsh. और हम कहते हैं सुनने में कितना खराब लग रहा है, It sounds very negative, very कितना pessimistic. नकारात्मक, कितना छोटा You're सोच। in a prison house. आप कारागार में हैं, You're living in a prison house. What do you want to do? Let's be optimistic. आप कारागार में रहेंगे, कहेंगे चलिए हम थोड़ा विचारात्मक होते हैं। Just be positive. थोड़े सकारात्मक होते हैं। So we're not realizing the danger. तो हम खतरे को भाप नहीं पा रहे हैं। Right? It says you're uncontrolled. You're walking around with uncontrolled mind and senses. आप अपने And अनियंत्रित
we don't feel that that's dangerous? हम अपने अनियंत्रित मन और इंद्रिय के साथ घूम रहे हैं और हम खतरा भाप नहीं पा रहे हैं। We're our own worst enemy. We don't even need a satsanga. हम खुद के ही सबसे बड़े शत्रु हैं, हमें कोई असत्संग की We get जरूरत our नहीं। own mental concoction and mental speculation. हमारे पास खुद के मनगढ़ंत चीजें और मनोधर्म हैं। Right? We don't even need anybody else. हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। How'd you get so messed up? Who you associating with? Oh, just myself. तो आप इतने अस्त व्यस्त कैसे हो गए? आप किसका संग कर रहे थे? Why are you so messed up? Well, I was thinking. आप क्यों इतने अस्त व्यस्त हो चुके हैं? मैं सोच रहा था बैठकर, मैं सोच Whenever रहा था। someone gets messed up, and I said, "What happened to you?" and they said, "Well," I said, "Didn't I, kind of help you to do like this? You should do like that. That will protect you." Yeah. I know you said like that, but I was thinking. एक बार मैं पूछता हूँ लोगों को कि मैंने आपको बताया था, आपकी मदद की थी कि आपको कैसे क्या-क्या चीजें करनी चाहिए, तो आप अस्त व्यस्त नहीं होंगे। लेकिन कहते हैं हाँ आपने ऐसा कहा था, लेकिन मैं सोचने लगा। That's why I said, there's nothing to figure out. इसलिए कहते हैं आपको कुछ भी खोजबीन करने की You're जरूरत going to नहीं है। use mental speculation and mental concoction to figure it out. तो अगर आप मनोधर्म मनगढ़ंत तरीके अपनाएंगे खोजने के लिए, The same process that got you in trouble in the first place, and वही now it's going प्रक्रिया to figure it out, to जिसने bring a आपको solution for you. पहले मुसीबत में डाला, वही आपके लिए समाधान ढूंढेगा। Krishna already figured it out. कृष्णा ने पहले ही सब कुछ पता लगा He लिया। already knows what's best for us. कृष्णा को पता है हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। Our only focus should be, Krishna, please tell me what you want me to do. That's only shelter. केवल यही होना चाहिए कि कृष्णा आप मुझसे क्या चाहते हैं और वही हमारा एकमात्र आश्रय होगा। What does it mean to surrender to you to get free from Maya? तो कृष्णा को शरणागत करने का अर्थ क्या है कि जो हमें माया से मुक्त कर देगा। What does it mean to surrender to Rishikesh so that you purify and control this mad mind and senses? ऋषिकेश को शरणागत करने का क्या अर्थ है जिसके माध्यम से अपने पागल मन को शुद्ध और नियंत्रित कर How सकते do हैं? I do that? कैसे हम ये कर पाएंगे? That's why I said, we have to convince Krishna. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ हमें कृष्णा को आश्वस्त But if we don't even know what Krishna is asking us to do, and you just do any service and say, okay, Krishna, this is my surrender to you. Well, Krishna's like, I didn't ask you to do that. और अगर हम कोई भी ऐसी सेवा कर रहे हैं जो हमें पता ही नहीं जो कृष्ण हमसे चाहते हैं या नहीं, और हम कुछ भी ऐसा सेवा कर रहे हैं और कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, कृष्ण हमसे कहेंगे मैंने तुमसे ये सेवा You करने को just कहा ही नहीं। concocted and speculated some seva which I didn't ask you to do. तुमने ऐसे कुछ सेवा बनाने का प्रयास किया, निर्माण किया जो मैंने तुमसे करने को कहा ही नहीं है, And then you're surrendering there, और हम वहाँ जाके शरणागत but करते that seva is not connected to me. हैं, लेकिन वो सेवा मुझसे जुड़ा ही नहीं I'm not accepting the results of that seva. और उस सेवा के फलों को मैं स्वीकार ही नहीं करूँगा, So that's not real surrender. तो वो असल शरणागति नहीं है। So what does Krishna want us to do? तो कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं? That's the only question. यही एकमात्र प्रश्न And है। then please give me intelligence and strength and willingness to accept it and to execute it to the best of our ability. और मुझे बुद्धि दीजिए, श्रद्धा दीजिए और इतनी इच्छा शक्ति दीजिए कि मैं इसको पूरा कर सकूं। There's nothing else. और कोई भी अन्य चीज हमें What are the philosophy you want to talk about? और क्या आप सिद्धांत की बातें करना चाहते If we're not doing that, then what does anything else really matter? हैं? तो अगर हम वो एक चीज नहीं कर रहे हैं तो बाकी और अन्य चीजों का अर्थ क्या है? This is the essence. यही सार है, This is the solution. यही समाधान है। You get that, then you get everything else. अगर आपको ये मिलेगा आपको सब कुछ प्राप्त हो With जाएगा no extraneous endeavor. और किसी भी तरह की जरूरत से ज्यादा प्रयास करने की जरूरत Come to you. नहीं, अपने आप ही आपके पास All आ the जाएगा। benefits of karma, jnana, yoga, everything will automatically come to you. सारे कर्म ज्ञान योग का लाभ अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। We're taking the hard way. We're taking the wrong way. लेकिन हम कठिन रास्ता और गलत रास्ता चुन रहे हैं। What got us in trouble is the very process we're thinking that's going to get us out of trouble. तो जिस प्रक्रिया ने हमें समस्या में डाला उसी प्रक्रिया को हम चुन रहे हैं समस्या से Well, I बाहर realized निकलने I'm के in लिए। trouble. हम समझ पा रहे हैं वो मेरे पास समस्याएं That's हैं, good. तो ये बहुत अच्छी बात है। So what are you going to do about it? तो अब इस समस्या का क्या Well, करेंगे I'm आप? just trying to figure out कि मैं बस पता लगाने का प्रयास what करूँ do I have to do to get out of trouble. कि क्या मुझे करना होगा इस समस्या से बाहर आने के लिए। With what? किस चीजों से? Well, I was thinking, मैं सोच रहा था I was pounding my heart and I was thinking, और मेरे हृदय में ये ख्याल आ रहा था और मैं सोच रहा था then we get cheated again. तो हम फिर से ठगे जाएंगे बार बार।
So to have bona fide guru, it's for our benefit. तो प्रामाणिक गुरु होना हमारे लिए बहुत अच्छा है. Otherwise, who's going to help you to understand what does Krishna want you to do? वरना कौन आपकी मदद कर पाएगा ये समझ पाने के लिए कि कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं. And then if you put faith in the instruction, you try to surrender to the instruction, and then Prabhupada says, then immediately you get relief. और अगर आप श्रद्धा रखने का प्रयास करेंगे और निर्देशों को शरणागत करने का प्रयास करेंगे तुरंत ही आपको राहत मिलेगी. That's a real good sign. ये बहुत ही अच्छा संकेत है. Otherwise, how I'm getting like some positive relief, some benefit, something's working. वरना कैसे हमें सकारात्मक राहत मिल रही है या इसका मतलब अवश्य कुछ कार्य कर रहा है यहाँ. Yeah, because Krishna engaged you and you're accepting it, and Krishna is freeing you from Maya. क्योंकि कृष्ण ने आपको उस सेवा में लगाया और कृष्ण आपको मुक्त कर रहे हैं आप माया से. Prabhupada says in this purport, प्रभुपाद इस तात्पर्य and बताते this will हैं be my last point, और ये मेरी आखिरी बात होगी. maybe. हो सकता है. Where did he say it? Yes. Prabhupada said, therefore one has to engage himself in serious Krishna consciousness प्रभुपाद बताते हैं किसी को गंभीरता से कृष्ण भावनामृत में लगना होगा without any hesitation. बिना किसी हिचक के. If you don't take it from Krishna, we're gonna hesitate. तो अगर हम उसे कृष्ण से स्वीकार नहीं करेंगे तो हम अवश्य We're gonna be हिचकेंगे doubtful. और हम अवश्य संदेह करेंगे. Doubts are like demons. और संदेह असुर के If जैसे. Krishna convinces you, then you can do it without hesitating. तो अगर कृष्ण ने एक बार आपको आश्वस्त कर दिया तो आप बिना हिचके उसको कर सकते हैं. One has to engage in sincere, serious Krishna consciousness without hesitation. किसी को गंभीर एकनिष्ठ कृष्ण भावनामृत में लगना होगा बिना किसी झिझक It's के. free from doubts. इसका मतलब बिना किसी संदेह For के. this type of devotional service will instantly help one. और इस तरह की भक्ति में सेवा तुरंत ही किसी की मदद कर पाएगी. Instantly. तुरंत ही. Instantly help one onto the platform of transcendental consciousness. तुरंत ही उनको मदद करेगा कैसे दिव्य चेतना में वो पहुंच सकते हैं. And I remember Srila Bhagavad-Swami, he would also say, you can get this result immediately, instantly. मुझे भी श्रील गौर महाराज कई बार कहते थे कि आपको तुरंत ही ये सारे लाभ मिलेंगे If you just cooperate. अगर आप बस सहयोग If you करें. just accept it, sincerely execute it to the best of your ability, you get immediate, instant relief. अगर आप उसको स्वीकार करेंगे और एक निष्ठा से प्रयास करेंगे अपनी श्रेष्ठ क्षमता से उसको पूरा करने का तुरंत ही आपको राहत It's मिलेगी. such a powerful medicine. इतनी शक्तिशाली दवा है ये. And when we do it, we get a great result. और जब हम करते हैं हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है. And we're being stupid, overthinking it, hesitating, then it's not working nicely. और जब हम बेवकूफ बनते हैं उस पर हिचकते हैं सही तरीके से करते नहीं है तो हमें अच्छा लाभ So मिलता why is it not working nicely? है. तो क्यों अच्छे तरीके से काम नहीं कर Well, रहा? I was thinking, क्योंकि मैं सोच रहा था. I know you said this, Maharaj, Gurudev, मुझे पता है आपने ऐसा but कहा I था was महाराज, thinking गुरुदेव. this also goes with that. लेकिन मैं सोच रहा था शायद ये भी मैं साथ में कर सकता हूँ. We can dovetail it, हम उसको एक साथ मोड़ सकते हैं. right? So you're dovetailing without discussing with the Guru. आप गुरु के साथ चर्चा किए बिना उन चीजों को उसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. Is the Guru allowing the dovetailing? क्या गुरु ने आपको अनुमति दी जोड़ने के लिए उसमें? The addition? Is Guru part of that equation? क्या गुरु उस गन्ना के भाग थे? You see, mental speculation, mental concoction, it's so deep rooted. अब देखिए ये मनगढ़ंत तरीका मनोधर्म बहुत गहरा है हमारे अंदर. We practically cannot hear any other thing. हम व्यवहारिक रूप से कोई भी अन्य चीज Maya सुन has नहीं so पाते. substantially captured intelligence, mind, and senses. माया ने इस तरीके से मन बुद्धि इंद्रियों को जकड़ा हुआ है. So the Guru is like going behind enemy lines. तो गुरु जो है शत्रु के क्षेत्र में And प्रवेश you're कर रहे हैं captured. जहाँ पे आप फंसे हुए हैं. And he's going over there and he's trying to get you out of that prison. और वो गुरु वहाँ जाके आपको आपको जेल से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं. और वहाँ बहुत सारे रक्षक हैं, सिपाही Heavy हैं. protection, heavy, all locks, everything, right? बहुत कड़ी निगरानी में है और He's taking सभी जगह ताले risks. लगे हैं. तो गुरु खतरा उठा रहे हैं. Somehow or other try to get you out of that situation. इसी तरह से आपको इस स्थिति से कैसे बाहर निकाले. And the Guru, like, he finally fights through all of that. He's ready to get you out, and you're like, no, I'm fine here.
और गुरु जो है सभी से लड़ाई करके अंत में आपके पास पहुंचते हैं और आप कहते हैं अंत में कि मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ, I'm actually comfortable here. मुझे तो यहाँ बहुत आराम मिलता है, I have a bed, मेरे पास एक बेड है and they give me food twice, 3 times a day. और मुझे 2 या 3 बार खाने को दिया जाता I even made friends with the prison guards. है। और यहाँ जेल के जो सिपाही से भी मैंने दोस्ती बनाई है। I'm like, no, you come on, let's go, let's get out of this. Like, no, I'm fine actually, but thank you. और गुरु कहते हैं नहीं, हमें यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत है। वो कहते हैं नहीं, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। So we don't even, it was like a madness. It's like how you want to stay in a prison house. तो ये No, it's पागलपन not so है। bad. कैसे आप जेल में रहना चाहते हैं? ये हम कहते हैं इतना बुरा नहीं है ये, I'm fine. हम ठीक हैं। I don't feel any miseries here. मुझे किसी तरह का कष्ट नहीं मिल रहा है here. यहाँ बहुत तरह की सुविधाएं हैं। Why are you dramatizing everything? क्यों आप इतना नाटक कर रहे हैं? The gurus try to point out the reality, and to our mind, it feels like this is like over dramatization. गुरु जो है सच्चाई बताने का प्रयास कर रहे हैं, हमें लग रहा है कुछ ज्यादा ही नाटक हो रहा है। He's just painting this picture to somehow, like, you know, convince us. वो इस तरह की तस्वीर बना के हमें आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम उनकी बात को स्वीकार कर लें। It's a nice try, Maharaj. अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप महाराज। And then the guru saying, but Krishna is saying. और गुरु कह रहे नहीं, कृष्णा ये कह रहे हैं। Krishna is saying how he made this place. कृष्णा बता रहे हैं उन्होंने ये जगह कैसी With the बनाई है। threefold miseries. 3 तरह के कष्टों And birth, से, death, disease, old age, all the suffering conditions. जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, सारे तरह के दुख। But I don't feel any suffering conditions. मुझे कोई दुख नहीं मिल रहा है। Because the tamogun. मुझे तमोगुण The में। animals don't feel any suffering conditions. They don't feel any inconvenience. जानवरों को किसी तरह के कष्ट का अनुभव नहीं होता, उन्हें And किसी then the तरह guru का saying असुविधा we're नहीं like होती। two-legged animal and we're like offended. और जब गुरु कहते हैं कि हम 2 पैर पे चलने वाले जानवर हैं, तब हमें बुरा लग जाता But है। if we're acting like two-legged animal, why should we be offended? तो अगर हम 2 पैरों पे चलने वाले जानवर की तरह बर्ताव कर रहे हैं, तो हमें बुरा क्यों मानना Dogs, चाहिए? the dogs, right? They're having fun. सुअर, कुत्ते पूरे मजे कर रहे हो। Eating, sleeping, mating and defending, right? खाना, They're सोना, enjoying. खाना, सोना, रक्षा करना और They यौन don't संबंध feel like मजे it's कर a रहे हैं। bad life. उनको नहीं लगता है कि उनका जीवन कुछ बुरा है। Be positive, Maharaj. महाराज थोड़ा सकारात्मक सोचिए। Build up our self-esteem. Tell us it's going to be all right. और हमारी आत्म प्रतिष्ठा को बढ़ाइए, बताइए कि ये बहुत अच्छा है, हम ठीक हैं। Right? Instead, you're saying, don't think. और इसके बजाय ये कहने की कि आप हमें सोचने को नहीं कह रहे हैं। That sounds crazy. ये Don't पागलपन think. है कि हम सोचना नहीं चाहिए। If we understand what Krishna wants us to do and we're thinking, how do I do that, then that's a proper thinking. तो अगर हम ये समझ पा रहे हैं कि कृष्णा हमसे क्या चाहते हैं और हम सोच रहे हैं कैसे हम उनकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, तो ये सही तरीका का If सोचना है। Krishna telling us what to think about and we're thinking about something else, we got a problem. तो अगर हम चाह रहे हैं, कृष्णा चाह रहे हैं हम किसी चीज के ऊपर विचार It's करें, gonna be a लेकिन हम problem. ऐसा नहीं सोच रहे, तो ये हमारे लिए समस्या होगी। My brother, does that help you? मेरे भाई की आपकी मदद हुई? Cry because we can't cry, and that's the requirement. और रोइए क्योंकि हम रो भी नहीं सकते और ये हमारी जरूरत है रोना। And be prepared for some heavy mercy, और तैयार होइए कुछ भारी कृपा पाने के लिए, because you understand you need to cry. क्योंकि आप समझ पा रहे हैं आपको रोने की जरूरत है। So Krishna will make you cry. तो कृष्णा आपको रुलाएंगे। And when you start crying, then you'll understand this is mercy. और जब आप रोना शुरू करेंगे तो आप समझ पाएंगे ये असल में कृपा है। Otherwise, what is going to break us down? वरना क्या हमें तोड़ेगा? What's going to humble us out? क्या हमें विनम्र बनाएगा? So we can either try to do it ourselves, तो या तो हम स्वयं से विनम्र होने का प्रयास constantly करेंगे, working on ourselves and humbling ourselves and, trying to understand it properly. कि निरंतर अपने ऊपर में कार्य करके स्वयं को विनम्र बनाने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, Or we're going to get humbled out. या फिर हम विनम्र बना दिए जाएंगे। Everyone's going to be doing dandavat pranams in the end. अंत में सभी लोग दंडवत प्रणाम करने वाले The हैं sooner the better. और जितना जल्दी हो उतना बेहतर होगा। That's a real intelligence. वो असल बुद्धिमान है That's the truth also. और वही सच्चाई भी है। Otherwise, pride, I'm fine, arrogance, conceit, right? That's all demoniac qualities, means no good qualities. अगर दंभ में, अकड़ में, दर्प में हम कहें कि हम ठीक हैं, इसका मतलब कोई अच्छे गुण नहीं है, असुरों के जैसे गुण नहीं है। Unless we're proud of our demoniac qualities. अगर आपको अपने असुरों के गुण का अभिमान है, You get like a special mirror, like you're a demon and you look in and it looks back as like a devotee,
आपके पास अगर कोई विशेष आईना है, आप असुर हैं और आईने को देखते हैं तो वो ऐसा आपको दिखाएगा कि आप एक भक्त हैं। They get special mirrors like that. ऐसी तरह कुछ विशेष आईने होते हैं। They make you look a lot better than you really are, you वो know. आपको ऐसा दिखाएंगे कि जितना आप सुंदर नहीं होते ज्यादा आपको You know, some अच्छा soft दिखाएंगे। light, you know, something not so, you know, something softer. You know? कुछ मतलब आपको उसमें हल्का दिखाएंगे। We don't want to see every wrinkle, you know what I'm saying? हर एक झुर्रियाँ हम देखना We नहीं just want to चाहते। get like an overall appearance. We don't need to see every wrinkle. पूरा हम एक रूप देखना चाहते हैं। हर एक झुर्रियाँ कहाँ जो है कुछ निशान बने वो हम देखना नहीं चाहते चेहरे पे। So we want it like this, you know, just like it's just. तो हम इस तरह का पूरा तस्वीर चाहते हैं देखना। That's why it says, you know, Chetodapana is supposed to be cleaning the mirror, right? It's like, you know, I don't need it that clean, you know. चेतोदर्पण मार्जन थोड़ा साफ दिखने के लिए हम कहते हैं लेकिन उतना साफ भी नहीं देखना है। And sometimes from a distance, it's like, okay, it looks all right, you कभी know. हम दूर से देखते हैं, हाँ दूर से ठीक लग रहा है, It's manageable. अभी ठीक है, ठीक ठाक है। Yes. Hare Krishna. Shri Guruji. So my question is like when we are like praying to Krishna, kind to Krishna, when like lot of disturbances, anxieties are there. And the what? Disturbances and anxiety. So when we're trying to pray to Krishna, there's a lot of disturbances and anxieties there. So and also trying to follow instruction of spiritual master. Then when Krishna is purifying all these disturbances and giving us shelter and protection, so we And what? And And Krishna what? and then Krishna's purifying these problems. and like mind is becoming peaceful. So how to cry at that time? Because How to die at that time? That's the best time to die. प्रभु पूछ रहे हैं If you're really peaceful and you're thinking about Krishna, that's the perfect time to die. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि जब हम कृष्णा के प्रति कृष्णा को प्रार्थना करने जाते हैं उसे रोने जाते हैं तो मन में Is बहुत that what सारे he was asking me? He must have when I should leave at the best time? How to cry at that time. Oh, cry. I thought you said die. I thought that meant you already cried. Now you're ready to die. तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब हम कृष्ण के लिए रोने का प्रयास करते हैं तो कई बार बहुत सारे परेशानियां या चिंताएं हमें रोकने का प्रयास करती हैं, तो कृष्णा उसको जब शुद्ध करते हैं तो कैसे हम उस समय रो सकते हैं कृष्ण के लिए। So what's the question? What is the question? आपका प्रश्न क्या है फिर? I got confused. मैं थोड़ा Adam confused me. He said like when it is the time that Sri Krishna is trying to purify, everything is body is getting calm, and at that time how can I cry, because this is the right time to cry. That's what he was trying to ask. But when all of that is being solved, he's like, why I need to cry? It's already solved. तो वो पूछ रहे हैं कि जब ये सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा, जब कृष्ण कृपा करके करेंगे तो फिर हमें रोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो फिर मैं क्यों रोऊंगा फिर? Nothing to cry about. It's तो मेरे already solved. रोने के लिए कुछ है ही नहीं क्योंकि कृष्ण ने सारी चिंताओं परेशानियों से मुक्ति कर दिया मुझे। Then we become complacent. तब हम ढीले ढाले हो जाते हैं। And that's also a dangerous position. और फिर वो भी बहुत खतरनाक Because स्थिति our है major problem is pretty much solved. क्योंकि हमारी बड़ी समस्याएं जो हैं कुछ Now हद we're तक ठीक just हो चुकी doing हैं, some seva, तो अब हम कुछ सेवा कर रहे हैं, little chanting, little reading, little थोड़ा prasadam. थोड़ा जप करना, थोड़ा प्रसाद So it's देना, like not so bad. इतना बुरा नहीं हो रहा है कुछ। When we came, we were like coming out of a forest fire. जब हम आए थे तो ऐसा लग रहा था जंगल की आग से आए हैं। You're showing up, everything's on fire. ऐसे हम आए थे जैसे पूरे सभी जगह आग लगी पड़ी। Now someone, put all the buckets of water on you. It's like you're not in an immediate, emergency situation. जब आपको बाल्टी भर के पानी डाल दिया जाता है, अब आप उतनी आपातकालीन स्थिति में नहीं है। And then Maya's like, why don't you go behind the temple and, light some matches, It's fun, then you can see some sparks and you can see some fire. I'm like, oh, that's all right. तो फिर माया कहती है क्यों ना मंदिर के पीछे जाओ, थोड़ी वहाँ माचिस जलाओ, थोड़ी बस आग देखना।
I wonder what happens if you put this in dry grass, you know? और फिर सोचेंगे अगर मैं सूखी घास पे माचिस लगाऊं क्या होता है, जरा देखूं मैं करके। Then we're in trouble again, isn't it? और उसके बाद फिर से हम समस्या में पड़ जाएंगे। We had one Mataji, she practically burnt the whole side of the mountain down. हमारे एक माता जी हैं जिन्होंने एक पूरा पर्वत जला दिया था। She lit some match or something like this, right? उन्होंने एक The माचिस mountain लगाई। was on fire. They had to send all the fire engines over there. You know? पूरे पर्वत में पहाड़ में उन्होंने आग लगा दी थी। वहाँ पे आग से बचाने वाले लोगों को भेजना पड़ा था। So we can light fires if we want. आप अगर आग लगाना चाहते हैं, आपको पसंद है आग लगाना, If we do what we have to do, we don't have to light any new fires, you know? अगर हम वही कर रहे हैं जो हम करते हैं तो हमें और आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Then you have some shelter and protection. तो हमें कुछ आश्रय रक्षण मिलेगा। So now sometimes we become comfortable, complacent. तो कभी-कभी हम थोड़े आरामदायक या ढीले-ढाले स्थिति में। So now what will motivate you? तब आपको क्या प्रेरित करेगा? Immediate, crisis situation is solved. कि तुरंत जो आपदाएं आई थी वो सब सुलझ चुकी हैं। So now what is going to be the motivator? अब क्या चीज आपको प्रेरित करेगा? That means some kick, some other thing going to happen to you, keep happening to you. इसका मतलब कोई लात आपको मिलेगी। That's why Krishna doesn't let his devotees be in a comfortable situation. इसलिए कृष्ण अपने भक्तों को कभी भी आरामदायक स्थिति में नहीं छोड़ते हैं। Because he knows this is detrimental for your spiritual life. क्योंकि उनको पता है ये उनके भक्ति में बहुत बड़ी बाधा बनेगी। So he's always putting us into some new problems, some new complexities, some new difficulty, right? Because then we have to cry out to him. क्योंकि वो हमेशा हमें कुछ न कुछ नई असुविधाओं में डालते हैं, कुछ जटिलताओं में डालते हैं, क्योंकि तब हमें उनके लिए रोना पड़ेगा। If we're like Queen Kunti, right? Queen Kunti, she's praying for the difficulties to come. और महारानी कुंती जो है ऐसी कठिनाइयों के लिए प्रार्थना कर रही है, उनके जीवन में आए ऐसी कठिनाइयाँ। Are you praying like Queen Kunti? क्या आप कुंती महारानी की तरफ When प्रार्थना all कर the रहे हैं difficulties come again and again? कि बार-बार आपके ऊपर ये सारी कठिनाइयाँ आती रहें? They're going to come anyway. वो ऐसे भी आने वाले हैं। Because Krishna is going to always keep us humbled out and dependent on him. That's his mercy. क्योंकि कृष्ण हमेशा हमें विनम्र बना के उनकी कृपा के ऊपर आश्रित रखेंगे, ये उनकी कृपा है। Otherwise we get puffed up, we get too comfortable, then we're going to forget about him. और अगर हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, हम कृष्णा को भूल जाएंगे, तो हम उनके कृपा की मांग नहीं करेंगे। So you're going to smash you back down, you're going to get humbled out, and you're like, Krishna, please help me, I need mercy. तो कृष्णा हमें वापस तोड़ देंगे, हमें विनम्र बना देंगे, फिर हम कृष्णा को कहेंगे, कृष्णा मुझे मदद चाहिए, मुझे कृपा चाहिए। I'm your servant, you're Piti Pavan. मैं सेवक हूँ, आप पतित पावन हैं। Because we get carried away. क्योंकि हम कई बार भटक जाते हैं। So Maya's carrying away, we slap down, humbled out. तो माया जब इस तरह से भटकाती है, कृष्णा Now पड़ once मारते again हैं, you're depending on Krishna. और फिर से हम कृष्णा के ऊपर निर्भर होते हैं। That's his mercy. ये कृष्णा की कृपा है। Until it's spontaneous. जब तक हमारे भीतर से स्वाभाविक रूप से ना होने लगे, And even if it's just spontaneously, even Bali Maharaj, pure devotee, right? और यहाँ तक हो सकता है वो स्वाभाविक रूप से हो भी रहा, जैसे बलि महाराज जो शुद्ध भक्त हैं। And even Prabhupada was saying that even when you're managing and you're some king and you have some, right, you become attached to some little things, you know. प्रभुपाद बताते हैं कि कई बार अब इस तरह के राजा हों कि बहुत बड़ी व्यवस्था चला रहे हो, तो आप किसी छोटी मोटी चीज से आसक्त हो सकते So हैं। maybe it's not some big thing, but maybe some little things are there, still there. हो सकता है कोई बहुत बड़ी चीज ना हो, लेकिन कोई छोटी आसक्तियां हो सकती So for Krishna's pure devotees, right, then he just takes it away. हैं। तो कृष्णा उनके शुद्ध भक्त से सारी चीजें ले लेते हैं, खींच लेते हैं। Now you cannot depend on anything. और फिर आप किसी भी चीज के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। So many times it happens, you have like a pen or something, you're like, oh, I really like this pen, कई बार ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती है, आपको कोई कलम बहुत I ज्यादा really पसंद like हो, this thing or that thing, मुझे वो चीजें बहुत And ज्यादा I पसंद noticed every time I said I liked something, it was like missing, और मैं देखता था कि जब भी कोई चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद होती थी, तुरंत ही वो चीज गायब हो जाती थी। So I started like not saying I liked something. तो मैंने ये बोलना बंद कर दिया कि मुझे कोई चीज बहुत पसंद है। Because I saw every time I did that, like Krishna took it away from me. क्योंकि मैं देखा जब भी मैं कहता था मुझे ये चीज बहुत पसंद है, कृष्णा उसे मुझसे ले So जाता then I था। was going to say, oh, and then I don't say it. मैं जैसे कहने जाता था मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपने आप को रोक लेता था वो कहने से। And then all of a sudden, like next day or something, I'm looking, it's like gone anyway. और अगले दिन जब मैं जाके देखता था, वैसे भी कोई इसको लेकर चला गया, तो कृष्णा ने वो ले लिया। He knows you like something, he's going to take it away from you. कृष्णा को पता है आपको कोई चीज पसंद है, कृष्णा वो ले जाएंगे। He can do it. वो कैसा कर That's सकते why हैं। most people, they don't want to worship Krishna. इसलिए बहुत सारे लोग कृष्णा की पूजा करना नहीं चाहते हैं।
Because he takes everything away. क्योंकि वो सब कुछ ले जाते हैं। And we're like spoiled kids. We want to play. और हम बदमाश बच्चे हैं, हम खेलना चाहते हैं। We want to enjoy. हम मजा करना चाहते हैं। And Krishna's reminding you said you want to be my devotee. This thing is impediment. It's obstacle. और कृष्णा हमें याद दिलाते हैं, तुमने कहा था तुम भक्त बनना चाहते हो और ये तुम्हारे लिए रुकावट बनेगा। So he's going to take it away. तो वो उसको ले जाएंगे। Sometimes the kid, child or something has a knife or some dangerous thing. The parents are like grabbing them like they're going to kill themselves. कभी-कभी बच्चे के हाथ में कोई चाकू होता है, तो माता-पिता उसके हाथ से चाकू छीनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो स्वयं को मार सकते हैं। We don't even realize how dangerous it is. हमें अनुभव ही नहीं है कितना खतरनाक है। Many things we may do that we don't realize how much danger we're in. कई सारी चीजें जो हम कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता हम कितने बड़े खतरे में जा रहे हैं। Krishna knows. लेकिन कृष्णा को पता है। And he's responsible for us. और वो हमारे लिए जिम्मेदार है, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। That's his mercy. ये उनकी कृपा है। All right, I think that's enough tonight. मुझे लगता है आज के लिए पर्याप्त I है। hope that helps you. You had one point, yeah? आपकी कोई बात थी? Because you left and came back, now I'm duty bound to hear your points. आप छोड़कर चले जा चुके थे, लेकिन आप वापस आ चुके हैं, तो मैं अब कर्तव्यबद्ध हूँ आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। First of all, thank you Gurudev for allowing me to speak. I haven't been regular class, but still allowing me to speak. I really appreciate. And this question I had before as well. One day I was in the class of Sanatan Prabhu. And I also asked them the same question that I'm going to ask. You asked another devotee? Sanatan Prabhu. You asked Sanatan? Yes. Oh boy. Did he make it more clear or more confusing? तो प्रभु बता रहे हैं, मैंने एक प्रश्न पूछा था सनातन प्रभु से बहुत दिनों पहले, मैं वैसा ही प्रश्न आपसे दोबारा पूछना चाहता हूँ। सनातन प्रभु ने आपकी मदद की, आपको बुझाया, तो सनातन प्रभु ने कहा कि आप गुरुदेव से पूछिएगा। So what happened? So I want to ask, why there is a teaching of crying so much. We have to cry, we have to do this, because in this material world we see people watch movies, people watch some fiction, they get emotional, they start crying. But with Krishna, why we have to teach about crying, teach about all this? Sri Krishna is so much love, everything about Sri Krishna. Mahaprabhu, his devotees have done so beautiful. This land is so beautiful. Why there is the teaching of crying? I feel really upset about it, because. Are you crying for Krishna and Mahaprabhu? क्या आप कृष्ण और महाप्रभु के लिए Since you feel so bad about it, does that mean are you crying for them? Are you crying for Krishna? तो प्रभु कह रहे हैं कि क्यों हमेशा रोने के बारे में सिखाया जाता है, और लोग जब फिल्में देख लेते हैं या कुछ चीज़ें भावनात्मक चीज़ें देख लेते हैं तो अपने आप उसको देखकर रोना शुरू कर देते हैं। उनको रोने के लिए सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो महाप्रभु कृष्ण के लिए रोना के सिखाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, अपने आप क्यों नहीं होता? तो गुरुदेव पूछ रहे हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें आपको इतना आकर्षित कर रही हैं, तो क्या आप कृष्ण के लिए रो पा रहे हैं? How do you answer my question? आप मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? You say you feel bad that it's suggested that we should cry. Right, so are you crying for Krishna? आप कह रहे हैं कि आपको बुरा लग रहा है कि ये चीजें हमें सिखाने की जरूरत पड़ रही है कि हमें कृष्णा के लिए रोना चाहिए, लेकिन क्या आप रो पा रहे हैं कृष्ण के लिए? I want to ask, why there is path of fear that we are following? Everything negative we are talking about, slashes of Maya, so many problems. Answer my question. Are you crying for Krishna or are you crying for Maya? तो प्रभु मुझे पूछ रहे हैं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप माया के लिए रो रहे हैं या आप कृष्ण के लिए रो रहे हैं? I am here to cry for Krishna. Hari-bol. And what? I am here to cry for Krishna. You're here to cry for Krishna? तो प्रभु कह रहे हैं मैं यहाँ आया हूँ कृष्णा के लिए रोने के लिए। तो मुझे पूछ रहे हैं Mayapur to hear story about Mahaprabhu, about Pundarik Nityanidhi, about Gadadhar Pandit, their leelas and everything. And This is the leela of how to purify and control your mind and senses to become real devotee. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ सुनने के लिए आया था लीला महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि ऐसी लीलाओं को सुन के। तो गुरुदेव बता रहे हैं ये वो लीला है कि कैसे आप अपने मन इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं और कैसे भक्तों की तरह असल योग्यवान बन सकते हैं। We are living Mahaprabhu's leela. हम महाप्रभु की लीला में ही मौजूद हैं। I'm saying this because we are blaming Krishna that he is forcing Maya to put slashes on us. But the real reason is we are responsible for the slashes because we are harming other people.
we are living in this world where 90% people are non-vegetarian and they deserve the slashes. It's not the Sri Krishna who is trying to put slashes on anyone. They deserve the slashes and they are getting that. Krishna says, if you surrender to me, I'll destroy your sinful desires and your sinful reactions, right? तो प्रभु बता रहे हैं कि लोग भौतिक जगत में दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं क्योंकि अपने कर्मों की वजह से। कृष्णा उनको ऐसे प्रताड़ना या कष्ट नहीं देते। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि कृष्णा कहते हैं अगर आप कृष्ण को शरणागत करेंगे तो कृष्ण आपके पाप कर्म की इच्छाओं, पाप कर्म के फलों सभी को नष्ट कर देंगे। So we are responsible ultimately for our desires, तो अवश्य हम उत्तरदायी हैं अपनी इच्छाओं के प्रति, and our lack of cooperation with Krishna, और हम कृष्णा के साथ सहयोगिता में कमी दिखा रहे हैं, which has put us in such a trouble. जो हमें ऐसी दुविधाओं में डाल कर रखा है। So we're just getting what we deserve. तो हमें वो मिल रहा है जिसके हम लायक हैं। It's not what Krishna wants for us. ऐसा नहीं कि कृष्ण हमारे लिए वो चाहते हैं, but because we're ignoring him, क्योंकि हम उनको अनदेखा कर रहे हैं, acting independently, और स्वतंत्र रूप से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, enjoy that which doesn't belong to us, और उस चीज का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं जो असल में हमारा नहीं है। that's what has put us in a suffering condition. और इसी ने हमें इस दुखमय स्थिति में डाला है। Krishna created the world. This is prison house. कृष्णा ने इस जगत को बनाया है, ये एक कारागार है। Krishna himself says, I've created the material world as a prison house, which is a place of, it's a temporary place of misery, of suffering. कृष्ण ने बताया कि मैंने इस भौतिक जगत को कारागार बनाया है जो एक अनित्य जगत है, कष्टों से भरा, दुखों से भरा हुआ जगह है। So the question is, how did we ended up in the prison house? तो सवाल बस ये है कि हम इस कारागार में कैसे पहुंच गए? Because we chose. Sri Krishna gave us an option. Sri Krishna gave us an option to serve him, but we decided we don't want to serve. Right. We decided that we want to enjoy. We want to become an enjoyer. Right. That's why. So how much enjoyment is here? So there is literally no enjoyment here. तो प्रभु कह रहे हैं कि हमने एक फैसला लिया कि हम भोग करना चाहते हैं कृष्ण की सेवा करने की बजाय, इसलिए हम यहाँ हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं तो आप कितना भोग कर पा रहे हैं यहाँ? तो प्रभु बता रहे हैं कि यहाँ कोई भोग नहीं मिल पा रहा है। So your criticism is that you're painting this place as a negative place of suffering, right? Gurudev, as you said, listen, I'm listening to you, but you're not listening to me. तो आप सुनिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। Okay, so I listened to you. I understood your point. मैंने आपकी बात सुनी और And we आपकी can बात को discuss समझा, further also. और हम इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे। But I'm responding to your first point. लेकिन मैं आपकी पहली बात को उत्तर देने का प्रयास So कर you रहा have हूँ। to try to understand my point. तो आप मेरी बात भी समझने का प्रयास कीजिए। Otherwise, you're just reading your phone to try to make your next point. वरना बस अपने फोन को पढ़ते जा रहे हैं, अपने आगे की बात को रखते I जा रहे made हैं। this point right now Huh? in the class. What? He made these points in the class right now. Okay, so now I'm answering your point. तो ठीक है, मैं आप आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ एक-एक। You a little bit are acting like, why am I preaching about the suffering and the misery of the material world? तो आप कह रहे हैं कि क्यों मैं प्रचार कर रहा हूँ इस भौतिक जगत के दुखों के बारे में या कष्टों के बारे में, यहाँ क्यों इतने कष्ट मिल रहे हैं? And why does it have to be so dark or so negative or so much suffering condition? You're pointing out this kind of analysis of my presentation, right? तो आप इस तरह का सवाल उठा रहे हैं कि क्यों मैं इस तरह का नकारात्मक, अंधेरा, कष्टों से भरा, दुखमय ऐसे प्रस्तुति दे रहा हूँ। तो आप मेरी प्रस्तुति के ऊपर एक सवाल उठा रहे हैं। But I'm telling this is Krishna's presentation. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये कृष्णा की प्रस्तुति है। In the Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami is telling that this Bhagavatam is for those people who want to get freed from their suffering condition and they want to get liberated from that. This information is for those people who want to try to get out of this situation. और श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने खुद कहा है ये श्रीमद् भागवतम उन लोगों के लिए है जो अपने दुखों से, कष्टों से बाहर निकल के मुक्त अवस्था में जाना चाहते हैं। ये भागवतम उन लोगों के लिए बना है। But Prabhupada is saying if there's so much tamagun, there's so much covered consciousness, we cannot perceive the reality of this platform. What will be the motivator to want to get out of it? प्रभुपाद बताते हैं अगर आप तमोगुण में रहेंगे तो आप इस भौतिक स्तर के दुखों को अनुभव नहीं कर पाएंगे, तो क्या आपको प्रेरित करेगा कि आप इससे बाहर निकलने का प्रयास करें? So how do you answer that point? तो कैसे आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे? My answer is
this was really fine when Bhagavatam came, and when Mahaprabhu came, it should be different, because when you were saying about Nityananda Prabhu giving good cake, when Sri Krishna saying him to give good cake, Giving what? Give a good cake, lashes, so that he can be recovered. Yes, you want to get all anarthas out of your heart. Yeah. And just when I hear the name of Nityananda Prabhu, I only remember the Leela of Jagai Madai, how even he was punished so much and he still even stopped Mahaprabhu. When Mahaprabhu lifted Sudarshan Chakra, he even stopped Mahaprabhu that you should not do anything to him. And Nityananda Prabhu is so merciful. But if Nityananda is freeing you from all of those things which are keeping us in the material world, the material consciousness, that's an extension of his mercy. तो प्रभु कह रहे हैं कि जब भी नित्यानंद के लाभ के बारे में आप बात करते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु की लीलाओं में देखता हूँ कैसे वो जगाई मधाई को उन्होंने उनको मारा, लेकिन फिर भी वो सुदर्शन चक्र महाप्रभु ने बुलाया, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु ने उनको मारा नहीं। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु अगर कोई प्रक्रिया अपना रहे हैं जिसके माध्यम से वो आपके हृदय के सारे अनर्थों को बाहर निकालना चाहते हैं, यानी कि वो उनके कृपा का ही एक विस्तार है जिसके माध्यम से वो आपके साथ वो करना चाहते हैं। वो आपको योग्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। So otherwise, how do you clean your heart and consciousness? How do you get freed from so many anarthas? वरना कैसे आप हृदय को इतने अनर्थों से, इतने कल्मशों से कैसे मुक्त कर पाएंगे? Especially when we can't even realize that what is really even there. विशेष करके जब हम महसूस ही अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे अंदर क्या अनर्थ है। And we have little to no motivation or strength to even want to clean it, to even really qualify ourselves. और हमारे अंदर थोड़ी सी भी प्रेरणा या ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि हम इसको शुद्ध करने का प्रयास करें, ऐसे मुक्त होने का प्रयास कर पाएं। So what will motivate us to understand and recognize it and try to go through purification process? तो क्या चीजें हमारी मदद करेगी कि हम इसको समझ पाएं, इसको पहचान पाएं और उस शुद्धिकरण की प्रक्रिया से स्वयं को गुजार पाएं? This is how Nityananda is helping us. इसी तरह से नित्यानंद हमारी मदद कर रहे हैं। That's his function. Nityananda is guru. नित्यानंद का ये कार्य है, नित्यानंद गुरु है। So by the mercy of Krishna, one gets a guru. तो कृष्ण की कृपा से किसी को गुरु मिलते हैं। Nityananda represents the spiritual master. नित्यानंद गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। So Lord Nityananda is helping us how to get qualified, how to get purified. तो नित्यानंद हमारी मदद कर रहे हैं कैसे हम योग्य बन पाएंगे, कैसे हम शुद्ध बन पाएंगे, how to get free from all of these unwanted things. कैसे हम इन सारे अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं। So the heart is like a stone. तो हमारा हृदय like पत्थर का hard ground. जैसे कोई कठोर जमीन। There's so many stones and the wood and all of this is not fertile land is there. बहुत सारे पत्थर है, कंकड़ हैं, लकड़ियां हैं, तो ये कोई उपजाऊ जमीन नहीं है। Mahaprabhu said, I'm like gardener. महाप्रभु कहते हैं मैं एक माली हूँ। So he wants to plant the seed, prem bhakti. तो वो एक बीज लगाना चाहते हैं प्रेम भक्ति का। But without this land, without the barren heart getting, qualified and turned and purified and prepared, then how do you get bhakti lata beach? तो जब तक ये बंजर जमीन को साफ करके तैयार नहीं किया जाएगा, योग्य नहीं बनाया जाएगा, तो कैसे उसके अंदर वो भक्ति की बीज लगाई जाएगी? That's why I said without Lord Nityananda, you cannot get Mahaprabhu's mercy. इसलिए कहते हैं नित्यानंद प्रभु के बिना आप महाप्रभु की कृपा नहीं पा सकते। So without Balaram, without his plow, तो बलराम we जब अपना हल cannot लेकर be attracted to Krishna. आप कृष्णा से आकर्षित नहीं हो पाएंगे। That's why Prabhupada says we are unnaturally unattracted to Krishna. इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हम अस्वाभाविक रूप से अनाकर्षित हैं कृष्णा के प्रति। That's why we're not crying for Krishna. और इसीलिए हम कृष्णा के लिए रो नहीं रहे। Because so much sinful reactions are there. क्योंकि बहुत सारे पाप कर्म हैं हमारे अंदर। So many other material sinful desires and attachments are there. बहुत सारे पाप कर्म की इच्छाएं, पाप कर्म की आसक्तियां हैं हमारे अंदर। That's why we can't be attracted. That's why we're not crying for Krishna. और इसलिए हम कृष्णा के प्रति आकर्षित नहीं हैं और कृष्णा के लिए रो नहीं पा रहे। That means we're not prepared. We're not qualified.
हम तैयार नहीं है, ना तो हम योग्य हैं। We all know you have to do it. हम सभी को पता है कि हमें वो करने की जरूरत है। But practically, we're not so attracted. We're not so much crying for Krishna. That's a problem. हम उतने आकर्षित नहीं है, अतः हम कृष्ण के लिए रो रहे हैं, ये हमारी समस्या है। So if Krishna won't motivate us because we're not attracted, how else is Krishna going to motivate us? तो अगर कृष्ण हमें प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम उनके प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं, तो और अन्य क्या चीज हमें प्रेरित करेगा? Threefold miseries in the material prison house. 3 तरह के भौतिक कष्ट इस कारागार में जो आपको That मिलेंगे, is meant to rectify us. जो हमें सुधार करने के लिए बनाया गया है। Gurudev, So if we understand the purpose of it, तो हम अगर इसके उद्देश्य को समझ पाते हैं and we use that as a way, as a motivation to cooperate with Krishna, और अगर हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं कि उस प्रेरणा को हम इस्तेमाल करें कृष्ण के साथ सहयोग करें, then step by step we can get out of that condition. तो क्रमानुसार हम उस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। Gurudev, thank you so much for explaining. I understood your point, and I want to say that I think we are trying directly to get Krishna. We are not going through Mahaprabhu this way, because about the path of fear, about all the bad things we are talking about. I think we are not on the path of Mahaprabhu, because path of Mahaprabhu is just path of love. Mahaprabhu only talks about love. Mahaprabhu doesn't talk about until someone very close hearted comes and Mahaprabhu sees 1 or 2 problems in his heart, then only Mahaprabhu says something like that you should change this. Or what happened to Bada Haridas when he only saw one woman and Mahaprabhu just scolded him to go out. And he only does to very rare devotees, very special devotees, he scolds only those. Because normal people... Kalau Shudra Sambhava. Everybody here is less than Shudra. Prabhupada said that everyone in the material world is like Jagaya and Madhaya. तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि महाप्रभु लीला में सिर्फ प्रेम का वर्णन है, लेकिन यहाँ हम सीधे कृष्णा के पास पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, और कृष्णा और भय के आधार पे कि कैसे हमें 3 तरह की प्रताड़ना मिलेगी तो हम कृष्ण को शरणागत करेंगे। महाप्रभु सिर्फ प्रेम का प्रचार कर रहे हैं, और बहुत कम ही लोगों को वो कुछ गलत बातें कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये बुरा है, तुम्हें इसको ठीक करना चाहिए। तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं कि कलयुग में जिनका भी जन्म हुआ है, कलाव शूद्र संभव, शूद्र या उससे नीचे के स्तर में जन्म हुआ है, और जगाई मधाई के स्तर में जन्म हुआ है। And Prabhupada said we're worse than Jagaya and Madhaya. और प्रभुपाद कहते हैं हम जगाई मधाई से भी नीचे गिरे हुए हैं। So if Prabhupada said you people in the Kali Yuga are worse than Jagaya and Madhaya, तो प्रभुपाद कहते हैं अगर कलयुग के लोग, आप लोग जगाई मधाई से भी गिरे हुए हैं, then how are you going to cry for Krishna? तो कैसे आप कृष्ण के लिए रोएंगे? If you're in Tamogun, आप तमोगुण में हैं, Rajagun, रजोगुण में हैं, how are you going to cry for Krishna? तो कैसे आप कृष्ण के लिए रो पाएंगे? Prabhupada said because of so much Tamogun, Rajagun, lower modes of material nature, you cannot cry for Krishna. प्रभुपाद बताते हैं आप तमोगुण रजोगुण में प्रकृति के नीचों के गुणों में हैं, तो आप कृष्ण के लिए रो नहीं पाएंगे। So this is process of Prabhupada, process of Krishna consciousness, process of purification. प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया शुद्धिकरण की प्रक्रिया, To get free from Tamogun and Rajagun, even Sattvagun. ताकि आप तमोगुण रजोगुण से मुक्त होकर सतोगुण से भी मुक्त हो So जाएं, we can understand and relish something on transcendental plane. ताकि हम दिव्य स्तर की चीजों को समझ पाएंगे और कुछ स्वाद ले पाएंगे। You're trying to relish on transcendental platform from Tamogun and Rajagun platform. It's not possible. तो आप दिव्य स्तर की चीजें का स्वाद लेने का, समझने का प्रयास करें तमोगुण रजोगुण स्तर से, वो संभव नहीं हो सकता। It's just sentimental. तो वो बहुत भावुकता के स्तर पे समझने का प्रयास कर रहे हैं। So if you want somebody just to tell leelas and stories and you feel sentimentally, attracted like that, then go to some other person. You don't have to listen to me. अगर आप अनुभव करते हैं कि आपको कुछ लीलाएं, कुछ ऐसी कहानियां सुनने की जरूरत है और आप भावुकता से उनके प्रति बहुत आकर्षित भी हैं, तो आपको मुझसे सुनने की जरूरत नहीं, आप उनको जाके सुन सकते हैं।
Other devotees are telling pastimes, go listen to those pastimes, see how much it qualifies you. तो बहुत सारे लोग अब जो है वो लीलाओं कहानियों के बारे में बात कर रहे हैं, आप उनसे सुनिए और देखिए आप उनको लीलाओं को सुनिए कितने योग्यवान गुणवान How कर much पाते it's हैं, freeing you from tamagun, rajagun. कितना वो आपको तमोगुण रजोगुण से मुक्त कर पाएगा By listening to the stories. उनके कहानियाँ उनकी लीलाओं को सुन के। We're understanding the purpose and the meaning of those pastimes. हम समझने का प्रयास कर रहे हैं उन लीलाओं कहानियों का उद्देश्य क्या है, And trying to understand how can we apply it practically in our daily life to get this result that's being offered to us. और हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कैसे हम उसको व्यवहारिक जीवन में प्रतिदिन इसको लगा पाएंगे ताकि हमें भी वैसा लाभ मिल सके जैसे उनको मिल रहा है। We're trying to make it a reality, not just some sentimental story time. हम उसको एक सच्चाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि बस कहानी बना के उसको समय पास नहीं करना, Because what are you going to relish on transcendental platform if you're on tamagun, rajagun platform? क्योंकि आप क्या स्वाद ले पाएंगे दिव्य स्तर की चीजों का अगर आप खुद तमोगुण रजोगुण के स्तर पे हैं। That means, you know, Maya's platform, tamagun, rajagun, she's just captured your intelligence, mind and senses. यानी कि माया के स्तर पे तमोगुण रजोगुण के स्तर पे माया आपके मन बुद्धि इंद्रियों को जकड़ी हुई है। So how you take that as absolute? तो कैसे आप उसको परम सत्य मान रहे हैं? It's sentimental. ये बस भावुकता वाली बात है That also has to be given up. और उसको भी आपको त्याग करने की जरूरत है If you want the real thing. अगर आपको असल चीज चाहिए। So do you want the sentimental thing or you want the real thing? तो आपको भावुकता वाली चीज चाहिए या आपको सच्चाई चाहिए? This takes a hard work. इसके लिए कठिन परिश्रम करना होता है। This is not for kids, you know. ये कोई बच्चों के लिए नहीं है। If you want to hear grandma telling you some stories, that's your business. You तो अगर आप चाहते हैं कि दादी आपको कोई कहानी सुनाए तो वो आपका काम है। We want to make it real. हम इसको सच्चाई में तब्दील करना चाहते हैं। We want to make it on the soul platform. हम इसको आत्मा के स्तर में लाना चाहते हैं। That means transcendental to tamagun, rajagun, even sattvagun plus. इसका मतलब दिव्य स्तर पे तमोगुण रजोगुण यहाँ तक कि सतोगुण से भी ऊपर। That means purification. इसका मतलब शुद्धिकरण की जरूरत है। That means anartha nivritti. इसका मतलब अनर्थ निवृत्तियों करने की जरूरत है। To come to this Brahma Bhuta Prasanatma platform. ताकि हम उस ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा के स्तर तक That means a पहुंच पाएं। liberated platform, Nishta platform. इसका मतलब मुक्त स्तर पे निष्ठा के स्तर पे पहुंच Then पाएं। Bhakti Lata Beach, then Krishna Prema can be planted there. तब भक्ति लता बीज कृष्ण प्रेम वहाँ पे लगाया जा सकता है। That's what we're working towards. और इसके पीछे हम कार्य करने का प्रयास करते हैं। That's what we're trying to purify and qualify ourselves to deserve that mercy. हम स्वयं को शुद्ध बनाने का योग्यवान बनाने का प्रयास करें कि हम उस कृपा के लायक बन पाएं। We're not sentimentally saying, oh, I love Krishna and you're Tamagun, Rajagun, I love Krishna, I'm attracted to Krishna. How? Prabhupada said you're Tamagun, ignorance, so how are you going to be attracted to Krishna? हम भावुकता के स्तर पे तमोगुण में रजोगुण में ऐसा नहीं कहने का प्रयास करें हमें कृष्ण से प्रेम है। Gurudev, I think Sri Krishna is so much attractive that even Tamogun, Rajogun, any gun can be attracted. Sri Krishna is so much attractive, he is more attractive than Maya. So I don't. If you are sincere, and I'm not the witness and the judge of you, Krishna is. तो प्रभु पूरा प्रश्न कह रहे हैं कि अगर तमोगुण रजोगुण में भी कृष्ण इतने आकर्षक हैं वो आपको आकर्षित कर सकते हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं मैं आपकी गंभीरता का एक निष्ठता का मैं न्याय नहीं करूंगा, कृष्ण आपकी गंभीरता और एक निष्ठता का न्याय करेंगे। Krishna will give you intelligence of what is required to get your spiritual desire fulfilled. कृष्ण आपको बुद्धि प्रदान करेंगे कि आपको क्या चीजें की जरूरत है कि कैसे आपकी आध्यात्मिक इच्छा को आप पूरा कर पाएंगे। And this is the process to qualify yourself to actually get Krishna prema and get Krishna. This is the process. ये वो प्रक्रिया है जैसे जिससे आप अपने आप को योग्यवान बना पाएंगे और अंत में कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर पाएंगे। ये That's वो what we're प्रक्रिया working towards. और उसके पीछे हम कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। We're not taking it cheaply. हम इसको सस्ते तरीके से We're लेने का not just प्रयास assuming it. या हम बस We're कुछ not sentimentally मन से accepting it. मानने का प्रयास नहीं कर रहे, भावुकता से समझने का प्रयास नहीं कर रहे। So, if you don't like this presentation, you don't understand it or accept it, you don't have to come here. तो अगर Nobody आप forcing you to come here. इस प्रस्तुति को समझ नहीं पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा, जोर नहीं कर रहा यहाँ आने के लिए।
There's devotees around here that are all acting like gopis in the mood of separation. बहुत सारे भक्त हैं ऐसा जो यहाँ पे कर रहे हैं दिखावा कि वो गोपी हैं विरह के भाव में. Doing their, kirtan melas and everybody's in the mood of separation. You can go play the drama if you want to play that. तो वो कीर्तन मेला कर रहे हैं और गोपी के भाव में विरह के भाव में कीर्तन कर रहे हैं. आप उस तरह के साथ उनके साथ नाटक कर सकते हैं बैठ के. And cry for Krishna. और कृष्ण के लिए रो सकते हैं बैठ के. With no guru. जिसके पास कोई गुरु तक नहीं. Tamagun, Rajagun. रजोगुण में है. You think that's going to get you Krishna? Then go ahead, try. See how you do. अगर आपको लगता है उससे आप कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे तो एक बार प्रयास करके देखिए और देखिए आपको क्या मिलता है. These are Krishna's instructions. यहाँ पे कृष्णा के निर्देश. This Guru Sadhana Shastra, process of purification. शास्त्र शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बारे में. Prabhupada said first try to come to Sattva Gun. प्रभुपाद कह रहे हैं पहले सत्वगुण के स्तर में आने का प्रयास करो. But you're thinking you're already crying for Krishna, so. How is that unless you're on transcendental platform? I don't see that you're on transcendental. How do we understand about someone in the transcendental platform? How we understand someone on the transcendental platform? By what they're speaking. तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुरुदेव बता रहे हैं कि आप ऐसे दिखावा कर रहे हैं, आप कृष्णा के लिए रो रहे हैं और आप दिव्य स्तर पे हैं, लेकिन आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दिव्य स्तर पे हैं. तो प्रभु कह रहे हैं आपको कैसे पता चलेगा कि कोई दिव्य स्तर पे है या नहीं. तो गुरुदेव बता रहे हैं जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि आप दिव्य स्तर पे हैं या नहीं. So what you're saying is not according to Guru Sadhana Shastra. तो जो आप बातें कह रहे हैं वो गुरु साधु शास्त्र के आधार पर बिल्कुल नहीं है. That's why I don't accept what you're saying on transcendental platform. इसलिए आप कह रहे हैं कि जो आप दिव्य स्तर पे हैं वो आपकी बातें सही नहीं है. I just take it as someone who's trying to be sincere and has some sentimental feeling towards Krishna, and I'm encouraging that, and at the same time saying, okay, now do the work to qualify yourself for that. तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि कोई एकनिष्ठ व्यक्ति है लेकिन थोड़ी भीतर में भावुकताएं हैं, तो मैं उसको थोड़ा प्रोत्साहन दे रहा हूँ, लेकिन उस भावुकता को मैं परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे आप स्वयं को योग्यवान बना सकते हैं, कैसे इन भावुकताओं से मुक्त होकर और ज्यादा एकनिष्ठ हो सकें भगवान के. And then now you're arguing with me that that somehow you're uptight with me because I'm not accepting you on a transcendental platform. और आप मुझसे नाराज हो रहे हैं इस बात से लेकर कि मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि आप दिव्य स्तर पे हैं या नहीं. Immediately you're defending yourself on a false ego platform, and at the same time you're saying you're on transcendental platform. तुरंत ही आप अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि आप दिव्य स्तर पे हैं, और आप ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप दिव्य स्तर पे हैं. That's why I know. और इसीलिए मुझे समझ में आ रहा है. Guruji, I apologize if you think that way. I never tried to say myself on some transcendental platform. You just defended yourself like, who the hell are you to say that are you saying I'm not on transcendental platform? तो प्रभु कह रहे हैं मैं क्षमा चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगा कि मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं दिव्य स्तर पे हूँ. गुरुदेव ने कहा तो अभी तुरंत अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे मिथ्या अहंकार में कि आप कौन होते हैं कि मुझे बताने के लिए कि मैं दिव्य स्तर पे. Isn't that exactly what he just said? क्या अभी तुरंत ऐसा इन्होंने कहा? Who are you to say that whether I'm on transcendental platform or not? आप कैसे कह सकते हैं कि कोई दिव्य स्तर पे है या नहीं? आप कौन होते हैं किसी को बताने वाले? कि आपने ऐसा नहीं कहा था अभी? Gurudev, I asked how we know that someone is on transcendental platform. I asked this question when you said. How do we know? How do we know that someone This is on actually Arjuna's question tonight. How will we know whether someone is on transcendental platform? और आज हमने इसी के ऊपर बात की कि अर्जुन कृष्ण से सवाल पूछ रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कौन दिव्य स्तर पे है या नहीं. What are the symptoms of क्या one उनके संकेत हैं who's in this type of consciousness? जो इस तरह की चेतना में होते हैं? उनके क्या How does संकेत he हैं? speak? What is his language? How is he acting? What is he saying? किस तरह से वो बोलते हैं? उनकी भाषा क्या होती है? वो किस तरह का व्यवहार करते हैं? उनके क्या And संकेत Prabhupada हैं? in the Purport he says here, और प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य बता रहे हैं a learned man has his symptoms. एक पंडित की कुछ संकेत होते हैं. So a transcendental consciousness of Krishna, a man in transcendental consciousness of Krishna has specific symptoms in his various dealings. तो जो दिव्य कृष्णा भावनामृत की चिंता में होता है उन व्यक्तियों के सामान्य बर्तावों में कुछ विशेष तरह के व्यवहार होते हैं. One can know his specific symptoms from the Bhagavad Gita. और भगवद गीता के आधार पे इन विशेष संकेतों को देखा जा सकता है. And we're quoting
Guru Sadhu Shastra, quoting Bhagavad Gita. और हम गुरु साधु शास्त्र और भगवद गीता की बात बता रहे हैं. The most important is how the man in Krishna consciousness speaks. सबसे महत्वपूर्ण चीज कि कृष्ण भावनायुक्त व्यक्ति किस तरीके से बातें करता है. For speech is the most important quality of any man. कि ये बोलने की कला सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी भी व्यक्ति के अंदर. So if you hear perfect knowledge from perfect source and you speak that with realization, that is the qualification. तो अगर किसी ने पूर्ण ज्ञान पूर्ण स्रोत से श्रवण किया है और उसको यथारूप में पूरे साक्षात्कार के साथ अगर कह सकता है तो वो उसकी योग्यता है. It is said that a fool is undiscovered as long as he does not speak. ऐसा कहते हैं मूर्ख तब तक पता नहीं चलता जब तक वो बोलना शुरू नहीं करता. And certainly a well-dressed fool cannot be identified until he speaks. और जब तक कोई अच्छे से पोशाक पहना हुआ व्यक्ति पता नहीं चल पाएगा जब तक वो बोलना शुरू नहीं करेगा. But as soon as he speaks, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है then he reveals himself at once. तो तुरंत ही स्वयं को प्रकाशित कर देता है. So until someone speaks, then only then can you understand who and what are they, what do they know, what do they realize. तो जैसे वो बोलना शुरू करते हैं तब समझ पाएंगे कि वो कौन है, वो क्या जानते हैं और क्या उन्होंने जीवन में साक्षात्कार किया है. So I had great fortune to hear from Srila Bhaktivedanta.Swami, who trained me to understand these points from Srila Prabhupada's books and teaching. तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य था कि मैं ऐसे व्यक्ति श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज से सीखा जिन्होंने मुझे प्रशिक्षण दिया इन बातों को मैं समझ पाऊँ श्रील प्रभुपाद की किताबों और उनकी शिक्षाओं. That's my greatest asset. तो ये मेरा सबसे बड़ा धन है. And because I got mercy to understand it, and I have faith and realization, my Gurudev asked me to go share that with other people. और क्योंकि मुझे ये कृपा मिली, try to help them. मुझे कृपा मिली कि मैं इन सारी चीजों को समझ पाया, मैंने इनके ऊपर विश्वास रखा, श्रद्धा रखी, मुझे साक्षात्कार मिला, फिर मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया अब इसी श्रद्धा साक्षात्कार को आप अन्य लोगों के साथ बांटने का प्रयास करो. So we associated and heard from someone who is a premi bhakta, who has real love for Krishna. तो हमने संग किया और श्रवण किया ऐसे भक्त से जो असल में जिनके पास कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं, जो आत्मा दिव्य स्तर पे स्थित है, not on the materialistic or sentimental level. भौतिक भावनात्मक स्तर पे संग नहीं किया. So there's a heaven and hell difference. तो जमीन और आसमान का अंतर है. That's how you can know. और इस तरीके से आप जान पाएंगे. So Gurudev, this is a very interesting conversation. ये बहुत ही रुचिकर वार्तालाप हो रहा है हमारा. So I thank you for bringing these points. तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इन बातों को लेकर आ रहे हैं. yeah. So Gurudev, I really appreciate that through you I could hear the name of Gaur Govind Swami Maharaj, because before that I didn't accept that after Prabhupada someone bona fide Guru has come and delivered so many souls. But after hearing Gaur Govind Swami Maharaj, I feel really good, and I'm the part of the temple. I want to do cleaning. I also came to clean this place. I didn't want to tell about that I'm doing a good duty, but I'm just saying. No, the devotees told me you're doing seva. They told me you're coming, you're doing seva. I got a good report about you. Yeah. I appreciate that. Yeah. So Gurudev, my question is, as you are saying that someone can understand from some symptoms about who is a pure devotee, from the way of speaking and everything. Yeah. And also by the effects of hearing from them. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि आप पता लगा सकते हैं कौन शुद्ध भक्त है या नहीं. तो उनके वाक्यों से, तो गुरुदेव बता रहे हैं हाँ, और उनके वाक्यों से भी और उनसे श्रवण करके आपके अंदर क्या प्रभाव दिखता है उससे भी आप पता लगा सकते हैं. So can you shut up this fan? Turn it down a little bit. It's like a little cold. So Gurudev, based on that, I have a question. Based on what you said, I have a question. That but before you ask me the question, आप उससे पहले I'm मुझे कोई so सवाल पूछे. happy you got mercy from Srila Bhaktivedanta Swami. मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपको श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज से कृपा मिली है. I'm very happy for that. मुझे बहुत खुशी है कि आपको श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज से Because कृपा that मिली है. tells me a lot about you. क्योंकि उसी से मुझे बहुत कुछ आपके बारे में पता चल पा रहा है. thank you so much, because hearing Gaur Govind Swami Maharaj is so blissful. Yeah. Their name is so blissful. Thank you. It's not coincidence that Srila Bhaktivedanta Swami is bringing you here.
तो ये कोई संयोग नहीं है कि श्रील गौर से महाराज आपको यहाँ लेकर आए हैं। And if you listen to Maharaja's lectures and his tapes and his videos, you'll see that what I'm telling is exactly what he's speaking, what he spoke. It's the same information. अगर आप श्रील गौर से महाराज के प्रवचन, उनके वीडियोस, उनके टेप सारे सुनेंगे तो आप देख पाएंगे जो बातें मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल पूरी तरह से वही है जो उन्होंने कही थी। I'm not making this up. मैं ये खुद से चीजें नहीं बना था। Actually, when I was watching Swami Maharaj's lectures, then I realized that only Swami Maharaj could answer this question. But now that's why I'm putting this question in front of you. Okay, we're getting some benefit by Guru Maharaj. तो प्रभु बता रहे हैं कि श्रील गौर से महाराज को सुन के ही मुझे लगा था कि ऐसे कोई व्यक्ति मेरे प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं, श्रील गौर से महाराज जी केवल दे सकते हैं। तो मैं इसलिए मैंने ये प्रश्न आपके सामने रखा है। Everybody's curious now. What is this question? अभी सभी लोग जिज्ञासु हो चुके हैं कि इनका सवाल क्या होगा। We should tell them to find out. You have to come back tomorrow. हमें कहना होगा सभी को, हमें आपको कहना होगा आप कल आइए ताकि Everyone will be like, we have to go back. We have to hear his question and Maharaj answer. तो सभी लोग इंतजार करेंगे वो ये प्रश्न हम कल सुनेंगे। Why give them everything? आज ही के दिन सब कुछ हम क्यों दे दें? कल के लिए इंतजार करवाते हैं सबको। No, you tell me. Now I'm curious. अब मेरे अंदर जिज्ञासा आ गई है। Now I want to see what kind of mercy Gurudev wants to give me. अब मैं देखना चाहता हूँ गुरुदेव कैसी कृपा आपको देना चाहता हूँ। Even I woke up. अब तो मैं भी जाग गया। So I will directly come to the point. Everybody is getting late because of me. I really apologize because your time is more precious than my time. I want to say that we're trying to help them. हम इन सभी की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग मिलकर। प्रभु कह रहे हैं आप मेरी वजह से सभी का समय बर्बाद हो रहा है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आपका समय बहुत मूल्यवान है। तो गुरुदेव बता रहे हैं हम दोनों इन सभी की मदद कर रहे हैं। Nobody, everyone's smiling. They're good. और सभी हंस रहे हैं, सभी अच्छे हैं। No one's throwing any tomatoes at me. आपकी तरफ टमाटर नहीं फेंक रहे। I was going to say rocks, and then I said he's a soft guy. I'll say tomatoes. पहले मैं पत्थर बोलने वाला था, लेकिन मुझे लगा थोड़े कोमल व्यक्ति है तो मैं टमाटर की बात की। My mind thinks like that, you know, rocks. And it's like he's a nice guy. I'll just say tomatoes. मेरा मन ऐसा है, कभी-कभी ऐसे पत्थर जैसी बातें सोचता है, लेकिन उसे चलो टमाटर बोलते हैं, कोमल आदमी है। It's my conditioning. I'm from the city in America, you know. तो ये मेरे अंदर थोड़ी बद अवस्था है, मैं अमेरिका के शहर से हूँ। So I softened it a little bit. तो मैंने थोड़ा सा उसको कोमल बना दिया। Tell me. तो कृपया बताइए। the question is, we are in Tamogun, and the Mahaprabhu said only the devotee who are in Madhyam Koti, they can understand who is true devotee and who is not. Only devotee who's what? Madhyam Koti. Madhyamadikari, he cannot. Madhyam Adhikari. Madhyam or Uttam? Yes. Yeah. So at least he must be a Madhyam Adhikari so that he can understand who is a bona fide guru or who is not. And you are saying that quality is also perfect. That symptoms definitely tells a lot about you. The way you speak, the way you behave with everyone. I totally agree. They have a lot of impact. But my question is, until we are in the Madhyam Adhikari, we cannot understand. Udam? Until we're what? Madhyam Adhikari. Madhyam. Yeah. Madhyam Adhikari. So We cannot understand who is true devotee, who can be our guru. So how we go forward with it? Madhyam Adhikari can understand. But we are not Madhyam Adhikari. Yeah, you're not. तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं। You're not. तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम तमोगुण में हैं, जैसे बताया जाता है कि अगर हम मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी के स्तर पे आते हैं तब हम समझ पा सकते हैं कि कौन प्रमाणिक गुरु है या कौन शुद्ध भक्त है। तो जब तक हम मध्यम अधिकारी पे नहीं आते हैं कैसे हम समझ पाएंगे? तो वो प्रभु गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं कि मध्यम अधिकारी समझ सकते हैं। तो प्रभु पूछ रहे हैं लेकिन हम तो मध्यम अधिकारी नहीं है। तो गुरुदेव बता रहे हैं आप मध्यम अधिकारी नहीं है। I asked Sridham a similar question. और मैंने श्री गौर से हमारा से यही प्रश्न पूछा। I said, Gurudev, it almost seems like you have to be a pure devotee
to recognize a pure devotee. मैंने पूछा गुरुदेव ऐसा लगता है कि आपको खुद एक शुद्ध भक्त बनने की जरूरत पड़ेगी अगर आपको शुद्ध भक्त को पहचानना है तो? And Gurudev said, yes. और गुरुदेव ने कहा बिल्कुल. Otherwise, how will you recognize? How will you understand? कैसे आप पहुंच पाएंगे? कैसे आप उनको पहचान पाएंगे? And Srila Prabhupada says something similar to that. और श्रील प्रभुपाद भी ऐसी ही बात करते हैं. Prabhupada said it takes one to know one. प्रभुपाद कहते हैं स्वयं पहले बनना होगा उनको पहचानने के लिए. So, I'm only going on mercy that I got from Krishna and Krishna Parampara, Srila Govinda-Swami Prabhupada. तो मैं उसी कृपा पे चल रहा हूँ जो मैंने कृष्णा श्रील गोविंद महाराज और श्रील प्रभुपाद से पाई. I've received by their mercy, I received perfect knowledge from perfect source. उनकी कृपा से मैंने पूर्ण ज्ञान पूर्ण स्रोत से प्राप्त किया. And not only just heard it, but by their mercy realized it. और मैंने जब केवल उसको सुना नहीं उनकी कृपा से मैंने उसको साक्षात्कार भी किया. So what I'm telling you is not theoretical. तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई मौखिक ज्ञान नहीं. This is not a theoretical academic explanation. ये कोई मौखिक या मेरा शैक्षणिक अनुभव ये नहीं है. It's in the Shastra. ये शास्त्र में लिखा है. All previous acharyas speak about और it. सारे पूर्वाचार्य ने इसकी बातें की हैं. But you must also have realized it. लेकिन अवश्य आप इन सारी बातों का आपको अनुभव भी And if करना the होगा. previous acharya knows that you got mercy to realize it, he's going to send you to be preserved. If the previous acharya knows that you got special mercy by mercy of Lord Krishna, and then you realizing it, then when that training is completed, then that spiritual master is the authorized person to say that you should go and express that realization, what you heard from me. तो पूर्व आचार्य अगर ये देखेंगे कि आपने कृपा प्राप्त की है, अच्छे तरीके से आपने श्रवण कर पाया है, तो वो पूर्व आचार्य अब आपको आदेश देंगे, अधिकार देंगे कि आप वही ज्ञान वही साक्षात्कार बाकी लोगों को बांट सकते हैं. So Srila Govinda-Swami said, you accepted me in your heart, and I have accepted you in my heart. तो श्री गोविंद महाराज ने कहा तुमने मुझे अपने हृदय में स्वीकार किया है और मैंने तुम्हें अपने हृदय में स्वीकार किया है. Sannyas is meant for you, Murali Krsna. और संन्यास तुम्हारे लिए बना है मुरली कृष्ण. I want you to make your own men, just like Prabhupada told me to make my own men. Murali, I'm telling you same instruction. You make your own men. तो गुरुदेव ने कहा कि जिस तरह प्रभुपाद ने मुझे आदेश दिया कि तुम स्वयं के लोगों को तैयार करो, उसी तरह मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ, तुम भी स्वयं के लोगों को तैयार करना. So I'm just following my guru's instructions. तो मैं केवल मेरे गुरु के निर्देश का पालन कर रहा हूँ. And by his mercy, I'm able to realize and speak what he, showed us. और उनकी कृपा से मैं साक्षात्कार कर पा रहा हूँ और आप लोगों से वो बांट पा रहा हूँ जो मैंने अपने जीवन में साक्षात्कार किया. Just like Prabhupada was saying, you cannot associate and understand my spiritual master, Srila Bhaktivedanta.Swami, just by reading his books. जैसे प्रभुपाद कहा करते थे, आप मेरे गुरुदेव श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को समझ नहीं पाएंगे, उनका साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे केवल उनकी किताबों का अध्ययन करके. Unless you come and you surrender to present link of that parampara, only then will that personality help you to understand and realize what his spiritual master was speaking. जब तक आप वर्तमान में मौजूद प्रामाणिक व्यक्ति को परंपरा में जो उनको शरणागत नहीं करेंगे, वो आपको योग्यवान बना पाएंगे, मदद कर पाएंगे, ताकि आप उन पूर्व आचार्य की बातों को समझ पाएं, साक्षात्कार कर पाएं. So I'm not acting on my own authority. तो मैं स्वयं के अधिकार से कार्य नहीं कर रहा. And prior to my meeting Srila Govinda-Swami, I also didn't have faith in anybody. और श्री गोविंद महाराज से मिलने से पहले मेरा भी किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई श्रद्धा नहीं थी. और यही मेरी भी कहानी है. But Krishna, Srila Prabhupada, they brought Srila Govinda-Swami, and he spoke in such a way that they convinced me that he's representative of Mahaprabhu's parampara. और कृष्णा और प्रभुपाद ने अपनी कृपा से मेरे जीवन में श्री गोविंद महाराज को भेजा और उन्होंने इस तरीके से मेरे सामने बातें की कि मैं समझ पाया कि ये महाप्रभु के परंपरा के प्रमाणिक व्यक्ति हैं. And then also by his association and quoting Guru Sadhana Shastra, then I could start to understand what is his position in Golok Vrindavan. और उनका संग करके और जिस तरह से गुरु साधु शास्त्र का वो विवरण दे रहे थे, तो समझ में आया कि वो किस तरह के व्यक्ति और गोलोक वृंदावन से आए व्यक्ति. These personalities, they're not of this material world. इस तरह के व्यक्ति इस भौतिक जगत से नहीं आते हैं. They're Nitya Siddha, Mahabhagavata, Premi Bhakta. ये नित्य सिद्ध महाभागवत प्रेमी भक्त हैं.
They descend here, just like Krishna descends here. तो वो यहाँ अवतरित होते हैं जैसे कृष्णा यहाँ अवतरित होते हैं. So such a personality somehow or other picked me up. तो किसी तरह से ऐसे व्यक्ति ने मुझे आके उठाया and accepted me और मुझे स्वीकार and किया initiated me और मुझे दीक्षा दी, and trained me मुझे प्रशिक्षण दिया and instructed me, और मुझे निर्देश दिया and I'm trying to follow those instructions. और मैं उनके निर्देश को पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ. It's as simple as that. तो ये इतना सरल है बस. And I'm saying it in my own way, according to my own experience and realization, so that it becomes practical to you. तो मैं अपने तरीके से, अपने अनुभव से, अपने साक्षात्कार से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि मैं इसको सही तरीके से प्रस्तुत किया जा And सके. that's kind of the best that I can do. और यही मैं श्रेष्ठ अपनी तरफ से करने का प्रयास कर रहा हूँ. And if you listened and you read Srila Bhaktivedanta.Swami's books and his lectures and tapes, you'll understand. This is not mine. और अगर आप श्री गौरव महाराज की किताबें पढ़ेंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे, उनके टेप सुनेंगे, वीडियो सुनेंगे, तो आप देख पाएंगे कि ये सारी बातें मेरी बिल्कुल भी नहीं. Speculating, I'm not concocting, I'm not twisting out some other type of meaning or process. मैं कुछ मनोधर्म नहीं कर रहा, मनगढ़ंत तरीके से या कुछ तोड़ मोड़ करके कुछ नई चीजें अपने से प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ आपके सामने. I'm trying to present it as it is. मैं आपके सामने यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास. And most people, they don't like this type of presentation. और ज्यादातर लोगों को इस तरह की प्रस्तुति बिल्कुल पसंद नहीं आती. Because this is where you have to do the hard work. क्योंकि यहाँ पे कठिन परिश्रम करने की बात की जा रही है. And look at things in a very, honest way, in a very humbling way. और चीजों को बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही विनम्रता से, विनम्रतापूर्वक देखने की शिक्षा दी जा रही है. And sometimes it's very unpalatable. और कभी-कभी ये बहुत कड़वा लगता है. So sometimes people just want to hear, pastimes and stories and not go that deep, and then you can also, that's also available in the marketplace. तो कभी-कभी कई बार लोग कहानियाँ, लीलाएं सुनना चाहते हैं, बहुत गहराई में नहीं जाना चाहते हैं, तो वो भी बाजार में उपलब्ध है, वो जाके आप सुन सकते हैं दूसरे लोगों से. I sometimes say it's like Bhakti Prabhupada said, I built the house in which the whole world can live. कभी-कभी ऐसे प्रभुपाद ऐसा कहते थे कि ऐसे भक्ति का घर बनाया जहाँ पूरे विश्व के लोग आके रह सकते हैं. And sometimes it reminds me, it's like an expo. और कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई ये मेला है. Sometimes in the city they have a big expo. जैसे कोई शहर में कोई बहुत बड़ा मेला लगता है. Everybody shows up with their table, with their booth. तो सभी लोग अपना टेबल, अपने चीजें लेकर आते हैं. And then everyone is saying, this is what I'm presenting, this is what I have, this is my product, this is our service, right? और सभी लोग लेकर आते हैं अपनी प्रस्तुति, ये मेरा प्रोडक्ट है और ये मेरी सेवा है. And then everybody is walking around and seeing what is interesting and beneficial to them. और सभी लोग अंदर घूमते हैं, देखते हैं कि उनके लिए क्या लाभ की चीजें वहाँ मौजूद हैं. So I'm not saying this is for everybody. तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूँ ये सभी के लिए. We're just one table, one presentation within the expo of the house of bhakti. तो हमारा एक छोटा सा टेबल है, उसमें एक हम इस भक्ति के पूरे घर में हमारी अपनी एक प्रस्तुति है. Their problem is they don't want to let us set up a table there. उनकी समस्या ये है कि वो हमें अपना टेबल लगाने नहीं दे रहे हैं. That's the problem. ये समस्या है. It's like, why are they so threatened by this presentation? तो उनको क्यों इतनी परेशानी हो रही है हमारे इस प्रस्तुति से? Quoting Bhagavad Gita, Prabhupada every day, every night. तो भगवद गीता, प्रभुपाद की बातें दिन और रात हम कर रहे हैं. Quoting Guru Sadhu Shastra. गुरु साधु शास्त्र की बातें रख रहे हैं. These are Prabhupada's instructions. ये प्रभुपाद के निर्देश हैं. Why don't they like it? क्यों उनको ये पसंद नहीं आता? You like it. आपको ये पसंद That's है. why Krishna sent you here. इसीलिए कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा है. That's why Gurudev picked you up. इसीलिए गुरुदेव ने आपको उठाया है. Prabhupada said, if you just give them somebody my book, right, they can become devotees. प्रभुपाद ने कहा, अगर आप किसी को मेरी किताबें दे देंगे, वो भक्त बन जाएंगे. So if someone really is sincere, that's why I said, if you're really sincere and you read the books of Premi Bhakta, pure devotee, by their mercy you can immediately, become faithful and attracted. तो अगर आप प्रेमी भक्त की किताबों को पढ़ेंगे, अगर आप एक निष्ठ हैं, तो तुरंत ही उनकी कृपा से वो आपको आकर्षित करेंगे और आपकी श्रद्धा आ जाएगी उनके शब्दों में. That's what happened to all of us. और ये हम सभी के साथ हुआ है. That's how Krishna, that's his mercy. और ये कृष्ण की कृपा है. I had other gurus, shiksha gurus, senior devotees, everyone tried to help me in their own way, no problem. मेरे पास और दूसरे गुरु थे, शिक्षा गुरु, वरिष्ठ भक्त, उन्होंने सभी मेरी मदद करने का प्रयास किया अपने तरीके से. And I appreciate any sincere effort they made to try to help me. और मैं उसकी सराहना करता हूँ कि उन्होंने अपना प्रयास किया, एकनिष्ठ प्रयास मेरी मदद करने के लिए. But sometimes they can be sincere and sincerely,
damage you. लेकिन कई बार वो लोग एकनिष्ठ हो सकते हैं, लेकिन एकनिष्ठता से आपको बस नुकसान पहुंचा रहे हैं। Well, isn't there like a saying in English, like the road to hell is paved with the good intentions? Right? Even the road to hell is paved with good, sincere intentions. कहते हैं कि नरक का रास्ता भी सही दृष्टिकोण से बनाया गया है। But it's also can be Maya. लेकिन वो माया भी हो सकती है। So those are painful lessons. तो कुछ दर्दनाक शिक्षाएं हैं Force us to cry to Krishna. जो हमें मजबूर करेगा कृष्ण के लिए I रोने need के a लिए real guru. कि मुझे असल गुरु की जरूरत I है need a premi bhakta, shuddha bhakta. I cannot be cheated again. कि मैं प्रेमी भक्त शुद्ध भक्त चाहता हूँ, मैं और ठगाना नहीं चाहता। I cried before the Lord. और भगवान के सामने रोइए, I cried before Prabhupada. और प्रभुपाद के सामने रोइए। Please help me. कृपया Please मेरी shower मदद me with कीजिए, mercy. कृपया अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। I don't want to cheat anymore. I don't want to get cheated anymore. मैं ठगना नहीं चाहता, मैं और ठगाना नहीं चाहता। And then just after that, soon after that, then I met Srila Govinda-Swami. और तुरंत उसके बाद ही मैं श्रील गौर गोविंद महाराज से मिला। Maharaj, he picked up many people. They had 2, 3 other gurus. महाराज ने ऐसे ऐसे लोगों को उठाया जिनके जीवन में पहले 2-3 गुरु थे, Diksha gurus दीक्षा गुरु थे, that fell down and left or whatever, died. किसी का पतन हो गया, कोई संस्था छोड़ के चले गए, So कोई मर गए। Srila Govinda Maharaj was able to bring those people back to life, to give them faith. तो श्रील गौर गोविंद महाराज ऐसे लोगों को वापस लेके आ रहे थे और उनके अंदर श्रद्धा डाल के उनके अंदर वापस जीवन भर रहे थे। That's not easy to do. ये इतना आसान काम नहीं है कर पाना, It's very complicated. ये बहुत ही जटिल काम है। But he could do it. लेकिन He's वो ऐसा such a कर पाया। powerful Vaishnava and very merciful. क्योंकि वो ऐसे शक्तिशाली और बहुत कृपालु वैष्णव है। And he was patient, step by step by step. He just built their faith back. और उनके पास धैर्य था और एक एक कदम कदम के साथ उन्होंने अपनी श्रद्धा को बढ़ाया। When I came, I had like no faith. जब मैं आया था मेरे अंदर कोई श्रद्धा I नहीं had faith बाकी in रह गई। Prabhupada, प्रभुपाद के अंदर मेरी श्रद्धा थी, definitely. अवश्य थी। And by Prabhupada's mercy, Krishna's mercy, they sent me to Srila Govinda-Swami. और प्रभुपाद की कृपा से, कृष्ण की कृपा से उन्होंने श्री गौर गोविंद महाराज को मेरे पास भेजा। So I'm just sharing what I witnessed and what I realized, what I heard from such a exalted Vaishnava. तो मैं आपसे वही बांटने का प्रयास कर रहा हूँ जिसका मैं गवाह बना, जो मैंने साक्षात्कार किया, जो मैंने श्रवण किया और जो वही मैं आपके साथ बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। I remember one time I went to one really big ISKCON guru, मुझे याद है एक बार मैं बहुत बड़े ISKCON गुरु के पास गया and I said, Maharaj, I just want to tell you one thing. और मैंने कहा महाराज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। And he said, what, Murali? उन्होंने कहा क्या मुरली? I said, Maharaj, now I can never be cheated again. मैंने कहा महाराज अब मैं और कभी नहीं ठगाने वाला। And he was furious with me for telling me that. और फिर वो मुझसे बहुत गुस्सा हो गया जब मैंने उनको ये बात But कही। I wanted to make this point that now I know what is a Premi Bhakta, what is a pure devotee of Krishna Mahaprabhu's parampara. Now I cannot be cheated again. क्योंकि मैं एक बात साफ करना चाहता था कि अब मुझे पता चल चुका है कि प्रेमी भक्त महाभागवत महाप्रभु की परंपरा में कौन है गुरु अब मुझे कोई और ठग नहीं सकता। And they don't want to hear that. और वो इस बात को सुनना नहीं चाहते हैं। You're blocking my brother. मेरे भाई को देखने से रोक रहे हैं। All right? ठीक है? Better? अब बेहतर है? Just come every day. We'll आइए। discuss. You ask some questions. We'll answer everything. हम चर्चा करेंगे, हम आपके सारे प्रश्नों को उत्तर I'm देंगे। not in a big rush. मैं कोई भागा दौड़ी में नहीं हूँ। Be convinced. आप स्वयं आश्वस्त होइए Let Guru and Krishna convince you. और गुरु कृष्णा को आपको आश्वस्त होने दीजिए। That's up to them and it's up to you. और ये उनके ऊपर है और आपके ऊपर है। So this is first step. तो ये पहला कदम है। Right? Every time you come, have some question, doubt or something, try to figure it out, then pray to Krishna and ask, and we'll pray to Srila Govinda-Swami, we'll try to understand it properly. जब भी आप आएंगे आप श्रवण कीजिए, आपके अंदर कुछ प्रश्न होंगे, कुछ संदेह होंगे, कुछ चीज़ों को आप जानने का प्रयास कर रहे होंगे, हम कृष्णा से प्रार्थना करेंगे और हमारे गुरुदेव श्री गौरव से महाराज उनकी कृपा से हम आपके प्रश्नों को उत्तर देने That's का the प्रयास best I करेंगे। can offer you. ये सबसे श्रेष्ठ जो मैं आपके सामने प्रस्ताव रख सकता हूँ।
And if someone is more advanced than me that comes along, then I'll tell you, better everyone go to that person. और अगर कोई मुझसे उन्नत मुझे कोई मिलेगा, मैं सभी को बताऊंगा कि हम सभी उनके पास जाएंगे. Doesn't have to be me. हमेशा मैं ही नहीं होऊंगा. I never asked for this service. मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे ये सेवा दीजिए. I'm not ambitious for this service. मैंने इसके लिए अपना लक्ष्य नहीं बनाया था. But I feel responsibility because I know what was shared to me, and I feel responsibility. You have to try to share that with other people. क्योंकि मैं अपनी ये जिम्मेदारी मानता हूँ कि जो मुझे साक्षात्कार मिला उनकी कृपा से, वो मुझे अवश्य लोगों के साथ बांटना होगा. Because most people don't understand all of this today. क्योंकि बहुत सारे लोग इन बातों को समझते ही नहीं हैं. And that's why Gurudev said, try what I shared with you, try to help other people, to other devotees to understand same thing. इसीलिए मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा कि जो भी तुमने साक्षात्कार किया, दूसरे भक्तों की मदद करो, उन्हीं चीजों को साक्षात्कार पाने के लिए. From Srila Prabhupada's books and teaching. और श्रीला प्रभुपाद की किताब और उनकी शिक्षाओं में से. That is very nice combination. तो ये बहुत ही अच्छा मेल हो गया. All right. ठीक है. Good. ठीक है. You think they'll come back tomorrow anyway? क्या आपको लगता है ये कल भी वापस आएंगे सभी लोग? You just tell them you have some bigger question you'll ask tomorrow. You know. आप बस सभी कहिए आपके पास और भी बड़ा प्रश्न है जो आप कल पूछेंगे. And just say it's a very interesting question, but I'll wait till tomorrow. और कहिए कि बहुत ही रुचिकर प्रश्न है, लेकिन हम कल तक रुकेंगे उसके लिए. And I'll say, well, I'm sure I can give you a very interesting answer. और मैं भी कहूँगा कि हाँ, मुझे मैं सुनिश्चित हूँ मैं आपको बहुत रुचिकर उत्तर दूँगा. Everybody has to come back. तो फिर सभी को वापस आना पड़ेगा सब सुनने के लिए. Right? You left. I was like, oh, he left. और फिर And somehow Gurudev brought you back. तो आप चले गए थे बीच में छोड़ गए, लेकिन किस तरह से गुरुदेव आपको वापस लेकर आ गए. That's good. तो ये बहुत अच्छा है. It's natural to have questions and doubts in the beginning. बहुत ही स्वाभाविक है प्रश्न होना और संदेह होना, विशेष करके शुरुआत में. It's totally expected. ये पूरी तरह से इसकी उम्मीद की जाती है. But try to give the spiritual master an opportunity to understand you and answer your questions and your doubts, and then see. आध्यात्मिक गुरु को मौका दीजिए आपके संदेहों को समझने के लिए और उनको उनका उत्तर देने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद आप देखिए. And then come to your own conclusion. और तब आप स्वयं निर्णय कीजिए. Just give me a chance. मुझे एक मौका दीजिए. At the end of you give me a chance, you may accept or not accept, but at least you gave me a chance to explain it to you. आप मुझे एक मौका दीजिए. अंत में आप स्वीकार करेंगे नहीं स्वीकार करेंगे ये आपके ऊपर, लेकिन कम से कम आपने मुझे मौका दिया चीजों को बताने के लिए. That's the best, you know, the least I ask you for that. कम से कम इतना तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ. And I'll give my best possible, you know, answer to you. और मैं अपना श्रेष्ठ संभव हो सके आपको उत्तर देने का Everything प्रयास that I करूँगा. heard and realized through these experiences. जो भी चीजें मैंने सुनी और साक्षात्कार के अपने पूरे अनुभव के And I समय, hope that helps you. और मुझे उम्मीद है वो आपकी मदद And then करेगा. you decide whether that's valuable to you or not. और फिर आप निर्णय कीजिएगा कि वो आपके लिए लाभकारी है या नहीं. If it's valuable, then come. और अगर आपके लिए मूल्यवान है तो आप If it's दोबारा not आइएगा. valuable, you don't feel benefited, nobody forcing you to come. अगर मूल्यवान नहीं होता, आपको कोई लाभ नहीं मिलता, तो कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा वापस आने के लिए. I'm not going to chase you down. हम आपके पीछे नहीं जाएंगे. And if Adam comes trying to preach to you, I didn't send him. और अगर एडम आते हैं आपके पास आपको प्रचार करने के लिए, तो He जान might लीजिए say, मैंने उनको Gurudev नहीं told me to भेजा. preach to you, right? I'm telling you right now, I didn't tell him that. अगर वो आपके पास आएंगे कहने के लिए गुरुदेव ने मुझे भेजा है प्रचार करने के लिए आपको, तो ये बात जान लीजिए मैंने उनको नहीं भेजा था. Don't let him say that. और उनको कहने मत दीजिएगा ये All बात. right? So that one, not going to work out. तो ये काम नहीं आएगा. All right? He was hoping. वो आशा कर रहे Just in case there's any confusion, कि अगर कोई संदेह रह or to जाए, avoid any possible misunderstanding, कोई भी गलतफहमी ना रह जाए, preemptive preaching. कि पहले से ही तैयारी कर दी जा रही है प्रचार की. All right, everyone, I took way too much time from you ठीक है सभी, today. मैं बहुत ज़्यादा समय ले लिया आज मैंने सभी का. Thank you very much for hanging in there with me. मेरे साथ बने रहने के लिए. I hope you got a lot of mercy. मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत कृपा Nice मिली. answers. बहुत सारे अच्छे You उत्तर. look all right. आप सब ठीक लग Some रहे are हैं, smiling. कुछ हंस रहे हैं. All right. I don't know if you'll be here tomorrow, मुझे पता नहीं आप लोग कल यहाँ रहेंगे या but नहीं. we have many other things to discuss, so hopefully you'll come back. तो हमारे पास और भी बहुत अच्छी चीजें चर्चा करने के लिए. मुझे उम्मीद है वापस आएंगे. Shishi Gauranitai ki, Shishi Jagannath Baladev Lady Subhadra Dev ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gaur Govinda Swami Srila Gurudev ki, Samaveda Bhaktivedanta ki, Gaur Premanande.
Thank you, everyone.